maybe 2 or 3 years ago, and also it's been published internationally for the yoga. The first one is the participant said that authentic yoga. So the result that we interviewed the tourists where they come to Hua Hin, Thailand for the yoga, and we also interviewed the stakeholders. We interviewed the manager of the yoga studio, and then we summarize that. So this is the result. Okay, what they said is authentic yoga. What does it mean by authentic yoga? It means that they don't want the yoga like exercise. Yeah, because of what they think, the yoga is just like exercise. Yoga is not the fitness. So the main thing, if you want to provide those yoga for those tourists, they are international. They said we need something authentic. For example, like if we have the yoga instructor from India, where you graduated certificate in India, that will be very high respect, and also the real experience and expertise in the area. We don't want the, in nowadays sometimes when the people want the instructor, they advertise, okay, and some people just want a job. They said, oh, I got to do the certificate in Thailand and I practice. Now I can apply to be an instructor, but they don't have experience. They don't really expertise in that. And then they just go to teach like a gym. And that is some of the problem in many studio in Thailand. We have the yoga teacher where they're not really into the yoga. They don't even have some time with the mind connection. And most important thing that we need the experienced one. Another thing that number 3 is the wellness activities is about not only the yoga, maybe we include with the pranayama, practice pranayama. You know about pranayama? Yeah, that's good. You know about that? You done before? Oh, that's very good. I'm talking with the people who know. Pranayama, and what else? We do different pranayama, right? And we do maybe walk meditation. Maybe we do some others sound healing or any other activities that related to the spiritual retreat. Number 4, they said that if we will provide some of the yoga activities, because tourists that come from overseas, sometimes they don't bring the equipment. Sometimes they traveling overseas, the weight of the luggage is very important. So if we can provide those equipment for them, what are example equipment for yoga? What do you think? Mat, block, yeah, the strap, and so other equipment, or maybe sometime like the yoga clothes that you can sell in the hotel where we go to do this study. Sometimes the shop need to provide new clothes. Okay, the tourists want wear the old one. You should have some studio that you can sell some a simple yoga clothes where people can buy that. Number 5, service quality. What does it include in here? Service quality. Maybe you can discuss about that. Service quality. What does it mean? The quality that we provide for them need to be good. What are example? What else you think? Yeah, service quality in the hotel, for example, you have to be friendly. Yeah, you have to be friendly and polite. That's good. What else? Service quality, good. What do you think that it will be good service quality? No, no idea. Would you like to suggest? Come on. Polite, welcoming, warm welcome, and cleanliness. Yeah. When you walk into the studio very dirty and clean, which one you want to go? Yeah, you want to go to the clean one. Very clean and sanitizer. Especially during the COVID-19, maybe you need to. Those time when we do this study, there was COVID-19. Yeah, and then they are very strict
with the mat, with the mask. So I go to the yoga studio with the mask on. That's uncomfortable, very uncomfortable. You cannot breathe when you do the pose asana, and you feel like, oh, I cannot breathe. And then but you have to, and that is that time they were very conscious about sanitizer, alcohol, and then the lecturer, the instructor have to wear mask, and the student have to wear mask. And after they release a little bit, they said, why you are doing that? You don't have to wear. But when you don't do activities, walk around the studio, you must wear mask. And that another side that you have to have. And then what else? The equipment need to be clean. After we do the finish the class, we pull the mat out. We finish our activity, and then they give you the bottle of spray. Each one of you go and clean your own mat. And then we have to clean, and then we put it back. Okay, so that what is his service quality is all about. And also maybe to help them in case emergency, you need to make sure that they are being looked after very well. Some foreigner, maybe they have come across with the weather. Maybe they get sick, or maybe they need some help internationally. That is very important. Like me here, consider that I still have attitude symptom a little bit. We not get used to it. So the help by the people, the same thing like in Thailand, because those people came from Europe, came from different weather. So when they go to do exercise, sometimes it's something underestimate can happen. Staff need to pay attention. You need to give them extra attention. You need to care about them, and you need to have prompt reply immediately response for that. Okay. Number six, the core resources is about, when you go to the destination as additional attraction, mean that if I come here, okay, I come to Ladakh, I need to see something else. The same thing like what they said. We go to Hua Hin, Thailand, and what we want to explore after we have a session in here, it's about where else then we can go. What are the attraction that in Thailand we need to experience? Like I asked you, if I come here, where is a unique destination? We maybe come back to that about the logo. Okay, we may discuss together. We like to decide that for the government. Attraction of yoga destination. This one also includes with the place where you can take them for yoga. Maybe the people don't want to be only in the studio. They want to go somewhere else, do yoga in the park. You take them to the park, or you take them into the forest somewhere and get the different atmosphere, and that this is what they want. Okay. And another thing is reputation of yoga destination. This one I give you for example. When the people said, if I want to learn or experience really authentic yoga, the people will come to India. But if we go to Thailand, which place is a good reputation? So nowadays, in the last few days, Hua Hin, Thailand is one of the most famous for the yoga, but now we spread. The popularity of yoga in Thailand starting getting more attention from people, and everyone want to join in. Everyone want to have experience. Everyone know about the benefit. So there are many places starting to open. For example, like northeast of Thailand, in Chiang Mai, where I born, we have a session like 1 month. We have 2 weeks. The people can go to yoga retreat, and then they get the certification. Cost maybe 1 month. I think about I will tell you in US dollars. Maybe about 1,000 US dollar for 1 month. They include everything. They include accommodation, include the food, include the certificate and everything. So the reputation of yoga destination is important. Why is important? Because they know that once they have good reputation, the facility, the infrastructure, and everything will be are ready for them. They will give them some convenience. The second components of develop yoga destination is stakeholder role. Who are those stakeholders? What you think? Who is a stakeholder? The resort owner,
hotel owner, restaurant owner, government, yeah, local government, participants, these are they call stakeholders, maybe the transportation, renting, car renting company, all those people are involved. When you're gonna go somewhere, okay, I want to rent a car, maybe you can provide some of the special assistance to the guest. So one thing that they said, the first one is yoga studio owners. You know that I give you one example. I went to use the yoga studio in Chiang Mai, and part of my experience, I want to go to observe that how they delivered the service, and who is the instructor and how expert she is. And then I paid the money, probably about $12. I went to Chiang Mai in one specific studio. I searched in the internet and I saw this, it looked good. Then when I enter into the place, and I took my husband with me, and then he doesn't play. He will wait for me. I said, only 1 hour. He said, oh, okay, I will wait for you outside. So I walk into the studio, there is a reception. And then when they have the reception there, and I said, I want to book, she said, okay, yes. She just sitting there and make the face like, make like a, I'm not welcome you. And I said, not smiley, not friendly, not like a yoga teacher, right? You know about the yoga teacher, right? They all smile, right? They all smile, they all happy. When you are with them, they feel like they never been sad in their life, right? And the style of the yoga teacher is totally different. She is the owner, and when I walk in, I feel like I burden her. When I pay the money, you she just direct me as a compulsory, tell you the rule, negativity rule. You're not allowed to take your phone. You have to leave your phone in the bag. You must leave your bag there. You must take your shoe there, and then you have go to wash your hand, and then you walk this way. And oh God, if you go to do yoga, do you understand about the spiritual flow? As soon as you walk in, your soul had been stopped, right? You must not do that. You must not do this. You must bring this way. You must leave your phone there, and then you're not allowed to take a picture. I feel like I'm entered into the army. I go to do the a training with the army. Suddenly my soul stopping. My soul not flow. Yoga is supposed to be relaxing. When you go in there, you're ready to reunite with your body. So obviously the owner not doesn't understand. Only make the rules, and I feel blocked that at that time. And then where before with the receptionist, they have the seat, right? And my husband said, okay, I'm gonna sit outside and wait. And you know what? They ask my husband to leave. Oh, I didn't know that. I realized that later, that you have to. When I go out, where is gone? And it was Chiang Mai and the city. He not familiar with that here, Australian. And then I realized later he told me that the one of the staff there came out and asked him to leave. If you are not playing, if you are not participate in the class, you have to leave. Never ever do that. All right. In overall, this studio, I think, is they don't understand the concept. They don't understand how will you offer the welcoming, friendliness. We're not going there to be the rob. We don't look like robber. We not look like crime. We not look like gonna go to destroy her studio. So the second thing that I'm not impressed, that you're not allowed to be there. Only they make everything strict. And then when we finish, she's there. She look, and even the yoga instructor, I think she worked there for money. She finished the she go. She know talk and exchange idea. When I finish teach my yoga, I will ask, how you going? Are you good? How you feel? You coming? Where you want me to help you? You're gonna talk and ask like that. I did that when I teach. But she doesn't come. When she finished teaching, like, okay, I'm leaving the room, and she gone. She know, but not nature of yoga teacher. Yoga teacher usually very kind, very friendly, welcoming. She want to, interact with you. And that particular yoga instructor, when she finished, okay, bye bye, see you, and then she just leave. And then the owner stay. Okay, here the bottle. You have to spray and clean. Once you finish cleaning, you have to put in here. And I said, oh God, I'm not come back. Okay, so that from my study.
The yoga studio owner, you need to understand that the type of business that you are doing is not you go to sell the computer. Sometimes when I go to buy computer, when the people not smile at you, I don't care because they don't have a relationship. They don't have good customer service training. When I see the computer, and then sometimes they explain not clear, and I just ignore that because their skill they always with their computer. But when you go to yoga studio, you not sell electricity or you not sell some material, but you are working with the human. Okay, so this the study said that you need to have a studio owner who understand about the nature of the product that you give it to them. So or become sometime the yoga owner, also the yoga instructor. Okay. Another thing was the second one that's important, a non-profit organization in the government sector. Yes, you need to cooperate with them. Why is important? Because if you've been supported by the local, the tourists will feel better that at least you follow and you comply with the regulation. You make sure everything in good place. You want to make sure that the people come that they not have injury or they had been give a wrong instruction. So, and another profit organization need to participate in the developed destination, especially two organization, accommodation and the restaurant owner. The reason was, the people who are participate in the yoga, sometimes they not come in 1 or 2 days, and those of the tourists where we interview them, they are not just like um, a local working class. They quite have money, but they're not rich. They have medium, and then they come to stay longer. They feel like should be convenience, not 5 star. Yeah, easy to access, not 5 star hotel, not luxury. You don't have to have a swimming pool. You don't have to have any other facility, but they need easy access. They need accommodation that available in the range of the price from budget to 5 star, a variety. And the restaurant owner is about they go to find something to eat. As you may know, the yoga, the yogis, they're all conscious about their eating. Yeah. Sometimes they're vegetarian. Sometimes they will eat early morning and then they maybe finish at 5 or 6, and then some of the food they eat might be specific. So this is important, specific for the yogi that restaurant owner have to understand. If you will cater the food for those yogi, you have to understand their nature. All right. So I compare to myself as well when I doing interview, because when you become consciousness about your health well-being, you will consider about what you eat and what is good for you, what is not good for you. And again, I saw one website in Thailand, don't do that, yoga beer. And I said, what? The person because they know that the people like to come and do yoga. And then, okay, we organize a festival, come enjoy our yoga beer. That totally I must not. And I ban, I ban that website. You not use the word yoga. And if ancient Indian yogi see that, I don't think he will be happy. Even me, I'm not happy about that. So we don't drink alcohol because that is part of the toxic. I think it's the toxic if you drink a lot. The supporting resources. Okay, the last one is a variety of yoga destination, which means that you need to provide a different destination for them. For example, you maybe come to Hua Hin as the main one. Perhaps you maybe organize like a yoga trekking. You take them to the different area. Let's say I said north of Thailand, they have that. You have to fly from Hua Hin. It take you about 1 hour, but you have to take the bus to Bangkok first, 3 hours, and then take the plane to Chiang Mai 1 hour. So you can go there, or you can go to Phuket. Phuket is about 1 hour, maybe 18-hour drive from Hua Hin to Phuket, down south. Maybe you have heard about that. Yeah, you been there?
Oh yeah. Do you like it? Where do you stay? What beach you stay? Mm-mm. Oh, wow. Accommodation, of course. I think that is provide supporting accessibility. This is another tourism infrastructure. I think where this one, the other type of tourists also need to have the same. How you access that mode of transportation. Okay, you must have different mode of transportation. For example, you have bus, you have local, yeah, you have rent a car, maybe you have train, or you have other facility to provide to them. Okay, so this is a model that we draw out from our study on the project that to yoga tourism destination development. Okay, any question you have to you maybe have? This is me. This is in 2002, 2002 or 2003 when I reached the top. When I reached 4,500 peak, it cold, but I want to get a nice picture. I take my jumper off. Okay, what I want to talk about this another activities that we can organize as a spiritual retreat tourism. We call yoga trekking. Have you ever heard? No, very new, right? Very new, very new. So and I haven't seen in any literature. So the yoga, what does it mean by yoga trekking? I was participate in the school of yoga in Nepal. And then at the end of the course, we want to go trekking. I said, I like to go trekking. I like to go to the Himalaya and I want to have experience, but we also do the yoga study. Okay. And then that's how it happened. And then when we starting to walk, so we also learn about yoga as well. So here is this, my classmate. While we walk, we keep walking, and then we talk about health well-being. It is the most pleasant trip ever. The reason that why, because we've been in the same group that who consciousness about health. The second thing was we learning something. I learned about health well-being. I learned about my guru. Sometimes I'm coughing and I'm sick. He pick up something from his pocket, take this and then chewing that, and then you will get better. And sometimes he give me the fresh garlic, just chewing that. I said, what? You have to chew garlic. And I said, it smell. Okay, don't come near me. And he said, it will help you. So yeah, that's funny. And so just chewing that. So the second thing was we got the physical fitness while we walk. And then when you walk through the Himalaya, you see the environment, you see the fresh air, and then you see different scenery. It's beautiful. And then this place where the first picture here, one we walk a little bit and then okay, we need a rest. When we have a rest, what you usually do when you trekking and rest? When you said rest, what are you doing? Rest, right? Sitting and have a deep breath, right? My guru said, okay, let's go to do yoga pose. Think about that. When you climb about 1 hour, you're so tired and you're sweating. And then, oh, and we have a rest. Oh, let's have a rest. I'm happy. When I rest, I just sitting there and, I cannot rest. And my teacher said, no, and go to practice yoga pose. And then we have to go to do that. This is the second one. And then we do that as well as, okay, let me take a picture. And this is a good fun. It's really good fun of the yoga trekking activities so that you can apply that into here. If the people are living here, I don't think they have problem with the altitude sickness. But for me now, I'm still have to make myself get used to the air. I cannot move too fast yet. When I move too fast, I forgot. I feel like, oh, I'm dizzy. So these kind of activities depend on the leader that you will understand and experience. Like you ask me that, what can we do? How can we start?
you need to understand the activities that you can provide. So when I get in there, and the guru said, and okay, let practice yoga, and then we take photos, and the good fun of that, we take a photo, we keep a good memory, not just standing there and act and smile. We're standing there, we have to do some pose. We do that for ourselves. Okay, when we do that, we not do for just to show off, in my opinion. But another part of that, we also stretching. And you know what the best was? You walk a long way, use two hand, two leg, 1 hour. When you go to do stretching, at the benefit, you can stretch yourself, you can stretch your hand, your arm, your leg. Basically, it's tired, but at the end of the resting time, you feel refreshed again, and you feel that all your muscle had been stretching, had been, um, uh, yeah, you make yourself feel comfortable to walk again. And after we finished, I thought that he will give me a time to rest. I said, okay, let's walk. And it's a very good fun. Okay, this is I doing my certificate 2 times. The first time I do RYT 200, I become a yoga teacher, and the second course I did was I become the master yoga teacher, 500 hours, and it's a good fun. Okay, so come back to, if you will adapt this idea, you can bear in mind that if you want to provide a yoga tracking for your client, you open the studio, you just set the program. You have to hire a good spiritual leader or good yoga instructor, and then you put the idea while you're going there. You need to understand that what your client want. I showed this idea for, I went to talk for the Thai Tourism Council of Thailand. I showed this idea to the customer, and then we will separate the level of the yoga skill into 3 level. Okay, the first level is beginner, the second one is medius, and the third one is advanced. Okay, advanced maybe me, I am beyond because I've been to a very tough. But if we're gonna do something like that, they cannot give the activity as I did, because those beginner, they cannot, they're physically, they're mentally not there yet. So you need to provide a program that suitable. Maybe you can walk, but not extremely high, like Everest Base Camp that I go, or a high mountain. But you can go maybe a local walking, and then you do a yoga, and then you get them to my practice for the intermediate. You They want to improve to the next level. Okay, these people said, I have skill a little bit, I have idea a little bit about yoga, and now I want to make my way towards advanced. The advanced mean that some asana, they only beginner can do that, and if you're not trained enough, you cannot do like the advanced pose like that. Okay, headstand or handstand, it was quite advanced, and this is a must asana that I have to be able to do. Otherwise, I'm not pass the certificate. Otherwise, I won't get the certificate. So when the people are joining, who go to the next step, when they join, they will prepare, they will be trained for a certain level, that how you can go to the next advanced asana for them. So the second intermediate one is they're ready to be the expert one, the advanced one. Okay, so you need to think about your customer. You need to think about the facility, the environment that you have. And like in Thailand, we don't have the snow. You know that we don't have snow. You know that I never ever see snow when I was young. When I first see snow, I'm jump up and down. Ah, snow. Because you born, you hear, you see, you made very normal, right? In Thailand, when I showed this, they said, "Oh, we want to do like you. How can I go?" And said, "I cannot walk like you." They said, "I like to take a photo of the yoga, and I want to get my mountain like that, but I don't want to walk." And so they said, "Oh, what can we do then?" I said, "Okay, you go by helicopter, and then you just go into the mountain where they have snow, and then you can do the pose." Oh, that's a good idea. But yeah, I think any kind of suggestion that you can give it to them. The student in Thailand, they said, we are willing to do that. We want to do that. We don't have anyone create just a program.
And they said to me, even we go to Nepal, only 3 hours from Thailand to Nepal, and then we can get them to a certain level of mountain. You can see the snow, something like that. Or maybe here, very easy. You don't have to walk at all. Once you are here, you are there. So yeah, the kind of suggestion, I think that would be very beneficial for the stakeholders, for the entrepreneur, that if you want to develop some kind of thing. Okay. This is some another example that why I walk up to the hill. This one where I almost reach the top, but I'm so exhausted, very very exhausted. But you know what? When you get up there, very pleasant and peace. I think I have the video here. Oh, this is the video. I have to get up about 5 o'clock in the morning, and you go trekking. Don't think that you will be easy sleep, late wake up. 2 or 3 o'clock you have to walk to reach to the top to see the sunrise. This is about the sunrise. Okay. And this one, another one, that Everest Base Camp. I do the same. This is the next course, 500 hours. YT 500 hours, I become a yoga master teacher. This is actually cold, okay? And then when we get up there, my guru there on the right, okay? My guru, yoga guru. I said, oh, Anne, okay, this is beautiful, beautiful scenery. Let's do yoga. And I have about 2 or 3 jacket layer. Take it out, take it out. Quickly doing that. And when you do that, too cold, but it's good fun. So this is the idea that if the people who are into it, if the people want to improve their skill, you enjoy the environment, you enjoy the companion, and then you enjoy about a beautiful, nice picture. When you come home, I always look at that. Oh, I am challenge myself. How old that you can do when you are 60, when you are 70, and when you're getting older, you're still capable to do that. And I see many yogi in India, their age very high, very old, but they're still very physical. And I said, if you can carry on doing this kind of thing, you will have less burden about sickness to family, and that's the benefit of that. Okay. A potential spiritual religion destination development in Thailand. I think this one. This one is another case study yesterday that I teach you. Remember, I talked to you about the behavior of the tourists. Yeah, you remember very good. Thank you. I told you that there are 400 sample to come to do meditation, right? So this is I draw out from what the study. Current infrastructure of spiritual tourism in Thailand, the environment, we have a suitable place, as well as in Ladakh. I think you have a very good environment, suitable atmosphere, and also feel safety. I feel safe in Ladakh. Safety and security overall various place in north of Thailand, Chiang Mai. We are very safe. We are very local, authentic. You will see the clothes that I wear there. This is the traditional North Lana style. That is my traditional local clothes. Um, as nowadays, As nowadays, the meditation place are linked with the temple. And similar thing, I think they are here linked with the monastery and meditation. But in my opinion, sometimes the limitation of a monk provide this kind of program. Sometimes the strict rule of the monk that prevent the interact with the tourists. For example, in Thailand, the monk cannot touch the woman, and the monk duty is not to lead the activities. So the inconvenience some part are obstacle. So in my suggestion, I like the person who own the meditation place or yoga place is normal stakeholders and able to speak English. Because Thailand, we don't speak English as a main language, but we speak Thai and also North dialect. My language is I speak North dialect as well as Bangkok speaking. So sometimes when we have international local camp, the staff who are working here
maybe cannot communicate fluently. My suggestion is we need to improve in terms of language, service quality, and then separate the meditation center out from the temple. That my suggestion. Okay, but we can lead to the temple as a monk can come to give you like a preaching, teach you about life. Teaching you about the nature of life. Overall resources in Chiang Mai are provide more various spiritual activity than other provinces. We have more. Yeah, why is suitable. If you see Bangkok, you see Bangkok, you see Pattaya. If you go to Chiang Mai, now, if you go to Chiang Mai, it's totally different. It's full with nature. It's full with we have the highest mountain in Thailand. The highest mountain in Thailand is about 2,600 something. That is highest. So we have the forest, we have the national park, we have a lot of water flow. Consider it the other part of Thailand. So why they're suitable for the resources. This is another class that I conduct in Sarawak. I went there as a scholar, professor, present paper, and I also the yoga teacher. And then they asked me to teach, to conduct the yoga in the morning, and then they enjoy that. Some people that do the first time. I asked them, "Have you done before?" I said, "This is my first time," and they said, "I go back. I will continue my yoga." I'm very happy because I introduced some good thing for them to improve their health. So this is from Sarawak. Room. Oh, okay. The room, the food. Oh, this is I'm talking about in Chiang Mai still. Okay, this one. Food, beverage, healthy food, satisfaction. They prepare the vegetarian actually. So with cater knowledge people that you need to have. Another thing, car parking, sufficient parking. The activity had to be suitable, accessibility as well, stakeholder collaboration. The last one, okay, stakeholder collaboration among various industry, tour operator, accommodation, food, vegetarian, organic, and local. So this is very important, and it will serve. If you see the yogis, usually a real, very strict yogi, they will vegetarian. When I talk to my guru, I cannot yet because in Thailand we cannot find a good vegetarian. They have that, but I cook for some time. But sometimes you go out, the people don't take vegetarian, and then it's something. When I see food, my mouth watering. I'm still have sin. I still try, but yeah, mainly most of the time I did take that. It's good for yourself, Have you tried vegetarian? Like some day fasting, yes, fasting, and then you take only vegetarian detox yourself. Maybe you try sometime. Okay. How can spiritual religion tourism can be developed? No, this is another suggestion. Development of spiritual and religion. Tourism will need a strong religion heritage, culture, environment. This is very important. Like if think about you guys, you want to go to explore the Thailand, and what would you like to see? What is in your perception? Maybe you can share. You, if you're gonna go to Thailand, what would you like to see about Thailand? Maybe you can talk to me. What do you think? Oh, Professor talk all the time about Thailand. Sorry, I came from Thailand. What do you think? What do you like to see? If you travel, what do you like to see? It's okay to speak. It's okay. You see culture, local culture. Yeah, you want to know what we like. You want to know what we eat, what our food we eating. Mm. You can speak in your language.
You must not be shy. Okay, this is your opportunity. This is your opportunity. Speak out. Wrong, it doesn't matter. You speak something wrong, it doesn't matter. Okay, it will improve your skill. It will improve your breath of speaking. Don't scared of me. If you speak wrong or right, I'm not kill you. I am here to help you. I am here to shape your skill. You're lucky I'm here, okay? I'm very kind professor. Yeah? Agree? You have to agree because you're gonna pass that exam. No, just kidding. Okay, you want to say something? Yeah, what you want to say? Okay, I won't let go unless you speak one. One thing you want to see in Thailand, what is it? Culture? You? Food. That's very good. Food? Culture. Okay. At least I get you to speak. Okay, how about you? Different view, yeah. Here you see the mountain with the snow. Thailand, you cannot find snow. Okay, you want to see different view? You want to see the north and south? Sorry? Greenery jungle, yes. When you go to Thailand, everywhere, when you go to national park, you will see green preserve area, green everywhere. Like here, you see in the spot, right? You see in one spot you have green tea, green area, and the rest of that it's just a mountain without tree, without tree. Yeah, the green scenery, you will never see that. You need to go and see that. How about you? Ah, seafood, but be careful, okay? Seafood, you have to go to down south. You get the fresh one. But why I said be careful, the first thing, if you go to the place where they're not like north, don't go to eat seafood at north because we I came from north, I never see the sea until I go to the south. My first time see the sea when I was 18. I live in the north. So north people, they're really eager to see the ocean. So we have transportation, you have to make sure it's clean. Seafood very sensitive, you can get sick, so you go to eat a clean one in the five-star hotel, or you know that is direct from the sea. The second thing was your stomach. Okay, you have seafood. Yeah, sometimes you not get used to it. Try to eat something easy, simple seafood, for example prawn or fish. I don't eat calamari or squid. Oyster don't eat. That's very sensitive. Fresh oyster. Oyster, right? Fresh oyster. They have with Thai sauce. When you eat that, so delicious. Very delicious and very hard to find. But I avoid that. Now I don't eat raw anymore. So you can choose the different kind of fish. The taste is differently. And they cook in the Thai way. They cook in the Thai ingredient and tom yum. Talk about food. Okay, right. Um, all right, so we have development spiritual culture. You need to provide the local culture, the natural environment. They have traditional way of life. The outstanding tourism infrastructure. What I mean was outstanding. I did not mean a five-star hotel. I did not mean the most modern. You have to have everything. As you know, the character of normal tourists and yogic tourists. Yogic tourists into nature. They don't need internet. I mean, they have, but they're not necessary. They're ready to leave the society. So you don't have to worry about that. When you go into the bush area, there may be not internet access, but some people accept it. So the yogi don't need a luxury bed. If you go to the cold place, Thailand want cold. No, you don't worry about it will be cold, but you maybe be worried about too hot for you. It can be 30 degree or 40 degree in some time. So maybe you will, yeah, try to adapt yourself. But I think it's in the bush, they're not too cold. When you go to the forest, it's quite comfortable. The most important thing for you is clean. Okay, we will provide clean accommodation, and in some places they don't provide you the mattress. They just let you sleep on the floor if you can stay. But mainly we will provide. Another important thing is local welcome. It's very kind and friendly. The people are always give you the extra mile service.
safe and secure. Okay, this is what I recommend. Mindfulness, spiritual, and religion tourism. Work-life balance, very important for the tourists. However, many tourists express that they were not ready to hibernate. I think I think it might be spelled wrong. It means that the the yogi tourists, they said something, they want to relaxing, they want to be escape from daily life, but they still have to come back to do their work. So what they said was they are willing to be isolated, but they need to come out to live with daily life. they, they still want to have a good lifestyle, be healthy. Center for spiritual retreat should be built independently away from temple and not be organized by monk. This is what I suggest in the paper. If you go back to look at the paper I sent you yesterday, the spiritual tourism, if I wrote and then it been published. So we talk about suggestion. I suggestion like that. The activity combine physical health with my spiritual improvement, learning to value culture and heritage, and to worship their own religion. So I did say that in 2018. Okay, I think we have some rest. We'll continue our next activities. Okay, thank you. Hiking. And when I see the forest like that, and I feel like, wow, this is very good photo. So let me hug him. Let me hug the forest. And then I just going there and actually a risk. Don't do like me. Maybe I'm a risk person. When when I go there, I see the something nice, and I'm very into nature. But sometimes you can get allergy. In some time when I do lie down on the floor, and I didn't realize that, because I think that all is in nature, but the nature is nice, but you have to aware yourself. Sometimes when I lie down something, I got itchy allergy, and I got blister, into my skin. So don't do what I do, just do what I said. Do what I said mean don't do if you're not sure. So yeah, I walk along the forest, and then when I see the tree, when I see the green scenery, and this is just feel like okay, you just keep yourself let go, and tree they have life, yeah. So this forest bathing, I recommend to the people who want to heal themselves. So basically, forest bathing is came from Japan originally. They call Shinrin. Okay, Shinrin mean forest. Shinrin mean forest in Japanese. Yoku mean bath. Shinrin yoku literally mean to bath in the forest environment. But the word bath is not just like we have a shower at home. It's just like you walk into the forest, and then you admire the nature, and then you let go your feeling, and then you just stay, and then you just let your mind empty, and then let the environment absorb you. Some people that don't have that kind of connection, and they said, how come you go to talk with the tree? Are you crazy? So in Japan, 1980, Japan used the official term as no if for the physiological, psychological activities recommended to many. It was attempt to provide nature-centric to a fatigue caused by the tech boom. It means that nowadays people are in daily life, you are busy in the new technology, you try to go to work to strive for a living,
and you need money to support your family. And nowadays, a lot of equipment, a lot of IT, they're very expensive, and you want to have that. And then the in Japan, basically some of the people who go to see doctor, and the doctor can write a prescript. Please go to do forest bathing. Okay? Yeah. It was amazing to me that, oh, do they have that in Japan? When you are stressed, they don't say write a prescript, okay, take the medicine, and then you go to rest, and you get a sleeping pill. Okay? When in many places, when you're stressed, you go to see psychiatrist or you go to psychologist, they will give you the medicine, and one of that medicine, it will be sleeping pill. But for this kind of the mental well disorder, the people realize that actually you're not stressed because physically hurt injury, but because your mindset, maybe you have not been rest. They suggest that, okay, to go to do forest bathing, and you know what the patient have to do? Take that prescript, go to the center of the forest bathing, and then, okay, my doctor order me, I have to go to do forest bathing, and then they will organize some of the program. It can be 1 day, 2 day, 3 day, 7 day, depends. When you go into the forest, I used to participate as well, but basically I am the spiritual leader anyway, and I understand when you go to the forest. Sometimes, like you see me, I go hug the forest, I talk to the forest. So um, it like make you go back to the root. All right, make you go back to the nature again, and you have to let go. The leader of the activity we call instructor, bathing forest instructor. So they will lead you about what you have to do, and nothing shower like what you said. Shower mean when you walk in, you already shower the nature already. Yeah. In 1982, this form of mobile meditation is living forest became an official part of Japan National Health Program. Okay. And here is some of the benefit. I think I teach you already about the benefit. Remember yesterday I talked about the well-being attribute, spiritual well-being, physical, mental, emotional, and social. Maybe I will ask you in the final exam. Okay? Can you tell me? You write it down. Can you tell me what are the 5 wellness attribute? You can explain. What does it mean by spiritual? All right? What does it mean by physical, mental, emotional, and social? I already give you the answer. Yeah, many places I go. Usually, I will involve with the forest. I don't go to the shopping. When the people take me, I in the foreign country. People will take me. Oh, you want to do shopping? I said, if I want to shop, I go to Thailand. So I come here. I always try to find the nature and seeking the time that I can be still. I can sit and meditate, and I can be with nature. I just enjoy doing that. So it forest bathing, of course, give you the same as I said. All the wellness activity must link to 5 attributes. You're gonna have spiritual well-being, like your realization. You have physical well-being. You mental, you can control, you can manage your mind. Emotional, you always think positive. Social is you like to contribute to the social. You like to work some volunteer to make you feel good, and you want to be accepted. Otherwise, you won't have social well-being. And this is some example that I conduct the forest bathing in Lucknow. But most of these people are actually professor, very well-known professor, very high level CEO, owner of the business. The people very in the government. They never ever heard about the word forest bathing either. But they said that I want to try. Actually, I like to take you guys to try forest bathing. I can show you how we are doing if we have time. Let's see. Okay. We talk with them. This is one of my student. Here is my student. She is master student. She doing this project, and then she write a paper. She published that international in Vietnam last year. And then I will show you the result. Okay. I have some of the study. We study about behavior and experience of the people who participate in bathing forest. So what we do, we go to the forest,
the forest is not that too deep, you know. We go to the national park. First thing have to be safe, and then you are able to organize. So this is another strategy. Maybe I would. Can I go to open the one? Excuse me. Can you open the number, the latest one, number my slide, the one that I put today? Okay, I will come back to talk about that, but I want to continue the forest bathing first. Um, the one is number. What is called that one? Can you open it? Yeah, I think maybe this one. Okay, we can use this one, and I have the case study. Oh, okay, this one. We can use this one for now. All right, I can send this one to you into your WhatsApp. Okay. All right. Yeah, we can use this one now. Thank you. Oh, sorry. I think number six. Number six. Yeah, number six. Um, yeah, this one. Okay. Yeah. Okay. Is it okay to work with you? All right. So, all right, I talk about the initiative of forest bathing, but the next one is I will show you about case study and introduction to the theory foundation of spiritual tourism destination image. Okay, I think basically it will be, yeah, lecture 9. I think this one we start introduction to theory foundation. So in this lecture, basically, I will emphasize on how the destination brand image for spiritual tourism will be developed, and then I will continue about forest bathing. But in this case, it will be a case study from the paper that had been published. Okay. Um, I will skip this one. I will come back to talk it later. I want to continue the forest bathing first. I think okay. We talk about this one. We talk about this one in Lucknow, and I think a case study. Okay, this one. All right, this is research and a case study that we conduct in Thailand. One of my master students, she doing in this contract, and then we went to publish this paper in Vietnam. The topic is enhancing spiritual healing through the development of forest bathing. Okay. So basically, the reason we are doing this research because we found that there are very rare study about forest bathing, and even you guys, you haven't heard about that. But actually, forest bathing was very popular in Japan, and in Thailand now we're starting to establish the forest bathing center in Thailand. Okay, and then in academic research, there are a lack of a study. Especially, we want to know about how the experience of the tourists who take part in these activities, what is like. So forest bathing is one of the activities in the wellness tourist, representing a new trend in travel. It offers a spiritual experience through meditation, mindfulness practice, while immersing oneself in the forest, spiritual tourism. These align with the current global tourism landscape and the behavior trend to modern tourists who increasingly seek activities
and destination that promote physical well-being, particularly in terms of mental and spiritual rejuvenation. So this study aimed to understand the pull factor, push factor, and behavior of tourists seeking spiritual rejuvenation. That is crucial information can be used to develop the effective marketing strategy to attract tourists, which is the motivation behind this research. Okay. The objective of this study, the first one, to examine the push factor influencing tourist satisfaction in spiritual rejuvenation through forest bathing. The second objective is to investigate the pull factor, um, that how that infant tourist satisfaction in spiritual rejuvenation through the forest bathing. And the third objective is to explore the influence of tourist satisfaction and intention to revisit. It means that after you satisfy with the activities, will you come back or not? Okay, this is about the behavior of the forest bathing tourists. So here is a framework. For the food push factor, we study about push, it means inside. Okay, what push you? If you ask me why, what push me to come to Ladakh? Yeah, and if I will go somewhere, I want to escape, I want to relax, and which direction I will choose. So I said, okay, I choose to come to Ladakh. The same thing. The tourist said that my push factor, my motivation, want to go to do forest bathing. The first thing they said, I want to escape. Okay. The second thing they said, I want to do, I want to have time relaxing. Self transcendence is mean that I want to become above my own emotion, my own ego. Physical well-being. If you go to the forest, maybe you have to walk, maybe to you have some physical exercise, you know. And also, if you go to participate in this kind of activities, maybe you will keep your peace, and then you will show the appearance of physical well-being. Self-indulgence, you know, self-esteem, novelty, like seeking for knowledge. For the push factor, they said that if I were gonna go to participate in the forest bathing, I will look at the place where they have natural setting. They don't want to go to artificial. And also, when I get there, I must have the local culture, nature-based activities, and then it have to be peace atmosphere, authenticity, remote location, and last one must have history, must have the history significant. Okay, and then there will we will find the relationship, how push and pull factor link into the satisfaction. We want to find that either push factor in terms of escape, how many percent it influence them to have satisfied. When you come here, the relaxation is influence you how many percent until the novelty, the same thing. So for the analysis relationship, I won't go too much because maybe very new for you. I'm not sure you guys this side you know a little bit about model relationship between, yeah, okay. This is about how we analyze. We will find that the variable on the left, push and pull, relationship positively to the satisfaction. Okay. I will send this to you. Okay. I will send this to you. I will send the PowerPoint to you. I'll let you try it for now if you want.
So in under this study, we use the theory called motivation theory. Okay, the motivation theory where they have push factor and pull factor. So we have seven factor each of the push seven factor, pull seven factor. Yeah. Okay. So the next one. Okay, the next one is the sample. This study was collected from 160 Thai spiritual tourists with the experience in forest bathing activities selected to the purposive sampling. So basically, we have some organization. They organize the program, and then we go to collect after they finish their activities. So the questionnaire, we use questionnaire design with the predetermined response. The scale five point like a scale. Okay, so we give them like agree or disagree, something like that. And then the data analysis, we use multiple regression analysis technique to analyze this data. And then here is the sample. Okay, have a look on the right hand side first. The result we received from the 160, it's over 65% is female. You can see that female are more depressed than men or what? I'm not sure. Maybe, because if you see the age, it's generation Y, over 49%, it means that overall participant here is Gen Y. Gen Y female. And most of them single. Okay? And the income, they're quite high. 50,000 baht per month, 27%. And then the people are mainly living in Bangkok. Make you wonder, isn't it? Make you wonder and think that maybe female are more straight, and then those most of them are single. They're not married, and then the reason that I think maybe why they have time to go to do this kind of thing. Like yesterday, I mentioned that most of the people who are family are less participate in spiritual. So like today is this result, and then the group of the people is the group of the Gen Y. If I will say who is Gen Y now, it will be the people who age this time this year. They will be aged about 27 to 47. You are not. I think you are 19. How old are you? Oh, 20. 18? 19? Okay. Still very young. You're not Gen Y. What is your Gen? You Gen Z? Gen Z. I am Gen X. Okay. Here is the result data analysis that we received the sample, and then how we have a look at the result. Okay. For push factor first on the left. Okay, on the left this one. For push factor, have a positive influence on true satisfaction in spiritual rejuvenation through the forest bathing. There are two main factors that positive the outcome. Remember that I said push factor, how many are there? 7. Yeah? And then when we do a testing, we do multiple regression analysis, we found that only 2 factors is most positive influence their satisfaction. First one is self-transcendence. And the second one is physical well-being. Where is another 4? Or no, 5? Have a look on this one. Okay, what is missing? Can you help me? So what is 2 significant link? Number 6, number 3, I think, is it? Number 3 and number 4. Yeah? Number 3, self-transcendence and physical well-being. The result said that, my sample said that there are only 2 push factor that impact on my satisfaction. What does it mean? It means that escape, relax, self-indulgence, self-esteem, and nobody not that important for me yet.
The result coming up, it doesn't mean not important, it doesn't mean they're not affect. They affect that, but the most two things make them most satisfied, make them feel like I came here, I improved in terms of physical well-being, and especially they said in the self transcendence. Okay, here, oops, sorry. Here, self transcendence, how many percent? Can you read that? How many percent that make them satisfied? When they participate in forest bathing activities, self-transcendent influence 38%, make them satisfied 38%. Physical well-being, how many percent? Here. 0.18, turn it into percent, how many? 18%. Okay? So if you see this result, what do you think? We look at only about push factor first. The tourists, the forest bathing tourists who take part in these activities, the most push factor they satisfy is these activity make them to have self transcendence the most because they're very high, almost 40%. It means that this group of the sample, female, single, Gen Y, they maybe have some issue about self transcendence. Yeah? The self transcendence, for example, you maybe have some ego, okay? Some many carry some their own ego. Or maybe some people like, don't come to my boundary. I have my line. You can come, but stay there, all right? If you over the line, I will angry. I will not accept it. I will yelling and screaming. So self-transcendent may be that, oh, I have my boundary, but if you over the line, I can be tolerant. I can be accept without angry. And that is mean you are above yourself. You are able to accept, and then you become a better person day by day. You not have self. But if you want to be self privacy, you need to be in your own space. Okay. So yeah, in this study, it's just one example. Maybe you are very easy angry person. So self transcendent mean that from you count from 1 to 10. If I count 11, that's it. The explosion coming. But after they participate, annoying, right? After they participate, I'm sorry. After they participate, they maybe count to 1,000 or maybe unlimited. Yeah. Okay, 10, 11. Okay. Let's see. Okay, let help me to analyze the right box. Pull factors from seven pull factor. There are two from this study. Okay, they said that natural setting and local culture. Which one is more influence? Natural setting. Thank you. Yay! Very good. You smart. How many percent? 0.43 and turn into percent. How many? Sorry, professor. I'm not good in mathematics. 43%. Okay, easy. When you see 0.43, 0.54, you can just put the number at percent. 43. 0.43, it 43%. That's how you will say it, okay? How about the bottom? How many percent? 17. That's good, correct. Thank you. So what does it mean?
Okay, maybe you can help me. The result said that, okay, the result said that the participant forest bathing in terms of pull factors, there are two factors that most influence them to satisfy. The first one is, yeah, they influence how many percent to make them satisfy? 43, and the second one, 17% for what? 17% make them satisfy. Yeah, okay. So, basically, yeah, if you see the statistic bottom here, okay, the bottom there, this one not work. About p less than 0.05, it means significant level. Okay, don't worry about that, girls. It means that this one is show that your study is acceptable and significant. Significant mean it not it reliable. It reliable and valid, and you can be trusted. So these numbers show you that this result is significant. We can say accepted. Okay, and then hypothesis number 3, they said we want to know that after they certify, how many percent they want to return. Can you see at the bottom? 51, 51 what? Percent, right? 51% said that if I am certified, okay, overall the participants that 50% of them said that I will return. But where is another 50? 49. They certify, but only 50%. So this case study said that overall satisfaction, it doesn't mean 100% comeback. Yeah, no, 100% comeback. Do you know the reason? We don't know that. A study with the statistic is not definite, but it just estimate. Yeah, like we find the hypothesis. Okay, so this result said that only 50% will return. However, the other 50 they're not coming back. The reason why? Maybe I am foreigner or I am live far away. Yeah, it doesn't mean that you are actually not good. Your activity is good, but or maybe they said, I don't have money to participate. I have no time. And that may be another reason. So this study show that what in conclusion of this study is show that if you participate in the forest bathing activities, for my push factor internal, I improve in terms of my physical, and then I become can be tolerate about the situation in my around myself, and I can be it's just like I can be more tolerate about whatever can affect your life. If someone standing there yelling at you and you smile, okay, that is what is the mean, and then you are acceptable what is circumstances, and you not go along with the situation and emotionally, and they liked if they were gonna join they will choose the natural setting, and you must provide them local culture. So this is why when I ask you what is your unique in your region that you want us to know, local culture come in the very top, right? 7 of them. There are only 2, and one of them local culture that people want to participate. It means that the forest bathing participant they interested about learning local culture. Okay. Okay, she have summarized here the discussion. Our result demonstrate that forest bathing had the potential truly fulfill the spiritual need to tourists, both internal and external factors, internal and internal like push and pull, crucial role in creating a satisfaction, and encounter them to return 50%, not so bad. The highlight are the importance of developing sustainable spiritual tourism that benefit both well-being, tourists, and preservation of natural resources. So what does it mean? It means that if you destroy all the nature, if you destroy all the environment, you won't be able to provide
forest bathing. Yeah. So that most important thing is forest bathing activity help to environment sustainable. So you need to keep it sustained. You need to keep it just the way it is, and then you can take the people. Nowadays the people there are some people write the book about a lack of nature. I'm not sure you have heard about that. And the people need more natural environment. The people need to go and get out and see, but you cannot find easy. I think you guys lucky. You walk 2 or 3 steps. Your backyard is nature. Yeah, your backyard is nature. Okay. Question. You have any question about this? Let's discuss together. What do you think about forest bathing? Are you interested to try? Yeah. Yeah. You want to? Yeah. Maybe we can have, if we have time, ask professor to take us to the forest somewhere, and I can lead you. Basically, what we do, okay? Basically, what we do is we will bring you to the forest like that, and after that, we will ask you to leave everything behind, leave your position, leave your worry, and we ask you to think about when you were a child. Okay, maybe leave that, and then you think about what did you do when you were 6 years old, something. Let's try together. Even we're not in the forest, okay? Let's try. I want you to close your eyes, sit still, okay? Sit still and close your eye, and you just follow my instruction, okay? Please, yeah. Close your eye. Close your eye. You have to close your eyes, okay? And I will help you. Maybe you will relax. Thinking about maybe you sit in the forest, okay? Now we're in the forest, we're in the nature. Don't worry about noise outside. Okay, don't about the noise outside, don't about anyone, don't about worry about your friends, don't worry about anything that come interrupt you. Be with yourself. Have a deep breath. Okay, deep breath. Exhale, inhale, inhales and exhale. Again, inhale deeply, exhale, inhale again, exhale. While you close your eyes, I like you to smile. Okay, I like you to smile. It doesn't matter what anybody think. Keep smiling. Listen to only my instruction. Now I want you to think about whatever you have thought before you came. You let it go. Have a deep breath. Have your brain empty. Now I want to bring you back when you were, remember, when you were young, 6, 7 years, 8 years. Think about that time. Go back about 14 years, 13 years of your age now. I want you to think about what is the most favorite activities that you used to do when you was a child and then make you very happy. I want you to think about that. I want you to think about that feeling, or even you think about you receive some gift or a present from your parents, or anything that make you happy at that time when you were 6 years, 7 years. And relax about at that time when you're happy, thinking only that time, and now you feel that you were in that time. Think about now you were in that the time that you're happy when you receive something, or you're happy, you play something that most make you memorable and you enjoyment. Thinking in that time, how do you feel? How long that you happy at that time? And what did you do after you feel happy about that?
I want you to think of that and you smile. Now I like to bring you back. You're thinking about that. What is the most you're happy when you give something? When you were young at that time, you are a giving person. What did you give and who you give to? Or maybe you who you play with you that you make you happy the most. And why? Think about that and then you smile. While you think about that, you have a deep breath with yourself as well. Have inhales and exhale and smile. Keep your face smile. Don't worry about anyone. Don't worry about worry. Don't worry about work that you have to do. Let it go, everything. Have a deep breath. Think about that activities. Keep smiling. I want you to be quiet without my instruction. Have a deep breath and think about the happiness when you were young. Maybe we have it here about 2 or 3 minutes together. Keep smiling. Have a deep breath. Now, slowly bring yourself to a current present where we sit here. Have a deep breath. Come back to real life. Come back to where you are. Have a deep breath. When I count 1, 2, 3, you will slowly, slowly open your eyes, okay? Have a deep breath one more time. 1, 2, smiling. 3, open your eyes. Open your eyes slowly. How you feel? That's good. Refresh. Anybody sleep? No. Oh wow. This is a sample that I will that I will bring you. Sorry. This is one of the only maybe 5% that I will lead you when you go to the forest. Basically, what I will ask you is I want you to feel the five senses. When you get into the forest, I want you to feel the sense of hearing, seeing, sight, hearing, seeing, listening, tasting, and feeling. But I cannot do it here, okay? If I can take you to the forest, I like to take you there. You will feel the whole session 2 hour, and then you will feel very happy when you get out, okay? Uh, so when I get in there, I ask you to taste the sense, the tense, five sense, and after that, I ask you to think about nothing. You know, when you was a child, you have nothing much to think, right? You only play, you only enjoy whatever parent bring you, and after that, you will forget everything. And then when you bring you back to the child, you're very happy. And that is one of the therapy in the forest bathing. So, okay, I like to ask your feeling. What do you think when you were young? I like you to open and talk if you can, okay, please. I want to ask you one by one. Give me a little bit of feeling that when you were young, when you think, what is that
make you happy. Okay, what the activity you happy, or what did you give? The first one you receive first, or the first one that the activity that make you happy. And the second question I will ask that what is the make you happy when you giving, what you give, and who you give. Okay, so let's start. Maybe I get you to start, please. Yeah, yeah, yeah. Mm. Why you think that, oh, the time is most happy is when I see mom pick me up? Oh, okay, that you have background. You stay in a boarding school. Okay, okay. Mm. So you happy that you can reunite with family? You go back to the big warm hug of the parents. And how do you feel when you think now? After I ask you to go back. The feeling of that time? Mm. Mm. Ah. Mm. Yeah. Yeah, yeah. So do you know the reason that why your parents bring you there? Just for give you education, right? Okay. Yeah, that's good. That's a very good feeling. How about the another thing that the giving, the thing that you do and make you happy from giving? Mm-mm, anything, yeah, yeah. If you remember, yeah. Can offer. Mm. Give them some food. Happy. Okay, that's good. How about you? That's okay. Did you photo? Okay, thank you. Please share. Mm. Mm. What made you happy that time? What was that? Yeah, yeah. And that you happy. Yeah, you enjoy that. And what did make you enjoy when you giving something? What did you give? Did you play anything you're happy? Yeah, yeah, yeah. That's good. Yeah, and the most happy time, right? You enjoy, and then you feel like you have good friends, you have good mate. Yeah, that's good. Thank you. All right, how about you? Did you think? What did you think when I asked you to close your eye? What did you think? Thinking something? You can speak in your language. How about you? Okay, that you can come back. What do you think when you were young that made you happy? Mm, yeah. Mm. And what is make you happy when you do something good?
Oh, yeah, yeah. Wow, that's very nice. That's very nice. Thank you so much. How about you? Okay, would you like to share me something? Yeah, please. You can have a microphone. What made you happy when you were young? What did you play? Okay, what? Indian game. Okay, what is like? Did you play with how many people? Six of them. How old were you that time? You can remember, okay? That you're most happy. You don't have to think anything, right? You think more when you use your study, right? You have so many study, you have many exam, and then that time you were just happy, and that bring the memory, good memory. When you think about that now, you happy when you think that time. That is forest bathing. Yeah, we let them you forget everything. How about you? You didn't think anything. When I asked you to close your eye, what do you think? Oh, what I gonna have this for lunch? Okay, would you like to share? Would you like to share? No? Okay. All right. Thank you. You're very shy. Okay. You maybe I will ask again and again for the next 6 days. All right. That is the activities that we do in the forest bathing, but we have more. Okay. I will ask you to hug the tree. I will ask you to talk with the tree. Not that crazy, but the tree give you the answer. Sometime when we hug and then we connected, we try to let go everything. We just be with nature, and this is the therapy to make people have mental well-being. Okay. Um, so in the suggestion, based on the finding, we further offer, the research should be investigated with the medical benefit as well in the forest bathing for the Thai context. Tourist operate and policymaker should focus on creating forest bathing experience that cater for the spiritual and physical. If you want to have mental, physical well-being, but in the other part of the push factor as well, promote tourism, spiritual tourism, sustainability in the area, and then also bring the local culture to make our culture to be sustained. Like your ancestor been doing for a long time. You don't want it to be disappear in your generation. So you need to bring up the local culture to be sustained and to keep it back, bring back the good thing that we believe. Okay. I think it's lunchtime. We will go for have a break. Yeah, that's it. For the conclusion, the activities for red bathing is one of the activity that help with the spiritual healing, mental well-being, physically, emotionally. Forest bathing is more than just recreation activities, but it's a pathway that our soul can be connected. We hope this research will contribute to the development of spiritual tourism in Thailand and as other countries. Okay. All right. We will have a break. In a summary, what we have talked, we talk about spiritual wellness, we talk about activities, yoga tracking, we talk about destination development and the strategy, how we make the destination tourist, how we make destination yoga is better, and also we did practice a little bit of forest bathing. So this kind of thing that also can link the spiritual can be linked into spiritual religion and also non-religion. But the activity that I show you is basically it will be linked to non-religion tourism. Okay, so in the afternoon I maybe recover for you again about Ayurvedics in the afternoon, and we will talk about the strategic management for the spiritual tourism, strategic management branding. In the afternoon, I also will ask us to think about local. All right, term size symbol local for Ladakh. We will discuss together, and then we get the finalized together, and we will submit into the education department. If they were gonna use or not is up to them, but we will work this out together. All right. Any question? No more question. If you want to ask anything, no question, no talk. And yes, please. Yes.
in how the international tourists impact impact our local. Yeah. Um, yeah, I think very much impact, but we try to reserve. For example, very good question. For example, when we remember I talked to you about CBT, community-based tourism in Thailand and north of Thailand, Thailand. We have basically we have a traditional clothes northern, and then we speak north dialect. When you speak Bangkok to us, we understand, and then we will answer in north, but they will understand that. And then later on, when the tourist more developed, people at local they want to be like tourists. For example, we wear the traditional clothes, and tourists going there, you wear short, you wear thong, you wear singlet, you walk because it's too hot. And local people want to do the same. They don't want to wear like traditional clothes. Traditional clothes like very sometimes very delicate. It's sometimes it's too hot, and then young people and more they try to imitate tourist behavior. Another thing that we have been noticed that, for example, Western tourists they can kiss on the road. Yeah, if they go together like couple, man and woman, they are boyfriend girlfriend. They want to explore their emotional. They walk and just kiss on the road, and then the local girl, okay, I can do that, there's nothing wrong with that. Why they can do that, why can't I do that? Some new generation they change. In the old day, before we will live together, we have to get married. But now many young people in Thailand, they go to live together before they get married, which is the same like in the Western. So I'm not sure here how many you take that influence to in your daily life, or you still reserve. So that one thing that impact. However, there are very small number of the parents and try to convince their children not to imitate international tourists. Yeah, there are some. Yeah, there are some. This is a one good case study. That's good question. That's good question. Okay, I think we passed 5 minutes, so we will have a break, and then Rush will come. We have half an hour break, and then after that, 12:30, Rush will come. Okay. wellness sessions or more into tourism research sessions? Tell me, you might have made some conclusion till now. Which part is interested for us? Wellness research part is not good. आई रिसर्च देखो हम सब लोग ना हमने पहले डिस्कस किया कि हम रिसर्च करते हैं, हम नया इंस्टीट्यूट ढूंढ रहे हैं पढ़ने के लिए, है ना? वो भी एक तरह से रिसर्च ही है। आप देखते हैं ना पॉजिटिव नेगेटिव्स पूछते हैं, पूछना किसी से या वो करना, वो लिटरेचर रिव्यू है एक तरह से, किसी से पूछना, हेल्प ले रहे हैं आप, ठीक है? कोई सेकेंडरी डाटा रैंकिंग देखते हैं आप इंस्टीट्यूशंस की, किसकी रैंकिंग इतनी, वो क्या है? लिटरेचर रिव्यू है, ठीक है? एक कंक्लूजन पे जब आ गया आपका, तो वो आपकी रिसर्च की आउटपुट है, ठीक है? वैसे ही थोड़ा जब हम एकेडमिक रिसर्च में आते हैं, दैट इज बिट मोर प्रोफेशनल, मोर उसमें लिखने का तरीका होगा कि इसी स्टाइल में लिखना है, इसी उसका फॉन्ट का साइज इतना ही होना चाहिए, ठीक है? लाइन की लेंथ इतनी ही होनी चाहिए। अगर किसी ने कोई चीज लिखी है, जोफल हैज मेंशन समथिंग अबाउट लद्दाख, तो उसको कैसे लिखना है वो थोड़ा टेक्निकल है बस, बट इजी है, ठीक है? इजी है, ठीक है? सो जोफल, व्हाट इज योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट रिसर्च? लाइक दे आर सेइंग लाइक they are not interested into research, less, not interested but less interest, because they don't know about all such kind of things. For me, something is already present and there's some gaps in that. So to fulfill that, we do research, or or yeah, to make better, like actually mentioned, to make some changes or better policies, we can approach towards Research. yes, yes. Okay.
Simply we are discussing, okay, today's topic is how to approach the respondents. Okay, so till now you are familiar with the word respondents, yes or no? yes or no? respondents, समझते हैं आप respondents क्या चीज है? ये कौन है जो आपकी बातों का जवाब दे रहे हैं? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई एम आस्किंग यू हाउ आर यू डूइंग, how are you doing, it's not a good, for example I'm a researcher, I want to conduct a research, I want to conduct a research on profiling of tourists in Ladakh, profiling of tourists in Ladakh. Profile का मतलब क्या होता है? Age, basically age, gender, social status, right? It can be. And what are those components of a profile of a tourist? How are you going to decide those things? It will come from a literature. और लिटरेचर क्या है? जो हमारी, मान लो आप लाइब्रेरी में जो भी किताबें हैं उसको हम लिटरेचर बोलेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन आपकी इंटरनेट पे है उसको हम काइंड ऑफ लिटरेचर बोल सकते हैं. ठीक है, सर्च बताएगी आपके ऑलमोस्ट जो आर्टिकल्स हैं न्यूज़पेपर. अब मान लो आपने स्पिरिचुअल टूरिज्म जो है वो गूगल किया, चलो गूगल करो, आप सब लोग गूगल करो स्पिरिचुअल टूरिज्म, हाँ जस्ट सर्च इट. और यहां पे कैसे करेंगे सर हम? फॉर एग्जाम्पल स्पिरिचुअल टूरिज्म, टूरिज्म, ठीक है, सिर्फ लिखो स्पिरिचुअल टूरिज्म, कुछ नहीं लिखो. परफेक्ट, ठीक है, ऑल ऑफ यू गॉट द सेम आउटपुट, almost right? So I want to work on spiritual tourism. I want to profiling of the tourists who are coming here for a spiritual tourism. Profiling means, for example, if I am talking about your profiling in context of, if I'm going to make the profiling of a job fair, then gender, age, economic status, right? Mode of transportation, he's coming to attend this workshop, his almost his education level. So it is a profiling. So I will say those who are participating into this workshop, they have this kind of profile, right? Similarly, I want to do the profiling of a spiritual tourist in Ladakh, right? So I want to conduct the research, I am a researcher. If you want to conduct the research, you are a researcher. If all of you wants to conduct the research, you are a researcher. And who will be the respondents? These are spiritual tourists who are coming to Ladakh. Agree? Clear? Basic concept. Okay, so escape करो. Okay, let him fix the thing. So you got it? Spiritual tourist and a researcher. So this spiritual tourist is a respondent for you, and if you are conducting the research, then you are a researcher. So similarly, for example, there is another interest for you. You want to research on XYZ topic, which can be anything, right? For example, your interest is what kind of research, what kind of things you want to analyze in context of Ladakh? Anything.
जो भी चीज आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं लद्दाख के कॉन्टेक्स्ट में, टूरिस्ट से रिलेटेड, वेलनेस टूरिस्ट है ना। तो जो जो वेलनेस के लिए जो यहाँ पे सर्विस, वेलनेस सर्विसेज के लिए जो ले, वैसे वेलनेस टूरिज्म होता क्या है, अभी तक तो पता हो गया होगा आपको, बताओ। वेलनेस टूरिज्म इज सिंपली द प्यूरिफिकेशन ऑफ योर soul, body, right, through our traditional practices. It can be yoga, it can be ayush practice, naturopathy, Unani, Siddha, Soarikpa, whatever it is there, right? But there is a two type of a wellness tourist. One is a primary wellness tourist and second is secondary tourist. So primary wellness tourist is the one who is specifically visiting to X by Z to explore these wellness treatments, wellness practices. And there is another kind of person who is going to explore the he or she is going to participate into leisure activities, but in the meanwhile he or she also want to enjoy some yoga also into, so that is he is not specifically he or she is going. For example, if you are traveling to Rishikesh only for yoga practice, then you are a primary wellness tourist or secondary? Primary. If a person is traveling to Ladakh to explore the adventure tourism, but he has some plan to visit a few spiritual activities also, he wants or she wants to practice some spiritual practices also, then he or she is a secondary wellness tourist. Clear? So you want to conduct the research on, for example, profiling of a wellness tourist visiting Ladakh, right? So you are the researcher and your respondents will be that a wellness tourist who is traveling to this place, right? This is the basic difference between a researcher and a respondent, right? Any other example you want to add on? Adventure tourism. In that case, who will be your respondent? For example, you want to conduct a research on adventure tourism, so is it always the tourist who is your respondent or it can be someone else also? Depends on ourselves how we conduct exam. For example, okay, you got the question, you got the question. Is it the only is it the only tourist who will be your respondent always? हमेशा आपका रिस्पोंडेंट टूरिस्ट ही रहेगा या कोई और भी हो सकता है? कैसे और कैसे हो सकता है? बताओ बताओ, लेट हर फिनिश। और बताओ 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 बताओ, आपका रिस्पोंडेंट हमेशा टूरिस्ट ही होगा या कोई और भी हो सकता है? आप बताओ। और भी हो सकता है? नो, आई एम जस्ट आस्किंग जनरली। आप टूरिज्म के प्रोफेशनल हो, यू आर टूरिज्म प्रोफेशनल, यू आर टूरिज्म स्टूडेंट, सो आई हैव अ सिंपल क्वेश्चन, it is always the tourist who is your respondent or it can be someone else also? Louder, bit louder, you can use this. और भी हो सकता है इधर, और भी हो सकता है। तो इतना वो क्यों है, आप डाउन क्यों है? यू आर अटेंडिंग हैप्पीनेस क्लासेस, वेलनेस क्लासेस एंड यू आर डाउन, व्हाई सो? everyone everyone okay, now give me example, how can you say this? Yeah. See, देखो ना, थोड़ा पढ़ो पर अच्छा पढ़ो, ताकि आपसे कोई पूछे रिस्पोंडेंट क्या है चीज तो आप बता सको ना, तब तभी फायदा होगा ना इस वर्कशॉप का। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से कोई आगे यहाँ पे पूछेगा कि बताओ आप रिस्पोंडेंट क्या होते, तो खाली फिर बोलेंगे टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते, यही होगा ना। चलो बताओ और क्या हो सकता है? नहीं, हमारा क्वेश्चन ये था कि आप जब भी रिसर्च कर रहे हैं तो आपका रिस्पोंडेंट हमेशा टूरिस्ट ही होगा या कोई और भी हो सकता है? लोकल्स भी हो सकते हैं, कैसे? उनसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है ठीक है। और आप बताओ।
ऐसे नहीं चलेगा, बोलना तो पड़ेगा, जवाब तो देना पड़ेगा। बताओ बताओ, आप बताओ। थिंक सेकंड सेशन में हम क्वेश्चन डिजाइन करना सीखेंगे, ठीक है ना। पहले रिस्पोंडेंट का तो पता हो कि पूछना किससे है कौन ये रिस्पोंडेंट, क्या चीज है ये, है ना। कोई सेलिब्रिटी है या कोई शॉपकीपर है, बताओ। आपने बताया ना कोई और भी हो सकता है, कैसे हो सकता है और? फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू वन another scenario. We read about Doxy's irradiation index. There are 4 stages: euphoria, apathy, annoyance and लास्ट कौन सा था? एंटेगोनिज्म। लिखो, अभी लिखो। these are the basic concepts of tourism. You must keep all these things in your mind always. Apathy, sorry, euphoria, apathy, annoyance and antagonism. For example, I want to study the perspective of locals towards the tourists. मार्खा वैली वाले जो है टूरिस्ट के लिए क्या सोचते हैं, सुरू वैली वाले टूरिस्ट के लिए क्या सोचते हैं, और चुमाथांग वाले टूरिस्ट के लिए क्या सोचते हैं, ठीक है। इस केस में हमारा रिस्पोंडेंट कौन होगा? इस केस में हमारा रिस्पोंडेंट कौन सा होगा? प्रॉपर आंसर विलेजर। कौन से विलेजर? नाम बताया ना हमने, 3 वैलीज का नाम लिया। अगर आप मार्खा में रिसर्च कर रहे हैं कि आप उनका पर्सपेक्टिव जाना, उन होस्ट का पर्सपेक्टिव, होस्ट कौन है जहां, अगर लद्दाख जो टूरिस्ट आ रहा है तो लद्दाख इज अ होल होस्ट कम्युनिटी, ठीक है। तो मार्खा वैली के लोगों का हमने जो है वो पर्सपेक्टिव लेना है टूरिस्ट के लिए, कि क्या सोचते हैं, कैसा एटीट्यूड है, वेलकमिंग है नहीं है, वो और टूरिस्ट चाहते हैं नहीं चाहते हैं, दे वांट मोर डेवलपमेंट इन दैट रीजन और नॉट, ठीक है। उस केस में क्या है, आपका रिस्पोंडेंट होगा मार्खा वैली वाला, ठीक है। क्योंकि आपने क्या करना है, आपने अपना होस्ट का पर्सपेक्टिव ले रहे हैं ना टूरिस्ट के लिए, ठीक है। अगर आपने मार्खा वैली में यू वांट टू मेजर द सेटिस्फेक्शन ऑफ अ टूरिस्ट इन मार्खा वैली, इन दैट केस हु विल बी योर रिस्पोंडेंट? फॉर एग्जांपल, यू वांट टू मेजर द satisfaction level of the tourist in context of 5 days in Markha Valley, then who is going to be your respondent? बताओ। नहीं लग रहा पता, कंफ्यूजिंग। बोर्ड चाहिए मुझे प्लीज। फिर से आगे भाई, वीडियो ये खराब है, पूरा एक्टिव नहीं है क्या है इसका? नहीं पर ये बीच में रहेगा ना, फिर ऊपर कैसे पहुंच? अच्छा ये वाला, ओके ओके, जस्ट कम, थैंक यू सर जी, रहने दो, इतना ही रहने दो, ठीक है। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट ये पेन दो, ये पेन, दूसरा पेन, हाँ ये। वी वांट टू नो अबाउट द respondents, right?
in the very basic language, simply respondent is a person who is giving you the data regarding your research. आपका रिसर्च क्या है? टू अंडरस्टैंड, टू एक्सप्लोर द टूरिस्ट सेटिस्फेक्शन लेवल रिगार्डिंग 5 A's इन मार्खा वैली. मुझे सिंपल क्या पता करना है कि मार्खा वैली में जो टूरिस्ट आ रहा है, मार्खा वैली में जो टूरिस्ट आ रहा है वो वहां के 5 A's से सेटिस्फाइड है या नहीं. ठीक है, तो मार्खा वैली फॉर एग्जांपल 200 टूरिस्ट जा रहे हैं 1 मंथ में, किसी भी XYZ मंथ में. ठीक है, तो मैंने उसी मंथ में, फॉर एग्जांपल इट इज जुलाई, आई वांट टू एक्सप्लोर दैट does these tourists who are visiting Markha Valley during July have satisfactory tourist experiences or not with regard to 5 A's. Simple 5 A's. 5 A's, we understand this. Accommodation facilities. Does those tourists who are visiting to Markha Valley, are they happy? Are they satisfied with the accommodation services? Are they happy with the activities they are enjoying there? Are they happy or satisfied with the attraction of that place and basic amenities? And fifth one is accessibility. Right? I want to measure this satisfaction, their satisfaction level regarding these 5 A's. In that case, who are my respondents? Tourist. One context. Right? Now, for example, this was my one research. Now my another research is government is taking so many initiatives. For example, UT Ladakh has promoted homestay tourism, homestay based tourism, and they are asking the different stakeholders to get registered for that policy. Right? अब मुझे ये पता करना है कि people of Markha Valley or any other valley, right, in Ladakh, they are happy with the government policies or not. तो उस केस में कौन होगा रिस्पोंडेंट? उस केस में कौन होगा रिस्पोंडेंट? जवाब देने वाला कौन होगा उस केस में? लोकल, वहां के जो रहते हैं, होस्ट कम्युनिटी. बी मोर प्रोफेशनल, होस्ट कम्युनिटी बोलते हैं हम. ठीक है जी, होस्ट कम्युनिटी जो है वहां की, जो उसको होस्ट कर रही है, जो टूरिस्ट को होस्ट कर रही है. क्लियर? क्लियर? ऑल ऑफ यू आर एट द सेम प्लेटफॉर्म, वी ऑल आर एट द सेम प्लेटफॉर्म, राइट? फॉर एग्जांपल, आई वांट टू understand the behavior of or relationship of taxi drivers and tourists. I want to explore the relationship or behavior. I want to explore the behavior of tourists towards tourists. In this case, who are going to be our respondents? ध्यान से सुनना. I want to explore the behavior. किसका behavior? टैक्सी ड्राइवर का. किसके लिए? टूरिस्ट के लिए. इस केस में रिस्पोंडेंट कौन होगा? आप बताओ. पक्का? टैक्सी से पूछेंगे. क्वेश्चन नहीं समझ आया? हमने अंडरस्टैंड करना है बिहेवियर. किसका? टैक्सी ड्राइवर का. किसकी तरफ? टूरिस्ट के लिए. टूरिस्ट. ठीक है, गुड. आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर द रिलेशनशिप. I want to explore the relationship of tourists and taxi drivers. What kind of relationship they are having? Friendly relations है, it's more aggressive relations है, और some others, right? So ये कैसे पता करेंगे हम? इस केस में रिस्पोंडेंट कौन होगा हमारा? समझ नहीं आया? I want to explore the relationship between
taxi driver and a tourist. So in this case, who are going to be my respondents? जोर से both. कौन से both? Taxi driver and a tourist. Okay. Up. I want to analyze the sports tourism facilities. I want to conduct a multi-stakeholder research in context of a sports tourism infrastructure in Ladakh. इस केस में रिस्पोंडेंट्स कौन होंगे? I want to conduct a multi-stakeholder analysis regarding the sports tourism infrastructure in Ladakh. इस केस में कौन होगा? Multi-stakeholder analysis of sports tourism infrastructure in Ladakh. Jofel? It can be the athletes also. Okay. And the one who is making the policies about the sports. Okay. और आप बताओ. Sports. बताओ लास्ट. आप बताओ. कौन होंगे रिस्पोंडेंट इस केस में? नो आइडिया. जब हम टूरिज्म में मल्टी स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं, so multi stakeholders or stakeholder of tourism, it means all those parties who are facilitating the tourism, right? Or when we are saying multi stakeholder analysis regarding the sports tourism infrastructure in Ladakh, it means all those people who are directly or indirectly related to the sports tourism infrastructure development in Ladakh will be your respondents, including the sports person, those who are consuming those services, those who are availing those services. Clear? Nahi clear? Back. I will go to this one. स्लाइड पे चले जाओ डायरेक्ट. इसके खराब हो गया एक तो ये. Okay. So I hope till now you are clear about the respondents. So now just give me one example, each of you. Like this is my study and they are going to be my respondents. Jofel. मेरा study होगा sir. My study is on that how the tourists are impacting the should I say influence of the culture to the locals. Locals, right? So I'll take a respondent from of course from the locals. Locals, good. Next. बताओ. Who is ready with the answer? It's not good. बताओ. Behavior किसका behavior? Tourist का behavior. किसके लिए? Tourist का behavior. Tourist का behavior कैसे बिहेव करता है? हाँ, टूरिस्ट कैसे बिहेव करता है? ठीक है. हाँ, अच्छा है या बुरा है? पर पूछेंगे किससे? टूरिस्ट से पूछेंगे कि टूरिस्ट का बिहेवियर कैसा है? लोकल से पूछेंगे ना कि ये जो टूरिस्ट आते हैं बाहर से वो बिहेव कैसा करते हैं. उसमें आप और स्पेसिफाई कर सकते हैं कि मैं पूछ सकते हैं. अब लोकल्स भी आपके रिस्पोंडेंट हो सकते हैं, टूरिस्ट भी आपके रिस्पोंडेंट हो सकते हैं. इस तरफ बताओ रिसर्च इंटरेस्ट और कौन सा आपका पोटेंशियल रिस्पोंडेंट होगा.
क्या? बताओ बताओ बताओ, इधर आप बताओ. Culture. Culture. You want to know about culture? What about culture? Ladakhi culture is good or bad? This is to whom you want to ask. कौन होंगे आप, किससे पूछेंगे ये चीज? टूरिस्ट लोगों से. तो आप टूरिस्ट क्या होगा आपका? गुड, ग्रेट. आप पॉजिटिव थिंग्स एंड नेगेटिव थिंग्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टूरिस्ट. टूरिस्ट आपके लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है? अमेजिंग. तो आप किससे पूछेंगे ये चीज? टूरिस्ट से. आप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये मैं आपसे पूछूंगा या किसी और से पूछूं? ये बहुत इनोसेंट दुनिया में जीती है, पता है, बहुत ही इनोसेंट. शी बिलोंग्स टू वेरी इनोसेंट लाइफ, है ना, कि जहां पे इंसान खुद ही बोल रहा है कि मेरे में ये बुरा चीज है और ये अच्छा चीज है. Tourists are throwing the garbage or plastic bottles on the road. They will say it's good or bad. वो एक्सेप्ट करेंगे इस चीज को? नहीं करेंगे. ठीक है, तो टूरिस्ट का बिहेवियर अच्छा है या बुरा है, ये किससे पूछेंगे आप? लोकल से पूछेंगे. डिफरेंट स्टे, होम स्टे वाले से पूछेंगे आप, टैक्सी ड्राइवर वाले से पूछेंगे, है ना, जहां भी जो सर्विसेज वो कंज्यूम कर रहा है वहां वाले से पूछेंगे. ठीक है, तो टूरिज्म पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आप उनसे पूछ सकते हैं. या टूरिस्ट में ये भी है, ये भी पूछ सकते हैं आप, टूरिस्ट से भी पूछ सकते हैं. टूरिस्ट के पॉजिटिव, टूरिज्म के पॉजिटिव इफेक्ट्स है या नेगेटिव है, बट फॉर दैट यू नीड वेरी specific category of those, maybe those who are living only in a homestay or those who are living into wellness resorts, they will be bit responsible tourists. ठीक है जी, तो वो भी हो सकता है. टूरिज्म पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बट इट विल बी मोर बेनिफिशियल फ्रॉम द व्यू ऑफ लोकल्स. लोकल्स के व्यू से ज्यादा अच्छा हो सकता है. हमारा बच्चा पढ़ने में अच्छा है या बुरा है, बच्चे से पूछेंगे, टीचर से पूछेंगे, पेरेंट्स से पूछेंगे, है ना. हो सकता है जिस ट्रांसपोर्टेशन से जा रहा है उससे पूछें, हो सकता है वो घर में अच्छा रहता हो, स्कूल में अच्छा रहता हो और ट्रांसपोर्ट में बिल्कुल खूब हल्ला करता हो. इट कैन बी ना. तो मल्टी स्टेक होल्डर्स अप्रोच. ठीक है जी. नेक्स्ट, फैसिलिटीज. फैसिलिटीज अच्छी सी हैं या बुरी हैं, किससे पूछेंगे आप? टूरिस्ट से. नेक्स्ट, accommodations. Accommodation is a good or bad, right? Specifically, it is not limited to good or bad. It is a comprehensive. Like accommodation in Ladakh is a value for money. Accommodation facilities in Ladakh are sufficient. How do you rate the accommodation facilities in Ladakh? How do you rate the location of accommodations in Ladakh? It will be a bit length of questions, and from where you will drive these questions from the questions कहाँ से आएंगे? क्वेश्चन में जो कीवर्ड्स है वो कहाँ से बनेंगे? जो हमने क्वेश्चनर बनाया था उससे ना, वो उसमें जो वर्ड थे ना कि मैं पर्सनैलिटी के बारे में पूछ रहा हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव चीजों, वो कहाँ से आती हैं वो चीजें उसके लिए? लिटरेचर से. ठीक है, लिटरेचर में लिखा होता है, वहां से हम उसको कंपाइल करते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी बनाते हैं. क्लियर? सो नाउ इट इज क्लियर. हु आर द रिस्पोंडेंट्स? जो आपके क्वेश्चनियर्स, जो आपको क्वेश्चनियर्स का रिस्पॉन्स देते हैं. ठीक है, आपके इंटरव्यू का रिस्पॉन्स देते हैं, जो आपके सर्वे का रिस्पॉन्स देते हैं. ठीक है, जो आपको इंफॉर्मेशन देते हैं थ्रू सम डाटा टूल, डाटा कलेक्शन टूल्स. सो डाटा कलेक्शन टूल्स आर, डाटा को कलेक्ट करने के लिए कौन कौन से टूल हैं? आपने एक यूज किया है, क्या नाम है उसका? आपने एक टूल था, जब आप शांति स्तूपा गए, आपने वहां से लोगों से इंटरेक्शन किया, आपने क्वेश्चंस पूछे, तो वो क्या था? वो दैट वाज अ डाटा कलेक्शन टूल. नाम क्या था उसका? नाम क्या था उसका? आप उसको क्वेश्चनर बोल सकते हैं, आप उसको क्वेश्चनर ही बोलेंगे. ठीक है, उसमें क्या था? सेट ऑफ क्वेश्चंस थे. ठीक है, तो क्वेश्चनर क्या बनता है? क्वेश्चनर में सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं, जिसको आप पूछते हैं अपने पोटेंशियल रिस्पोंडेंट से. ऑल ऑफ यू आर क्लियर? अब मिनिस्ट्री के लोग आएंगे तो आप बता देंगे अब क्या होता है रिस्पोंडेंट्स. तो मिनिस्ट्री के लोग अगर ये पूछना चाहते हैं कि वर्कशॉप अच्छी थी या बुरी थी, उनके लिए रिस्पोंडेंट्स कौन से होंगे? अब इफ यू कैन आंसर दिस थिंग देन आई विल. गुड, दैट्स ग्रेट. सो क्लियर हो गया किससे हमें इफेक्टिव इंफॉर्मेशन मिल सकती है. हो सकता है आप किसी और से पूछते हैं,
पर इफेक्टिव इंफॉर्मेशन किससे मिलेगी? दैट इज योर रिस्पोंडेंट, दैट आर योर रिस्पोंडेंट. वेल डन, आई एम सो हैप्पी. सो रिस्पोंडेंट, द नंबर ऑफ पीपल हु आंसर्ड अ सर्वे. For most question types, each respondent provides only one answer to a question, but in the case of a multiple answer questions, one respondent can. ठीक है, आपने एक क्वेश्चनर बनाया, उसको एक ही रिस्पोंडेंट से पूछना है. ठीक है, पर एक क्वेश्चनर में जो है वो मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे, तो ये नहीं है कि उसमें मल्टीपल क्वेश्चंस हैं तो मल्टीपल रिस्पोंडेंट से पूछेंगे आप. समझ रहे हैं आप लोग? उस दिन आपके पास एक क्वेश्चनर था, शांति सुबह गए आप, तो आपने क्या हर क्वेश्चन अलग अलग उससे पूछा? एक क्वेश्चनर जो था वो एक ही रिस्पोंडेंट से पूछा ना आपने, कि एक क्वेश्चनर में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप जवाब दो. ठीक है, ऐसा होता है क्वेश्चन पेपर में जब क्वेश्चंस आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 का रिप्लाई जो है आप देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आप किसी और को देते हैं कि भाई ऐसा नहीं होता ना. एक क्वेश्चन पेपर को एक ही बंदा जो है वो सॉल्व कर सकता है. ऐसा ही करना है डाटा कलेक्शन में जब आप सर्वे करते हैं, ठीक है, या डाटा कलेक्शन के लिए जाते हैं. क्लियर? क्या क्लियर? एक क्वेश्चनर जो है एक ही रिस्पोंडेंट से पूछना है. ठीक है, पर देयर आर फ्यू केसेस. अब आप बोलेंगे ये पका दिया. देयर आर फ्यू केसेस, जैसे हमारे ना लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज होती है. लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज किसको बोलते हैं? जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चनर लिया, वो आपसे आज उसके ऊपर क्वेश्चंस फिल किए, सेम क्वेश्चन जो क्वेश्चन आपके था मैंने किया, वो आज आपसे पूछ लिया. फिर मैंने लिया कि अगले साल भी वही क्वेश्चन पूछा आपसे, वो क्वेश्चनर लेके गया, फिर मैंने आपसे पूछा. लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज में क्या होता है? रिस्पोंडेंट सेम रहता है, रिस्पोंडेंट सेम रहता है, नया नहीं आएगा. ठीक है, तो उस केस में क्या है, क्वेश्चनर सेम ही है, बट आई एम आस्किंग दोस क्वेश्चन विद यू मल्टीपल टाइम्स. सोशल साइंस की सबसे जो कॉम्प्लेक्स चीज है वो ये है कि हम क्वेश्चन पूछते हैं ह्यूमन बीइंग से, और ह्यूमन बीइंग का जो बिहेवियर है इट कांट बी स्टैंडर्डाइज्ड. मैं आज आपसे पूछता हूं कि हाउ डू यू रेट योर हैप्पीनेस, मे बी यू कैन रेट इट एज अ 1, पर मैं वही क्वेश्चन आपसे कल पूछता हूं और इन द मॉर्निंग यू गॉट 5,000 फ्रॉम योर पेरेंट्स फॉर पिकनिक, राइट? तो आप क्या लिखेंगे मेरे क्वेश्चन का जवाब? 10 आउट ऑफ स्केल चले जाएंगे, 5 में से 10 बोल देंगे. ठीक है, सर ह्यूमन बिहेवियर जो है वो कस्टमाइज या स्टैंडर्डाइज नहीं किया जा सकता. इट इज वेरी unstandardized, it can be changed easily. Clear? So you are clear about the respondents now. Respondent again, right? So respondents are a source of data for you. They gives you first hand information, primary data, right? So there are two very important concepts when you are going to select your respondents. One is a population, one is a sample. ठीक है, I want to study the tourist behavior. I want to study the tourist behavior towards locals in Ladakh. I want to study the tourist behavior towards locals in Ladakh. So all those tourists, now we have just write this statement please. You want to study the tourist behavior, you want to study the tourist behavior, okay? You want to study the tourist behavior, you want to study the tourist behavior. TOURIST, tourist behavior. इतना स्लो क्यों आ रहा है सर ये? Tourist behavior. Okay, leave it. You just write. You want to study the tourist behavior towards local in context of Ladakh. Towards local in Ladakh. Right? So give me very first
Answer. Who are the respondents in this question, in this research study? कौन होगा इसमें रिस्पोंडेंट? Local? How many of you? All of you are tourist. Okay, good. Respondents are local. Now we want to study in this case what is this population in this context of your research topic, and who is the sample, population or sample. So all those tourists who are traveling to Ladakh, they are population. They are population full, right? Because out of this population you want to extract some selected people, homogeneous. It must be homogeneous with the population. Clear? अभी तो आप प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं ना, पहले जो था पॉट में बनता था, तो पॉट में जब चावल बनते थे तो चावल पक गए हैं या नहीं पके हैं तो आप एक एक चावल को पकड़ के चेक करते थे. ओ यस बोल रही है देखो. नहीं, एक लाइक यू आर टचिंग एवरी ग्रेन लाइक इट्स कुक्ड और नॉट, एवरी राइस ग्रेन. क्या करते थे आप? क्या करते थे? एक दो चेक करेंगे. आप चाय बनाते हैं ना, चाय बनाते हैं, चाय में मीठा कम है या ज्यादा है आपके टेस्ट के हिसाब से है, तो आप पूरी चाय पी के देखते हैं या थोड़ा सा? क्यों इसमें हंसने वाली क्या बात है? बताओ. हाँ, थोड़ा सा चेक करते हैं ना, जो थोड़ा सा है ना, ये जिसके बेसिस पे आप जनरलाइज करते हैं. जनरलाइज, यू मेक अ स्टेटमेंट, यू कंक्लूड समथिंग. हाँ, चावल पक गए हैं. तो जो आपने चाय मीठा है, वो जो थोड़ा सा उठाया ना आपने, वो क्या है? वो है सैंपल. वो जितने भी चावल उस पोट में थे या जितनी चाय उस पोट में थी, वो पॉपुलेशन थी. ठीक है जी, क्लियर? अब लद्दाख के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं हम टूरिस्ट बिहेवियर. यू वांट टू स्टडी द टूरिस्ट बिहेवियर टुवर्ड्स लोकल. तो आप क्या करेंगे? सब टूरिस्ट से पूछेंगे फिर लास्ट ईयर. अब टूरिस्ट में भी और चीज है, डोमेस्टिक टूरिस्ट एंड फॉरेन टूरिस्ट. आप किसको पूछेंगे? डोमेस्टिक को पूछेंगे कि फॉरेन को पूछेंगे? फॉरेनर को पूछेंगे. इट कैन बी योर इंडिविजुअल चॉइस ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेचर. क्लियर? तो वापिस कहां पे गए हम? पॉपुलेशन और सैंपल. तो जब हम टूरिस्ट की बात कर रहे थे, तो टूरिस्ट 2024 में देयर वर 5,25,000 even more tourists were in Ladakh. So that was your population. उससे पहले उससे कम था, उससे कोविड में और कम था. ठीक है, तो आप जनरल आइडिया लगाएंगे कि मैं कितना, एवरेज निकाल लो. आप कुछ भी करो कि ऑन एन एवरेज, मान लो आपने 2010 के बाद 2020 के बाद जो है वो ऑन एन एवरेज इट वाज 3 लाख टूरिस्ट. तो 3 लाख टूरिस्ट जो है वो आपकी पॉपुलेशन होगी. तो आपके पास अगर 3 लाख टूरिस्ट को आपने पता करना है, उनका बिहेवियर पता करना है, तो आपको 3 लाख सबसे पहले क्वेश्चनियर चाहिए. ठीक है, 3 लाख मतलब मान लो आप रोज के 10 रिस्पोंडेंट को 10 लोगों को वो कर रहे हैं, तो कितने दिन लगेंगे? 30,000 डेज. इतने होंगे हमारी लाइफ में. 30,000 डेज इंटू 10 है ना, 30,000 3 लाख हो जाएंगे. 30,000 यूनिट 30,000 डेज. अब होगी रिसर्च, ऐसे करेंगे रिसर्च. फिर क्या करेंगे हम? फिर हम सैंपल निकालेंगे. जनरल आइडिया ये जो है, जनरल तरीका जो है वो हम लेते हैं 10% ऑफ द पॉपुलेशन. कि पॉपुलेशन का 10% है तो उसको हम जो है वो सैंपल बना लेते हैं. और भी अच्छे वो है तरीके हैं, कितने लोगों को पूछना है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आपके क्वेश्चनियर में, उसका 10 टाइम्स ले लो. ये जनरल, दिस इज नॉट साइंटिफिक प्रूफ बट जनरल आइडियाज. ठीक है, तो फिर जो 10% आएगा आपका, मान लो आपने बोला कि जो भी है मेरे क्वेश्चंस का जो है, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस है मेरे क्वेश्चनियर में, उसका 10 टाइम्स लूंगा मैं. इसके कुछ प्रूफ्स हैं, कुछ रिसर्च में इसको यूज किया है. तो मान लो आपके क्वेश्चनियर में थे 10 क्वेश्चंस या 20 क्वेश्चंस. 20 क्वेश्चंस का 10 टाइम्स कितना हो जाएगा?
200. So you will ask your question from 200 tourist respondents. क्लियर? तो ऐसे जो है हमने सैंपल कलेक्ट करना है. अब वो जो 200 है, वो जो 200 आपने सेलेक्ट किए, सबसे पहले क्या बात की हमने? पॉपुलेशन की, कि ऑल दोज टूरिस्ट हु आर ट्रैवलिंग टू लद्दाख, यू वांट टू नो देयर, यू वांट टू अंडरस्टैंड देयर बिहेवियर टुवर्ड द रिस्पोंडेंट. समझ रहे हैं ना? अब इमेज बन रही है दिमाग में. जितने भी टूरिस्ट आए लद्दाख, उनका पूछना है आपने, उनकी परसेप्शन जाननी है कि टूरिस्ट के साथ कैसा, हमारे लोकल्स के साथ कैसा बिहेवियर है. ठीक है, फिर हमने डिसाइड कर लिया कि देयर इज मोर स्टडी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कि डोमेस्टिक टूरिस्ट के ऊपर जो है वो रिसर्च हुई है और फॉरेन टूरिस्ट के कॉन्टेक्स्ट में जो रिसर्च नहीं हुई है. तो और वो आपको पता कहां से चलेगा? पता, वो लिटरेचर रिव्यू से पता चलेगा कि लिटरेचर है, वैसे वैसी रिसर्च हुई है पहले की नहीं हुई है. ठीक है, आपने किया, मैंने फॉरेनर्स का बिहेवियर जो है वो जानना है लोकल्स के लिए. ठीक है, हमने अब कितने लोगों से जानना, तो जितने भी फॉरेनर टूरिस्ट आते हैं लद्दाख, ऑन एन एवरेज आप ये आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं कि 2020 के बाद लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी रिसर्च जो है इसको ना, जो कोविड इरा है उसको एक वो मान लिया, उसने टाइमलाइन मान लिया है, उसके बाद ही जो है वो स्टडीज कर रहे हैं. ठीक है, तो मान लो ऑन एन एवरेज जो है 2020 के बाद ऑन एन एवरेज मान लो हमारे 15,000 फॉरेन टूरिस्ट आया. एवरेज कैसे निकालते हैं हम? एयर 1 प्लस एयर 2 प्लस एयर 3 प्लस एयर 4 डिवाइडेड बाय 4, एनी नंबर इट कैन बी. ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? नहीं समझ रहे? एवरेज कैसे निकालते हैं? टोटल नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ, फॉर एग्जांपल यू हैव marks 40 50 60 80, right? So how I'm going to calculate the average of marks? Total number of marks divided by total number of people, right? So this is how you are going to get the average. In context of average foreign tourist arrival in Ladakh, you will add, for example, I want to calculate it on for 2021 2020 22 24 25, right? So I have a first year tourist arrival, total number of tourist arrival divided by number of years. ग्रेट, ऐसे जो है आपको सैंपल आ गया. क्लियर? ऐसे आपके पास सैंपल आ गया कि मैंने ये क्वेश्चन किससे पूछना है. फॉर एग्जांपल एवरेज आ गया 5,000 का हमने 10% निकाल लिया, जो भी आया. ठीक है, इतने लोगों से जो है मैंने पूछना है, अपने क्वेश्चंस को पूछना है. अब मान लो वो सैंपल है आपका 500 का, उन 500 में से भी कैसे सेलेक्ट करेंगे आप 500? आपके पास तो 50,000 टूरिस्ट आ रहा है या जो भी एक्सवे, उन 50,000 में से भी आप 5,000 कैसे निकालेंगे? कि मैंने इससे ही पूछना है. निकालो एक बार. फॉर एग्जाम्पल एज्यूम देयर आर 5,000 एवरेज कितना है? 5,000 टूरिस्ट. ठीक है, 5,000 जो है वो हमारी पॉपुलेशन आ गई. ठीक है, इसका हमने जनरली क्या लेते हैं? 10%. 10% कितना होगा? 500 आएगा. कितना आएगा? 5,000 का 10% कितना है? मैथ सबका ही खराब रहता है, इसलिए तो हमारे ये हाल है. 5,000 इंटू कितना बता रहे थे हम? 10%, तो इट विल बी 500, राइट? Average, on an average there are 5,000 tourist arrival, right, per year. So we consider that as a population. Now generally there is a 10% of the total population is considered as your sample, right? General idea, right? Or 10 times of your number of questions. अब 5,000 में से 5,000 में से मैंने 500 टूरिस्ट टारगेट करने जिनसे क्वेश्चन पूछना है. वो कैसे डिसाइड करेंगे अब हम? Respondent, how are you going to select your respondent out of that 5,000 number? बताओ कि मैंने ये क्वेश्चन इससे ही पूछना है, ये कैसे डिसाइड करेंगे? बताओ. पॉपुलेशन आया हमारा 5,000 का. जनरल आइडिया ये है कि पॉपुलेशन का 10% को हम सैंपल कंसीडर करते हैं, या जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है उसका 10 टाइम्स जो है वो हम सैंपल लेते हैं. लेमैन सैंपलिंग मेथड है, कोई साइंटिफिक मेथड्स नहीं है. ठीक है, तो हमने ये कंसीडर कर लिया.
अब वो जो 10% आया, जो भी मान लो एनी नंबर, इट इज 500, ठीक है। तो लद्दाख जो है 5,000 टूरिस्ट जो वो हमने एक्सपेक्ट किया कि आएंगे, वो हमने एवरेज निकाली है। तो इस साल भी मैंने जो है वो एज्यूम कर लिया कि इस साल जो है 5,000 टूरिस्ट आएंगे। मेरा सैंपल है 500 का। उन 5,000 में से मैं कैसे सिलेक्ट करूंगा उन 500 को? दिस इज आवर क्वेश्चन। क्या? कैसे 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 सेलेक्ट करेंगे हम? क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा ना सर। क्वेश्चन पे कैसे डिपेंड करेगा? क्वेश्चन किस रिलेटेड होगा, मतलब किसी सैंपल ले I simply want to know the behavior of the tourist behavior towards the locals, right? But in this case my respondents are locals, not the tourist. ठीक है, for example we take the another study tourist satisfaction in context of Ladakh, right? So I'm going to interview, for example there are 5,000 tourists. My respondent in this case, when I'm going to learn, when I'm going to explore the tourist satisfaction, तो उस केस में मैं टूरिस्ट से ही क्वेश्चन पूछूंगा ना, ठीक है। जब हम टूरिस्ट बिहेवियर की बात करें तो उस केस में हमने लोकल से पूछना, तो लोकल की पॉपुलेशन को उसको साइड में रख दो, हम टूरिस्ट के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करते हैं। तो लद्दाख जो है वो 5,000 टूरिस्ट आया, उसका सैंपल कितना लिया हमने, 10% अज्यूम किया, 500 आ गया। अब वो 500 हमने एक नंबर आ गया हमारे पास, है ना, वो लिस्ट नहीं आया, नाम नहीं आए बन के कि जॉन से पूछना है या जेरी से पूछना है या माइकल से पूछना है, वो चीज नहीं पता चली हमें। हमें सिर्फ ये पूछा कि हमने 500 लोगों से पूछना है, पर वो 500 लोग कैसे सिलेक्ट करने हैं हमने? कोई तरीका उसका? उसका तरीका है ये, ये है उसका तरीका, सैंपलिंग। उसका तरीका क्या है? सैंपलिंग। ठीक है जी, आपने पॉपुलेशन सिलेक्ट कर ली, पॉपुलेशन में से सैंपल ले लिया, पर वो सैंपल में कौन कौन से लोग आएंगे, आपके पास नंबर आ गया था, पर आपके पास लोग नहीं आए थे कि कौन कौन से लोग आएंगे वो। तो यहां पे बोलता है कि यहां पे बोलता है दो मेथड है, एक है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और एक है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में क्या है, वेरी बेसिक क्वेश्चन, जब भी आपके यहां पे एमपी, एमएलए, काउंसलर के इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, काउंसलर के इलेक्शन होते हैं, तो मिनिमम ये है कि दोज हु आर 18 और 18 प्लस दे कैन वोट, ठीक है। तो जो एलिजिबल है वोटिंग के लिए, तो सबके पास इक्वल राइट है ना। ऐसा तो नहीं है कि नहीं नहीं आप स्टेंजन नहीं आएगा या जिगमित नहीं आएगा, ऐसा नहीं है ना। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर एवरीवन टू वोट। ये अलग बात है कि कोई नहीं डाल रहा। सो व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू अपीयर इनटू XYZ इवेंट, देन इट इज अ रैंडम सैंपलिंग। समझ रहे हैं आप? नहीं समझ रहे? क्लास में सीआर के इलेक्शन होते हैं, क्लास में सीआर के इलेक्शन होते हैं, तो टीचर आता है, पूछता है कि कौन कौन जो है वो सीआर बनना चाहते हैं। 4 लोग हाथ खड़ा करते हैं, ठीक है। दूसरा टीचर आएगा, अच्छा आप 40 लोग हैं, आप में से जो है जॉफर जो है वो सीआर होगा। किस केस में जो है इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिली और किस केस में नहीं मिली? दो केस हैं। एक टीचर आया क्लास में, उसने बोला कि आप में से कौन कौन सा क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहता है, वन केस। दूसरे केस में एक टीचर आया, उसने बोला अच्छा यू आर 40 स्टूडेंट्स, सो अमंग यू दिस जॉफर इज गोइंग टू द क्लास रिप्रेजेंटेटिव। किस केस में जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी थी और किस केस में जो इक्वल? So when you have equal opportunities, then this is a probability sampling. When you don't have, non probability sampling. Clear? ठीक है। तो आप गए, आपने किसी से भी पूछने शुरू कर दिया,
ऐसे गया, आपने कोई मेथड नहीं लिया है, कुछ नहीं लिया, आपने इक्वल आपने बोला कि ठीक है, जो भी यहाँ पे संगम पे मेरे को जो भी टूरिस्ट मिलेगा मैं उससे पूछ लूंगा टूरिस्ट सेटिस्फेक्शन लेवल विद रिगार्ड टू डिफरेंट 5 वेज। ठीक है, ये पूछ लिया उसने, तो क्या होगा उस केस में, क्या हुआ, वो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का पार्ट हुआ या नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का पार्ट हुआ? I went to Sangam. I started to ask the question from whoever is coming to me, right? Regarding the service satisfaction in Ladakh. Is it which probability it is? Probability sampling or non-probability sampling? Probability how? Do those tourists who are visiting to Nubra or Leh city, did you involve them? फिर से घूम गया नहीं घूम गया प्रोबेबिलिटी Sangam tipo de España, probability नहीं होगा, specific जगह समझो, non probability है, जैसे ना संगम में पूरा चिपक शो, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। गुड। अब जो आपका केस था कि आपने बोला कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, उसको हम प्रोबेबिलिटी किस केस में बना सकते हैं कि हमने क्या किया, लद्दाख को कुछ क्लस्टर में बांट दिया। क्लस्टर जो है जनरली ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल रीजंस बनता है। आपने लिख दिया ये ईस्टर्न लद्दाख, वेस्टर्न लद्दाख, व्हाटएवर इट इज, है ना। तो मैं ईस्टर्न से 100 का सैंपल लूंगा, वेस्टर्न से 100 का सैंपल लूंगा, नॉर्दर्न लद्दाख से 100 का सैंपल लूंगा, और तो देन इन दैट केस यू आर जस्टिफाइंग, कि हाँ हर टूरिस्ट के पास जो है वो उतना मौका मिल रहा है। क्लियर? सो व्हेन एवरीवन इज हैज इक्वल चांस टू पार्टिसिपेट, देन इट इज अ random sampling. When there is no chance, then it is a non-random sampling. Clear? In probability sampling, there are 4 cases: simple random sampling, stratified sampling, cluster sampling and systematic sampling. Random sampling तो जो हमने डिस्कस किया, सिंपल की इक्वल चांस मिलता है। इस केस में, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के केस में, हर कैटेगरी में जो है वो इक्वल चांस मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब सब क्लासिफिकेशन, सब डेफिनेशंस क्या है उसके ऊपर हम बात करते हैं। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग के केस में क्या है, आपने हर टूरिस्ट को, लोकल को या हर रिस्पोंडेंट को इक्वल चांस दिया, बट आपने क्या किया, अपने पॉपुलेशन को, अपने पॉपुलेशन को जो है वो स्ट्रेटा में डिवाइड कर दिया, ऑन द बेसिस ऑफ एज, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। ठीक है, फिर आपने बोला ठीक है, मैं जेंडर में 40 जो है फीमेल से लूंगा, 40 मेल से लूंगा, इकोनॉमिक सेक्शन में यू आर जस्ट ट्राइंग टू बैलेंस द सैंपल। ठीक है, क्लस्टर सैंपलिंग में क्या है, जो हमने नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ किया, वो आपका यू मेक इट्स सम स्टेटस, और वो उसमें भी जो है वो पूरे इक्वल चांस देंगे आप। ठीक है, आप रेंडमली नहीं, आप ऐसे नहीं, आपने जो आया संगम की तरह उसको पूछ दिया, नहीं, यू विल मेक सम सिस्टमैटिक प्लान फॉर दैट, राइट। अब है सिस्टमैटिक सैंपलिंग में क्या है, you want to explore the opinion of a tourist about a Leh market। तो आपने क्या डिसाइड किया, आपने एक सिस्टम बना दिया कि I will go to Leh market on every Monday. I will sit there from 4 p.m. to 5 p.m. and whoever are coming at XYZ point, for example, nearby I love Leh design, so I will start asking them। तो आपने क्या एक सिस्टम सेट कर दिया कि हर मंडे को जाऊंगा, 4 से 5 वहां बैठूंगा, कहां पे, आई लव ले के पास, और वहां पे मैं उसको क्वेश्चन, वो मेरा रिस्पोंडेंट होगा, वो टूरिस्ट मेरा रिस्पोंडेंट होगा। ठीक है, और रोज के मैं सिर्फ 10 ही लोगों से पूछूंगा। तो यू फिक्स सम स्टेटस, उसमें सब लोगों को इक्वल चांस मिल गया ना। अगर जो मंडे को नहीं आया तो वो तो उसकी गलती थी, बट एटलीस्ट जो संडे वाले थे उनके लिए तो प्रोबेबिलिटी 50-50 थी ना, प्रोबेबिलिटी 50 दे हैड चांस और टू अपीयर और नॉट टू अपीयर। क्लियर? अब इस तरफ आते हैं हम, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। कन्वीनियंस, इसमें है कन्वीनियंस, कोटा, स्नोबॉल एंड जजमेंट सैंपलिंग।
कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या है? मुझे अगले महीने जो है वो अपनी थीसिस सबमिट करनी है, मैंने अभी तक डाटा कलेक्ट नहीं किया, मैंने आज रात को 500 क्वेश्चन डाउनलोड किए और कल जाके मैं ले मार्केट में बैठ के जो भी मिला मैंने उसको बोला कि ये जवाब जवाब। तो आई डिड एवरीथिंग एज पर माय कन्वीनियंस। आपने नहीं देखा कि वो नुब्रा गया है, कहीं गया है, वो इंक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव है, कुछ नहीं देखा। आपने देखा कि मेरा टारगेट है, मुझे थीसिस सबमिट करनी है, ऐसे किया आपने। क्लियर? नींद आ रही है ना? पक्का? गुड। कोटा सैंपलिंग क्या है? जैसे हमारा है ना एसटी का कोटा, जनरल यूआर का कोटा, ईडब्ल्यूएस का कोटा, वो दैट इज कोटा सैंपलिंग। कोटा के बेसिस पे एक फिक्स्ड नंबर जो आप असाइन करते हैं कि ठीक है ले की पॉपुलेशन इतनी है, ले सिटी की पॉपुलेशन इसका 10% में जो है वो अपना रिस्पोंडेंट, किसी और जगह की जो वो कम पॉपुलेशन है उसका कम परसेंटेज ले लूंगा। यू फिक्स सम कोटा फॉर दैट प्लेस, एक नंबर से सिलेक्ट कर देते हैं आप। ठीक है। स्नोबॉल सैंपलिंग वेरी इंटरेस्टेड, मुझे सैंपलिंग मेथड में सबसे अच्छी सैंपलिंग ये लगती है। क्या है स्नोबॉल सैंपलिंग? स्नोबॉल क्या होता है वैसे, बनता कैसे स्नोबॉल? रोल करके, रोल करके बनता है स्नोबॉल। कैसे बनता है स्नोबॉल कैसे बनता है? कैसे बनता है स्नोबॉल? कैसे बनता है? कैसे बनता है स्नोबॉल? क्या? यू ऐड, शुरू में छोटा सा लेते हैं फिर और करते हैं और करते हैं, राइट? जनरली स्नोबॉल कैसे बनता है पहाड़ों में, या एवलांच कैसे आता है आपका? एक किसी भी एक इफेक्ट से जो वो एक हल्का सा फ्लेक निकलेगा, या मान लो पत्थर ही निकला है ऊपर से, पत्थर तो कहाँ होगा, फ्लेक निकलेगा आपका, वो रोल करता 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 एंड में क्या बड़ा बन जाता है। तो ये सैम्पलिंग भी ऐसी है, आप यू स्टार्ट फ्रॉम सम वन पॉइंट एंड देन इट कीप ऑन गोइंग ऑन। ठीक है, इसको नेटवर्क सैम्पलिंग भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, you want to conduct a research of about the perception of solo travelers, women solo travelers about Ladakh, who are traveling in Ladakh। तो क्या करेंगे आप उसके लिए? सोलो वुमेन ट्रैवलर्स की आप परसेप्शन जानना चाहते हैं अबाउट द सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड द सिक्योरिटी डायमेंशंस इन लद्दाख। कैसे होगा ये काम? इसमें रिस्पोंडेंट कौन होंगे? सबसे पहले इस बात का जवाब, सबसे रिस्पोंडेंट्स कौन होंगे इसमें? क्या बताओ, कौन होगा? क्वेश्चन रिपीट करो, क्या क्वेश्चन था जोर बताना। सोलो ट्रैवलर में चिको फरंता तो सेफ्टी खोला तीन सौ एटीचेन मान दा पोमो चिको फरंग पले और सोलो ट्रैवलर या कोई सेफ्टी रीजन खोला नस्सी करने क्वेश्चन आंसर तो सुनो रिस्पोंडेंट सुनो कौन होगा रिस्पोंडेंट इसमें, इस केस में? बताओ, बोलो बोलो। खुद 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 मतलब टूरिस्ट है ना, सोलो वुमेन विल बी योर रिस्पोंडेंट। तो फिर क्यों इतना क्यों सोच रहे हैं आप लोग? ठीक है, उससे पूछना है हमने। तो इस केस में पॉपुलेशन कौन सी होगी? पॉपुलेशन कौन होगा? कौन सा पॉपुलेशन कौन सा होगा इसमें? जितने भी सोलो ट्रैवलर वुमेन जो है वो ट्रैवल कर रही है, दैट इज द पॉपुलेशन। ठीक है, सैंपल क्या बनेगा इसमें? मान लो दैट नंबर इज एक्स, सो एक्स का 10%, सिंपल जनरल आइडिया। ठीक है, एक्स का 10% या नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आपके क्वेश्चन में उसका 10 टाइम्स। ठीक है, वो आपका सैंपल आ गया। अब सैंपल में से भी हम कैसे जो है वो उनको टारगेट करेंगे, कैसे वुमेन के पास पहुंचेंगे? एक इज इट इजी टू फाइंड वन, इज इट इजी टू फाइंड वन सोलो वुमेन ट्रैवलर इन ले? इज इट इजी टू फाइंड वन? अगर आज आपको मैं यहां ले मार्केट भेजूं तो आप एक वुमन सिंगल सॉरी सोलो वुमन ट्रैवलर सर्च कर लेंगे, एक तो ढूंढ ही लेंगे। अब उसको ही पूछेंगे हम कि दूसरी कहां मिलेगी? हाँ ऐसा ही होगा, ऐसे ही उसको ही पूछेंगे कि और सिंगल सोलो ट्रैवलर कहां मिलेंगे, सोलो ट्रैवलर वुमन सोलो ट्रैवलर कहां मिलेंगी, बिकॉज शी नोज।
वो बोलेगी कि आप उधर बूशा हॉस्टल में जाओ, वहां पे सोलो वुमेन ट्रैवलर्स मिलेंगे, ठीक है, या XYZ और प्रॉपर्टी है, वहां पे जो है वो सोलो वुमेन। तो उनके पास गए आप, वहां पहुंच गए, फिर उनसे पूछा कि और कहां मिलेगी, वो बोलेंगे नहीं एक वहां पे एक सोलो वुमेन ट्रैवलर्स का कोई इवेंट है, वहां पे लगभग हर सोलो ट्रैवलर्स जो है वो आएगी, तो आप वहां जाएंगे। तो बना ना स्नोबॉल, धीरे 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 बड़ा होता जा रहा है। या वही बोलेंगे, क्योंकि बिकॉज फॉर एग्जाम्पल यू नो वेरी वेल हु आर द टूरिज्म स्टूडेंट्स इन लद्दाख, सीनियर जूनियर, आने वाला कौन सा ये भी पता होगा आपको, क्योंकि few of the people they keep on talking to you कि I also want to study tourism. Clear? So this is how you build a snowball sampling. Clear? अब लास्ट है जजमेंट सैम्पलिंग। अब ये की चीज है, आप अपने नॉलेज के बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि मैंने इससे पूछना है, सिंपल। आपकी जो खुद की एक्सपर्टीज है उसके बेसिस पे बोलते हैं आप कि मुझे ये करना है। क्लियर? सैंपल क्लियर, पॉपुलेशन क्लियर, रिस्पोंडेंट्स नॉट क्लियर। बताओ फिर, दो तीन एग्जांपल दो मेरे को, तीन एग्जांपल। यस, देखो अभी से रिसर्च की तैयारी कर लो, 4th ईयर आपका जो है वो रिसर्च होने वाला है ना, 4 ईयर बैचलर इन रिसर्च आ जाएगी आपकी। अभी 3rd सेमेस्टर में आप, सेकंड में, थर्ड फोर्थ ईयर में आ जाएगी। अभी से रिसर्च टेम्परामेंट डेवलप कर लो। बताओ तीन एग्जांपल कि ये मेरा रिसर्च है और इसके रिस्पोंडेंट ये होंगे। क्वेश्चन ये है कि मेरी रिसर्च ये होगी, ये मेरा रिसर्च होगा और इसके रिस्पोंडेंट्स ये होंगे। अब टूरिज्म कंसेप्ट्स पे जाओ या उन चीजों को सोचो, मॉडल्स के बारे में सोचो। बताओ बताओ बताओ, आप बताओ। एक टूरिस्ट क्या बिहेवियर के बारे में। टूरिस्ट बिहेवियर, टूरिस्ट बिहेवियर के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं आप, किसके किसके लिए? लोकल्स के लिए। तो रिस्पोंडेंट कौन होगा? टूरिस्ट। इतनी कंफ्यूजन क्यों है? क्या क्या? सॉरी, टैक्सी का? अच्छा, भाई टैक्सी वाले चार्ज अच्छा करते हैं कि नहीं करते हैं, वो अच्छा है कि नहीं है, वो किससे पूछेंगे आप? गुड। एक और? हाँ, वो पैकेज जो सेट करते हैं वो उनके लिए अफोर्डेबल है भी या नहीं, किससे पूछेंगे? ग्रेट। थर्ड थर्ड थर्ड, जनरली हम टूरिस्ट बोलने की जगह या ये बोलने की जगह हम बोलेंगे जो उसको कंज्यूम कर रहे हैं, पोटेंशियल सर्विस कंज्यूमर। ठीक है जी, वो लोकल भी हो सकता है, टूरिस्ट भी हो सकता है। अब थर्ड, बताओ। हाँ गुड, तो किससे पूछेंगे आप? हम्म, ठीक है, हाँ दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है, ठीक है, बट इट इज मोर अप्रोप्रिएट इफ यू आर गोइंग टू आस्क इज विद द टूरिस्ट। ठीक है, इधर आप जो फिर आप तीन एग्जांपल बताओ बताओ। टूरिस्ट फैसिलिटीज, हाँ अच्छी है या बुरी है, या उसके ऊपर एनालिसिस करनी है आपने, रिसर्च कंडक्ट करनी है, तो कौन होंगे आपके रिस्पोंडेंट इसके लिए? टूरिस्ट। और दूसरा एग्जांपल, टूरिस्ट सेफ्टी के ऊपर काम करना है, तो इसके लिए कौन होंगे रिस्पोंडेंट्स? लोकल। लोकल से पूछेंगे आपके टूरिस्ट सेफ है यहाँ पे कि नहीं, टूरिस्ट विल आंसर दिस थिंग ना, तो रिस्पोंडेंट कौन होंगे? टूरिस्ट। नेक्स्ट, तीन तीन बताओ, जल्दी करो। बोलो बोलो बोलो, आप बताओ। इस तरफ, इधर इधर सामने, बताओ बताओ, जल्दी बताओ, आप बताओ।
होम स्टे, हाँ किससे पूछेंगे? गुड और हाँ और एक्टिविटीज अच्छी है या बुरी है, किससे पूछेंगे? गुड और अट्रैक्शन कैसी है? अमेजिंग, क्लैपिंग फॉर हर, दैट्स नाइस। नेक्स्ट नेक्स्ट, बताओ बताओ बताओ। फ्रूट, खाना, फूड फूड, हाँ फूड अच्छा है या नहीं है, मतलब फूड के ऊपर रिसर्च, सिंपली अच्छा है या बुरा इतना नहीं होगा, इट विल बी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी होगा। फूड, गैस्ट्रोनॉमिकल टूरिज्म है ना, गैस्ट्रोनॉमिकल टूरिज्म का पोटेंशियल अच्छा है या कैसा है, ये किससे पूछेंगे हम? टूरिस्ट से। फूड के ऊपर आ गया, और जल्दी करो, जोर से। ट्रांसपोर्टेशन किससे पूछेंगे? और कल्चर, कल्चर क्या? कल्चरल टूरिज्म। अब देखो, अगर हम अलग अलग हो सकता है, मैंने आपने पहले डिस्कस कर रहे हैं कि कॉन्टेक्स्ट वेरी करेगा। आई वांट टू असेस, आई वांट टू असेस द इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर इन लद्दाख, है ना। टूरिज्म का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लद्दाख में ठीक है कि कैसा है, इसके लिए मैं सबको पूछ सकता हूँ। उसके लिए मैं टूर ऑपरेटर्स को भी पूछ सकता हूँ, टूरिस्ट को भी पूछ सकता हूँ, जो भी उससे कनेक्टेड है, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन योर रिसर्च एंगल, किस एंगल से सोच रहे हैं आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट, टूरिस्ट आने से क्या इफेक्ट होता है, ठीक है, ये किससे पूछेंगे? गुड और एक्टिविटीज क्या? कौन सी एक्टिविटीज जो है ज्यादा की जाती है लद्दाख में, कौन सी कम की जाती है, ये कैसे पता करेंगे और कौन बताएगा? इस बात का जवाब दो। टूरिज्म एक्टिविटीज कौन सी जो है लद्दाख में ज्यादा की जाती है और कौन सी कम की जाती है, इसका जवाब कैसे पता चलेगा आपको? टूर ऑपरेटर, गुड, टूर ऑपरेटर इज गुड, लोकल इज ऑल्सो गुड, राइट, they can answer this thing better. Clear, respondent clear, population clear, sample clear, sampling clear, ठीक है। तो पॉपुलेशन क्या होगी, उसका सैंपल क्या होगा, उस सैंपल में जो भी नंबर है उसमें किस किस से वो चीज पूछनी है वो भी पता चल गया हमें। क्लियर, बहुत बढ़िया, सॉरी। सो दीस आर दी वट एवर वी हैव डिस्कस्ड, इट इज ऑल देयर, ठीक है। जैसे मान लो सिंपल रैंडम सैंपलिंग क्या बोल रही है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग इज अ टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इन विच द रिसर्चर रैंडमली सेलेक्ट अ सबसेट ऑफ पार्टिसिपेंट फ्रॉम द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से अलग अलग चीजें आप सेलेक्ट करेंगे तब आपका सैंपल बनेगा। क्लियर, अब कितने का बनाना है वो सैंपल, वो आप कैसे करेंगे, उसका 10 टाइम्स होगा आपके क्वेश्चनियर का या पॉपुलेशन का, या एक जी पावर सॉफ्टवेयर आता है, वो एडवांस रिसर्चेज है, उसके बेसिस पे आप जो वो कलेक्ट कर लेते हैं कि मैंने इतने लोगों से ये चीजें पूछनी है। क्लियर, ठीक है। डाटा इज देन कलेक्टेड फ्रॉम अ लार्ज परसेंटेज एज पॉसिबल ऑफ दिस रैंडम, ठीक है जी। फिर बोलता है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में जो भी आपकी पॉपुलेशन है उसको सब ग्रुप बना देता है, रेस जेंडर कुछ भी है, एजुकेशन इनकम, राइट। फिर हमारा क्लस्टर, क्लस्टर में जियोग्राफी जो है प्रोबेबली एक की कंपोनेंट रहता है स्ट्रेटिफाइड करने के लिए, डिस्ट्रिक्ट बेसिस पे या विलेज लेवल पे या पंचायत बेसिस पे या ब्लॉक लेवल पे, इट कैन बी समथिंग लाइक दिस, ओके। then randomly you select the sample from that population, ठीक है। सिस्टमैटिक सैंपलिंग कर दिया हमने, सिस्टमैटिक सैंपलिंग इज अ probability sampling method where sample from a larger population are selected according to the random starting point, starting point कुछ भी हो सकता है ना। हमने क्या किया स्टार्टिंग पॉइंट कि मंडे को हम 4 PM to 5 PM एक पर्टिकुलर जगह पे ले आई लव ले के सामने बैठ जाएंगे, वहां पे जो टूरिस्ट आएंगे हम उनसे पूछेंगे, ठीक है जी। तो यू फिक्स सम सिस्टम, यू फिक्स सम सिस्टम, ठीक है। आपने बोला कि मैंने 10 ही लोगों से पूछना है या एक ही लोग से पूछना है, तो वो आपका एक सिस्टम सेट कर दिया आपने। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, कन्वीनियंस सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग, स्नोबॉल सैंपलिंग, जजमेंट सैंपलिंग, राइट।
कन्वीनियंट सैंपलिंग इज अ मेथड ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी, ठीक है, नॉन प्रोबेबिलिटी है ना, कि हमारे पास जो सैंपल है उसको हम इक्वल चांस नहीं देंगे, यही है ना प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में की डिफरेंस है कि जो हमारा सैंपल है उसको हम इक्वल चांस नहीं देंगे, ठीक है। हमने सीआर बनाया, एक केस आया नॉन प्रोबेबिलिटी केस में क्या होगा, एक टीचर आएगा वो बोलेगा कि आप जो है वो होंगे, कोई कोई मेथड नहीं, कोई सिस्टम नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा, ठीक है। बाकी बोलेंगे हमें तो मौका ही नहीं मिला। पर जब हमने ये बोला कि आप में से कौन कौन सीआर बनना चाहता है, तो आउट ऑफ विलिंगनेस हो सकता है कुछ नहीं बनना चाहते, कुछ बनना चाहते, पर मौका तो सबको मिला ना, सबको। सो दिस इज, so quota sampling we have it, there is a fixed number of quota, and then you select that sample from there. Snowball sampling, clear? Then we have judgment sampling, existing knowledge जो भी है, existing expertise जो भी है रिसर्चर की, उसके बेसिस पे भी वो ले लेता है, ठीक है, अपने हिसाब से। डाटा कलेक्शन टेक्निक्स इंक्लूड्स, जनरली इन थे एक रिसर्चर 2024 में, उन्होंने बोला कि ये अलग अलग टेक्निक्स जो है वो हमारी डाटा कलेक्शन के लिए होती है। इंटरव्यू मेथड है, क्वेश्चनर मेथड है, ऑब्जर्वेशंस हैं और रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। टाइप ऑफ रिसर्च विल डिसाइड योर टाइप ऑफ डाटा कलेक्शन टूल, ठीक है। इंटरव्यूज में क्या होता है, इंटरव्यूज जनरली हम इट्स लेस नंबर ऑफ पीपल, कुछ रिसर्चर्स बोलते हैं कि 10 से 12 लोगों से अगर आपने इन डेप्थ इंफॉर्मेशन लेनी है तो 10 से 12 लोगों का जो है वो सैंपल बहुत है, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चनर जो है, जब आपने लार्जर स्टडीज कंडक्ट करनी हो तो उसके लिए क्वेश्चनर लेते हैं। फिर आपका ऑब्जर्वेशन मेथड भी है। ऑब्जर्वेशन मेथड जो है वो क्वालिटेटिव रिसर्च का पार्ट है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन जो है वो आप ऑब्जर्वेशन में क्या करते हैं, आप जनरली अपनी 5 सेंसेस का यूज करते हैं और आप एक पर्सपेक्टिव तैयार करते हैं फिर उसके साथ, ठीक है। ऑब्जर्वेशन जो है वो डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है। एथनोग्राफिक एक कॉन्टेक्स्ट है। एथनोग्राफिक में क्या होता है कि जनरली आप कम्युनिटीज की स्टडी करते हैं, सोसाइटीज की स्टडी करते हैं, व्हेन यू कैन बी पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी एंड यू कैन नॉट बी पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी, कोवर्ट एंड ओवर्ट, राइट। जब आप डायरेक्टली पार्टिसिपेट कैसे कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने लद्दाखी कल्चर के ऊपर स्टडी करनी है कि जो है टार विलेज के लोग कैसे रहते हैं, कैसे बैठते हैं, तो आई विल पार्टिसिपेट इनटू देयर एक्टिविटीज आल्सो। वो खेत में जा रहे हैं तो मैं खेत में चला जाऊंगा, मुझे कल्चर के ऊपर लिखना है ना, उनके कल्चर के ऊपर लिखना। घर में खाना बनाए तो मैं खाना बनाने लग गया, वो लकड़ी लाने गए मैं लकड़ी लाने चला गया। आई एम पार्टिसिपेटिंग इनटू देयर एक्टिविटीज, दैट इज अ पार्टिसिपेटरी रिसर्च एंड मोर ओवर इट इज अ ऑब्जर्वेशन डायरेक्ट रिसर्च। ऑब्जर्वेशन में डायरेक्ट पार्ट। इनडायरेक्ट क्या है, अच्छा वहां पे खेत में काम कर रहे हैं, मैं यहां से ऑब्जर्व कर रहा हूं, देन आई एम मेकिंग द इन्फ्रेंस, क्लियर। और क्या था, रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स के बेसिस, फॉर एग्जांपल पॉलिसी एनालिसिस है या टूरिस्ट अराइवल्स है, ठीक है, जो भी डाटा से रिलेटेड, जो भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। एक जैसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो है बहुत सारे प्रेस नोट्स आते हैं, पीआईबी है वो प्रेस नोट्स निकालता है, वहां से आप उसको कंपाइल कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग गवर्नमेंट्स की रिपोर्ट्स हैं, गवर्नमेंट्स की डाटा है, रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जो एट पार विद योर इंटरेस्ट, रिसर्च इंटरेस्ट है, क्लियर। इंटरव्यू, ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर रिसर्चर टू डिजाइन एन इफेक्टिव एंड इंसाइटफुल मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन पर्टिकुलर, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, दो लोगों के बीच में होगा इंटरव्यू, बट इन फ्यू केसेस, फॉर एग्जांपल यू वांट टू इंटरव्यू सम टूरिस्ट हु डजंट नो इंग्लिश, उसकी कोई लोकल लैंग्वेज है, फिर 2 से ज्यादा लोग चाहिए, इंटरप्रेटर भी चाहिए ना आपको एक, तो देयर इज एक्सेप्शन इन एवरी केस, क्लियर। सो इंटरव्यू इज जनरली टू अंडरस्टैंड द to collect the in-depth information, to understand the behavior, attitude of your respondent, clear। इस केस में क्या है, जैसे मान लो आपने डिस्कस करना है कि जैसे रिसेंटली एक मीटिंग हुआ विकसित भारत बाय 2024, तो मैंने करना है कि लद्दाख के कॉन्टेक्स्ट में इस चीज के ऊपर क्या पर्सपेक्टिव है विकसित भारत के ऊपर, तो मैं किसको अप्रोच करूंगा, लोकल्स, ठीक है। तो प्रोबेबली मैं क्या करूंगा, जो रिप्रेजेंटेटिव है
है ना। हो सकता है स्कूल लेवल पे, अब बच्चों को थोड़ा पूछूंगा स्कूल में जाके, उनको तो पता भी नहीं होगा विकसित भारत जैसा कुछ वो भी है, कैंपेन भी है, ठीक है, या हो सकता है पता हो कैंपेन का पर आगे ना पता हो। तो इस केस में क्या है कि मैंने ये जानना है कि हाउ द इंटरेस्ट ऑफ लद्दाख इज अलाइंड विद विकसित भारत अप्रोच टू एट द रेट 2027। तो मैं किसको पूछूंगा, नंबरदार है या काउंसलर है, उनसे पूछूंगा ना। तो कम लोग होंगे वो, या एलजी साहब, आपने बोला एलजी साहब को पूछो, या डीसी लोग हैं उनको पूछेंगे ना। तो आपका इंटरव्यू में क्या, आप 1-to-1 पूछेंगे, 1-to-1 पूछेंगे ना, और विद सम प्रॉपर। अब एलजी साहब को पूछेंगे तो आप क्या बोलेंगे कि यूनिवर्सिटी आ जाओ, है ना, तो यू आर सपोज टू बी देयर। वैसे डीसी साहब का ऑफिस है या काउंसलर जी का ऑफिस है ना, वो बोलेंगे हमारे ऑफिस आ जाओ। तो एक प्रॉपर इन्वायरमेंट चाहिए इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए। इंटरव्यू जो है हमेशा एक प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में कंडक्ट होते हैं, ठीक है। कैसे कंडक्ट करना है, आपने उसको रिकॉर्ड करना है, उस इंटरव्यू को क्या करना है, वो सब चीजें वो है, वो पार्ट रहती है, ठीक है। फिर बोलता है कि टाइप इंटरव्यू जो है वो स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, और स्ट्रक्चर भी होता है, अनस्ट्रक्चर्ड भी होता है, और क्वासी भी रहता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्वेश्चनियर में क्या, इंटरव्यू में क्या होता है, यू हैव सेट ऑफ क्वेश्चंस, आप उसके हिसाब से ही पूछते हैं, ठीक है। सेमी स्ट्रक्चर्ड में क्या है, इट कैन बी अनस्ट्रक्चर्ड आल्सो एंड इट कैन बी स्ट्रक्चर्ड आल्सो। अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर में क्या रहता है, एनी रैंडम क्वेश्चन, यू डोंट हैव एनी सीक्वेंस ऑफ थिंग्स, कोई प्री डिटरमाइंड ऑर्डर नहीं है उसमें, यू जस्ट कीप ऑन आस्किंग। मोड ऑफ इंटरव्यूज क्या क्या हो सकते हैं, फिर सर्वेज आ गया। सर्वे सिंपल जो है, आपने क्वेश्चनर को लेके आप फील्ड में चले गए, वो जो प्रोसेस है उसको सर्वे बोलते हैं, ठीक है। एक सर्वे में एक से ज्यादा क्वेश्चनर आप यूज कर सकते हैं। जैसे हमने कैसे, किस केस में, मल्टी स्टेक होल्डर्स एनालिसिस फॉर टूरिज्म परफॉर्मेंस इन लद्दाख। तो उसमें क्या है, आपका लोकल का अलग क्वेश्चनर बनेगा, टूरिस्ट के लिए अलग बनेगा, ठीक है। तो एक सर्वे में मल्टीपल क्वेश्चनर हो सकते हैं, क्लियर। और होता किस लिए, डाटा कलेक्शन के लिए, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन के लिए जनरली, ठीक है। तो क्वेश्चनर क्या होता है, क्वेश्चनर में क्या होता है, सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, एक सीक्वेंस होता है, ठीक है। उसके क्वेश्चन जो है वो दे आर एट अ पार विद योर रिसर्च इंटरेस्ट, आपको ये डेटा देता है। इट इज अ टूल टू कलेक्ट लार्जर नंबर ऑफ डेटा, क्लियर। ये डिफरेंस है आपका इंटरव्यूज और क्वेश्चनर में। इंटरव्यूज जो है वो जनरली लेस नंबर ऑफ पीपल्स के ऊपर किया जाता है, और क्वेश्चनर जो है वो, सर्वे जो है वो, सॉरी क्वेश्चनर जो है वो जब आपको ज्यादा लोगों से चीजें पूछनी है तो उसके लिए क्वेश्चनर डेवलप करते हैं, क्लियर, बेसिक की डिफरेंस। और इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम एंड मनी व्हेन यू आर कंडक्टिंग इंटरव्यू, ठीक है। आपको पेशेंस, आपको टाइमिंग लेनी पड़ेगी, आपको स्केड्यूल शेयर करना पड़ेगा, वो स्केड्यूल पूरा अब जैसे मान लो आपने विकसित भारत विजन के ऊपर पूछना है, तो काउंसलर साहब से कभी एक बार जाएंगे, 2 जाएंगे, टाइमिंग देंगे, ये सब चीजें करेंगे, तो कंज्यूमिंग है ना, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये, ठीक है। टाइप ऑफ क्वेश्चनर, क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड। व्हाट इट मींस, क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड। एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड। आज लंच में दाल चावल ही बना है, ठीक है। एक ये है कि आज लंच में सिर्फ दाल चावल बना है, और एक है कि आज आप लंच में क्या खाओगे। दो क्वेश्चन है कि आज लंच में दाल चावल ही बना है, और एक क्वेश्चन है कि आज आप लंच में क्या खाओगे। तो व्हेन आई हैव क्लोज्ड योर ऑप्शंस then it is a closed ended. When I have not closed your options, then it is a open ended. So in this previous statement, which one is open ended and which one is a close ended? Clear? 10 दिन में तो आप रिसर्चर बन जाएंगे। What is your motive to travel? ये मुझे पता नहीं फॉन्ट क्यों इतना चेंज हो जा रहा है सर, सॉरी ना। तो what is your motive to travel? It is a leisure, business, culture and adventure. So it is a open ended question or close ended question? कैसे? तो और चाहिए थी आपको, इसमें कवर नहीं होते सारे। ज्यादा भी हो सकता है।
गुड, ठीक है. सो वी हैव कन्फाइंड योर ऑप्शंस, देन इट इज अ क्लोज एंडेड क्वेश्चनियर और क्वेश्चंस. और एक होता है इंटरेस्टिंग. व्हाट इज योर मोटिव टू ट्रैवल, मोटिव ऑफ ट्रैवल? कैसे? फिक्स नहीं किया ना, ठीक है. नाउ टेल मी, क्वेश्चनियर कैन बी ओपन एंड, ओनली ओपन एंड और ओनली क्लोज एंडेड? एक सिंपल क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चनियर, इट कैन बी ओनली क्लोज्ड और ओनली ओपन एंडेड. बताओ बताओ बताओ. बताओ. ओपन एंडेड एक क्वेश्चनियर, लद्दाखी में बताना. A questionnaire can only be closed ended and only open ended. बताओ. बताओ. गुड. ए रिसर्चर बन जाएगा. दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है, और उसको हम बोलते हैं मिक्स मेथड अप्रोच, सिंपली. क्योंकि आप उसमें क्वालिटी, फॉर एग्जांपल हमने एक क्वेश्चन दे दिया कि व्हाट इज योर ट्रैवल मोटिव, देन यू गिव देम ऑप्शंस, राइट. और एक क्वेश्चन हमने ये दे दिया नीचे, ऐसे ऐसे नहीं, कुछ और दे दिया. मान लो, do you think there are other motives of other travelers when they are traveling to Ladakh? You just kept it open, ठीक है. जैसे हमारे उस क्वेश्चनर में एक क्वेश्चन था, what are the three positive and negative things about Ladakh? तो हमने उनको ओपन दे दिया उसका, तो हमने उसको क्लोज कर दिया. हमने एज पूछा, एज में आगे क्वेश्चन लगाया मेल और फीमेल, सो बी एनक्लोज देम. ऑप्शन, दो ऑप्शन दिए. और अगर नहीं था तो हम लिख सकते थे जेंडर और एज. जेंडर लिख दिया तो we kept it open, so someone can keep it as per this, because this gender is quite a controversial questions, right, in context of western societies, to be honest, right. Gender identification is a big dilemma among the western societies, ठीक है. तो इसलिए वहां के उनको प्रेसिडेंट को स्टेटमेंट देनी देनी पड़ी कि देयर आर ओनली टू जेंडर्स, मेल और डोनाल्ड ट्रम्प, ठीक है. सो दिस इज व्हेन यू आर गिविंग देम ऑप्शंस. When it is open, then it is a open ended question. When it is closed, options are closed, then it is a closed ended, right. Hope you are understanding the things. Points to keep in mind while designing questionnaire. क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी चाहिए आपके हिसाब से? For example, you understand English, I must draft the questionnaire in a French language. हाँ. अगर आपको इंग्लिश आती है तो मुझे क्वेश्चनर किसमें, फ्रेंच लैंग्वेज में डिजाइन करना चाहिए. यस और नो? क्यों? क्योंकि वो दूसरों को फ्रेंच समझ नहीं आता तो समझ नहीं. अच्छा. I want to understand the impacts of tourism on Ladakh, but I'm asking them questions. How many sheep do you have at home? ऐसा पूछना चाहिए. क्यों? उसको पता नहीं है कि हमारे घर में कितना शीप. ये उससे भी आगे है. मैंने ये पूछना है कि टूरिज्म के लद्दाख में पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं या नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, ठीक है. मैंने किससे पूछा, ये टूरिस्ट से पूछ रहा हूँ मैं, कि आप टूरिस्ट को पूछ रहा हूँ कि क्या टूरिज्म के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या क्या है लद्दाख के ऊपर. और मैंने क्वेश्चन उसमें ये पूछना चाहता हूँ मैं कि टूरिज्म के क्या इम्पैक्ट्स हैं लद्दाख के ऊपर, ठीक है. पर मैंने उसको क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट XYZ पॉलिटिशियन, राइट. व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट कास्ट सिस्टम इन इंडिया, राइट. हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ इंडिया. ऐसे करके क्वेश्चन पूछे. तो ऐसे क्वेश्चन पूछने चाहिए थे कि कुछ और क्वेश्चन पूछने चाहिए थे. उससे हमें क्वेश्चन कैसे पूछने चाहिए थे कि हाउ डू यू सी द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ लद्दाख विद टूरिज्म, हाउ डू यू सी द एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ ऑफ लद्दाख थ्रू टूरिज्म, ठीक है. तो आपके क्वेश्चंस क्या है, इट मस्ट अलाइन विद योर रिसर्च इंटरेस्ट.
ये नहीं है कि आप टूरिज्म के ऊपर पूछ रहे स्टडी करना चाहते हैं और आप बातें खाने की कर रहे हैं। जब खाना है तो खाने के साथ खाने की बात करनी है, जब टूरिस्ट बिहेवियर जानना है तो टूरिस्ट बिहेवियर के ऊपर बातें करनी है। समझ रहे आप? तो ये चीजें जो है बहुत ध्यान में रखनी है। लैंग्वेज हो गया, पर्सपेक्टिव ऑफ क्वेश्चंस हो गया, और क्या है, क्रिस्प क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चंस होने चाहिए, सीक्वेंस होना चाहिए क्वेश्चंस का, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में होनी चाहिए चीजें, समझ आए सामने वाले को, सामने वाले को क्या खुद को भी समझ आए, ठीक है। ऐसा नहीं होगी आप शशि थरूर की इंग्लिश यूज करें उसमें, है ना, तो खुद भी डिक्शनरी लेके जाना पड़े, अच्छा इसका मतलब ये होता है, ठीक है। क्रिस्प, क्रिस्प, क्लियर, शॉर्ट, टू द पॉइंट्स, ठीक है। अभी तक के लिए इतना ही क्वेश्चन डिजाइनिंग के केस में आपका, ठीक है। बाकी और ऑप्शंस हैं, उसमें सीक्वेंस भी रहता है, आप न्यूट्रल क्वेश्चंस की भी बात होती है, वो दे आर काइंड ऑफ थिंग्स एडवांस स्टेज ऑफ क्वेश्चन डिजाइनिंग, राइट। और एक चीज ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, उसका एक्सपर्ट से जरूर बात करनी है आपने, क्वेश्चनर बनाने से पहले भी और क्वेश्चनर बनाने के बाद भी। ऐसे ना हो वो हलवे बना दिया हो आपने, ठीक है ना, हो सकता है ना, ऐसा ऑप्शन है ना, ठीक है। ऑब्जर्वेशंस हमने डिस्कस किया इसको, बोलता है फाइव सेंसेस, परसेप्शन और अटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप ऑब्जर्वेशन के केस में है। आपने, आप यहां से आपको हमने भेज दिया कहां, दिल्ली, चल दिल्ली भेज दिया। दिल्ली में आपको मैंने एक काम दिया था कि जो ट्रैवलिंग है, जो लोग मेट्रो में ट्रैवल करते हैं उनका बिहेवियर कैसा है, ठीक है। तो आप क्या, यू आर शाई इन नेचर। अब देखो, this nature of the researcher is deciding the type of data collection tool. You are shy, you are introvert in nature, you cannot talk to the people, so you are using this method, observation method, कि ठीक है मैं मेट्रो में ट्रैवल तो कर ही सकता हूँ, लोगों को ऑब्जर्व करने में क्या जाता है, क्लियर, ठीक है। सो characteristics of a researcher also defined। अब तक ये सोच रहे होंगे तो मुझे तो, मैं तो लोगों से बात ही नहीं कर सकता था, अब तक यही सोच रहे होंगे ना। तो ऑब्जर्वेशन इज अ टूल फॉर यू टू कंडक्ट द रिसर्च। बोलो, पूछो। माइक इतने जोर से पकड़ा था, मैंने सोचा पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछ रही है, ठीक है। सो फोकस ग्रुप डिस्कशन, स्मॉल ग्रुप्स होते हैं, 10-12 का ग्रुप रहता है ये। इसमें क्या है, आपने मुझे ये जानना है कि लद्दाख में टूरिज्म की क्या सिचुएशन चली हुई है, तो मैं एक फोकस ग्रुप डिस्कशन बुलाऊंगा। जैसे वर्कशॉप्स, मीटिंग्स होती है ना, तो दे आर काइंड ऑफ अ फोकस ग्रुप डिस्कशन, ठीक है जी। ये है सिंपल। Focus group discussions are often used for to understand the detailed informations, perspective of the people, ट्रेंड क्या चला है, उन सब चीजों की फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिल जाता है आपको, ठीक है। फोकस ग्रुप डिस्कशन इज अ क्वालिटेटिव वे ऑफ डाटा कलेक्शन, ठीक है। स्किल एंड टेक्निक्स फॉर, क्या क्या टेक्निक्स चाहिए आपको, क्या स्किल चाहिए डाटा कलेक्शन के लिए, चाहिए कोई स्किल, नहीं चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, डाटा कलेक्शन के लिए स्किल चाहिए या नहीं चाहिए, एक एक स्किल का नाम बताओ, एक स्किल का नाम बताओ, कौन सी एक चीज बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस, गुड। आई कांटेक्ट, बताओ बताओ। फेस टू फेस, क्या बात, मास्क लगा के जाना, इधर बताओ, आप बताओ। ऑब्जर्वेंट बिहेवियर, पोलाइटनेस, कॉन्फिडेंस, शाई नहीं तो क्या होना चाहिए फिर ठीक है। सो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स यू आर सपोज टू हैव व्हेन यू आर अप्रोचिंग a respondent, and I hope you are quite clear about these few of the key concepts when you are into research। मेरी रिसर्च क्या है, उसके रिस्पोंडेंट्स क्या होंगे, उसकी पॉपुलेशन क्या है, उसका सैंपल क्या है, सैंपल को कैसे सिलेक्ट करना है, सैंपल सिलेक्ट कर लिया तो उनसे कौन से मेथड जो मैंने यूज करना है, किसके लिए, रिसर्च के लिए, डाटा कलेक्शन के लिए, ठीक है, और उनके लिए क्या स्किल चाहिए। डन, इतना तो समझ आ गया ना अब तक। थैंक यू सो मच, बड़े खुश लग रहे हैं आज, क्या बात है, समझ आ रहा है इसलिए
रिसर्च ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग। अभी ना आजकल मैं आई एम श्योर यू आर नॉट स्लीपिंग वेल। आपके दिमाग में ना वो ट्रिन ट्रिन हो रही है ना, घंटी बज रही है कि ये क्या हो रहा है ना। रात को ऐसे अच्छा सर ने रिसर्च पूछ ली, ओहो, आया सपना किसी को ऐसे रिसर्च वाला? नहीं है। Yes. Awareness about what? Yoga. Yeah. What is important that if we will develop that? Sorry. Service quality. That's good. What are they? For example, what is service quality? For example, they are cleanliness. Okay, the studio, yoga studio, and the place have to be clean, especially after COVID-19, right? They said that was sanitizer and alcohol. What did the second one? Service quality, and what the second one of the service quality? Reputation of the yoga destination, that is important. If you have good reputation, what that good reputation including authentic instructor, yeah, yoga instructor have to be authentic. Yes, and what else? How about accommodation? good environment, Yeah, accommodation have to be good environment, cleanliness. How about the price? should be Should have variety of the price to suitable for all budget, right? From low budget, medium, and high, right? Anything else? How about the studio owner? Remember case study? I tell you what the studio yoga owner have to be very warm welcome, right? If you're gonna go to yoga studio and you was stopped by the unfriendly, yeah, strict everything, your soul won't let go. Obviously, you do yoga is you need to, as soon as you walk to the door, it have to be appearance, spiritual, peaceful, yeah. So that is important thing. How about forest bathing? You know now you have done the closing your eyes. We know about the forest bathing is not actually not. I don't take you to go shower, right? Forest bathing is about to reunite yourself with the healing with the nature and where it's come from. Originally of forest bathing, Japan. That's good. And so what is important of forest bathing? It's help with healing, right? Spiritual well-being, and then physical well-being. That the case study, right? Mental well-being. What does mental well-being mean? mentally mind should be prepared. Should be prepared mind. Good mental well-being is you are able to control yourself in any crisis situation, right? If you have some difficulty in life, yeah, please. You want to answer something? Emotional well-being. Emotional well-being. So 5 attributes of the forest bathing. It can be applied in any wellness activities. So forest bathing give you 5 attributes of wellness. The first one, spiritual. Okay. What is about? What is spiritual well-being is about? Can you give me some example that you have good spiritual well-being? Yesterday we discussed about that. Do you remember? Remember yesterday I discussed that how can we tell that this person have good spiritual well-being? Yesterday you answered too. Behavior what bad? Getting bad. Good in what? For example, good behavior toward people. Kindness. You have more kindness. You're not selfish.
and that you have good spiritual. Yeah, that's very good. What else? What can we tell that person have good spiritual well-being? Act of kindness. You change your better behavior, and maybe you are close to God. Yeah, you always ask God, and whatever you do, you believe in God. You don't do bad thing because you know God might be punish you. If you can, oh, I'm not sure. Or like a Buddhism, we have 5 precepts, right? If you do 5 precepts, you follow what Buddha said, you feel good that you are have faith. You are able to be trusted by people because the people can feel that you have good spirit. When you are close to them, they are able to talk everything, and then they trust that you won't talk behind you back, right? What else? Okay, next one, emotional. What is the benefit of emotional well-being? Easy to upset or not easy to upset? Satisfied with everything. Yeah, emotional mean that you are express something in positive way. If you are in some situation you don't like it, and some people will have bad emotional about feeling not satisfied, they just explode. Good emotional well-being is you are positive in even in you are in a bad situation. If you are in the crisis, you still see something positively. Emotional well-being mean that you will be the positive person. Yeah. Social well-being. Socially, how with another person. We have good relationship with social and what else? About donation, volunteer, work for community. You are donation something. You are go to help people with the poor. Not necessarily to be food, not necessarily be money, but can be mind. You know, be with them when they suffer. Some people they not. Sometimes they don't need money. They have suffer inside. You are able to accompany them, right? Like you guys said, when you see the people, you offering food, you feel good. You do something to the society, and that you feel that you do something good for society, and you feel like you belong to the society, right? This is very important. Okay, if we provide wellness tourism, these are the most important thing that we should make sure that it in that activities. Okay, that very good. Thank you very much. I'm very happy you remember what I teach you. So next one, that this one is actually part of one of my research project, and then I wrote this in the book chapter. I think I sent that document to you. Okay, that document that talk about the destination brand image development for the spiritual retreat tourism. This model actually we propose to develop for millennial tourists, or they are in Gen Y. But sometimes we call millennials, or sometimes we call Gen Y, because this time it is the time of the from 1980. So if you see here, okay, 1980 to 1995. So they say the generation reaching adulthood in the early 21st century. So why they call millennial? Also, how at Generation Y, they have been stated by the technology revolution that show computer tables and the web become center of work and life. Okay, so this generation are lucky because the computer everything is cheaper. In my generation, computer was very very rare. You hardly to have your own, because they are too expensive. And then when we want to use computer, we have to go to reserve, and we have to go to the one. Sometime at work we have one computer at the whole hotel. Everyone try to get in. Yeah, this study we focus on the millennial. I want to know that if we will provide spiritual activities for this group, how can we do that? Millennial generation, one of the largest group. The reason that because also they are the majority. So I think if this one I calculate from born in 1980 to 1995, at the 2021 there will be 826 or 241. So now 2025, you think how old of this millennial will be this year?
If you calculate from 1980, how old the people will be? Add up. Yeah, 26. 21. 2021, they are 26. So now 2025. 31. 21 22 23 25 30 30 30, yeah. So now if in this year millennial will be start from 30 up until 44, right? 44 or 45, yeah. Okay, the person who born in 1980 to 1995. So majority in according to the literature review, they said that this group of people are majority in the society and population. So this study said if we provide to a group of the mass tourists, so maybe we can get opportunity to improve our business. We will have more customer to buy the product and package. So here that the model at when I interview people. So I interview the generation Y, approximately 20, no, hang on, 20 people, and most of them are yogi. Most of them are meditate. They like to go to meditation. They are the lecturer who are involved in the spiritual activities. And I have in that interview, okay, qualitative study, I in that interview. So here is the strategic management. So, okay. All right. So the first row, actually, if you look at the font here, this row first, okay? To develop the spiritual tourism destination branding, we need to consider three main components first here. All right. We must consider about these three components. The first component is, I said, spiritual tourism functional attribute. So what are they? They are explained in the second row here. Okay. What are the functional? The first, you have to consider the place. The second, service quality. The third one, leader qualification. And the last one, activity and program. And then if you go on the last row here, what is the place that you should be look at? What is the place that should be look at? Here, peaceful. Yeah? The place must be peaceful, quiet, and and green what? Green environment. And last one. That's good. Silent landscape. What does it mean? It means that if you want to provide a place for the activities, you must look for some place where they have peaceful, yeah, and then they have to be a silent landscape. It doesn't mean we go there and then we have something work out there like that, yeah. So we cannot have that in our place. How about the second one, the service quality for this study? What they said? Yeah, can you help me? The first one. What are they? What is a human basic needs? Food. Yes, that's good. Food need to be a luxury. Food need to be luxury. It need to be huge. Need to be very expensive. Not necessary. Basic need, easy, simple. Sometimes they can be vegetarian. Yeah. And sometimes that the place can give you the food only 2 meals, like monk here. The monk eat 2 meals, morning and lunch. After lunch, no more eating. So simple basic need, food, shelter, and water. Clothes, maybe no. Clothes, they will bring their own clothes. Okay, we not provide their clothes. Safety. How about safety? Yeah. Safety, security, most important thing. And simple accommodation. What does it mean? Simple place where we can rest. Yeah, but they can rest. Is it necessary to have swimming pool? Necessary to have expensive mattress? No. Air conditioning? Not necessary. And no. Actually, no. None of the place where we provide for the meditation, we don't have air conditioning. Even you are hot, we don't give it to you. If you go to have a look, if you don't like it, you should not come.
So basically, we will provide the reason was but good suggestion. But the reason was we need you to get used to be with nature, get used to be with the environment that is bring you healing, the nature healing you. So we don't put air conditioning in that. Okay. Food, water, clothes, safety, security. The third one, leader qualification. In this study said that you must have a good leader, but not just normal. Leader mean leader mean that the boss. Like in this university, we have the boss leader. But for leader spiritual, not necessarily have to be manager. Sometimes manager cannot be the spiritual leader. Yeah. You are just normal student. If you are in with the spiritual activity, you can be spiritual leader. You do meditation all the time, you can be the a leader. Yeah. So very important, they said here, spiritual leader performance, professional, expert, knowledgeable, well known. Well known mean that you must be doing for a long time and they see your performance. They see your experience rather than word. Have you ever heard the word that the actions speak louder than words? Yeah. Right, you say, oh, I am very good. I come to tell you guys, oh, I am very good. I am the best in the world. I am the most expert professor. And then you go to have a look. You haven't seen any of my work. She said that she good, but I never seen she do anything. Yeah. So some people said you better not say it. Let your performance, let your work speak. Okay. So especially leader qualification is one thing is I focus on ethic, ethic leadership. Ethic leadership usually they don't see the benefit. Ethics mean that you won't do the wrong thing. You won't, let's say, if you become a leader, the people blab and bribe give you some corruption. If you are the spiritual leader, you don't see the money that important. You rather consider and concern about human mind better than corruption with money. Ethic leadership also, you won't destroy all the human being mind. You won't destroy the environment. You will consider the right thing. Ethic leadership will always stick to do something good. Okay, so this is the qualification of the spiritual leader. The last one for the spiritual tourism attribute, um, activities program. So what they said, you have to include those activities that can heal your spiritual. Of course, meditation, yoga, and life coaching mean that the people who know how to deal with the people who have some vulnerable situation, or some people like just divorced or broken heart or maybe lost their loved one. So the activity program that we should be provide some of the life coaching, and then you have to consider about, when you go to do meditation, after you finish yoga, you want to be relaxing, right? So they said you need to provide activities after spiritual program. For example, explore local knowledge, social interaction, local food and lifestyle. So from this study, they said that after they finish meditation in the morning, they're doing some activity exercise. At the end, when they have free time, and then you must not put full program, and then they have no room to go anywhere. You should provide maybe Saturday, Sunday, or maybe one day off. You take them to the local. For example, like Thailand, we have the street food. The people go to Chiang Mai to do a meditation in the meditation center. On the Sunday, you have program free to go to explore street food. You can see local how they sell the food, how the local people eat, and then they go to see costume. And sometimes we have local dancing, traditional local dancing. In Thailand, we call the street food. You have here? I'm not sure. You have here? Where? That is main street. That is the main market. That not street food. No, no, like in the late night they serve. Oh, they will sell on the street. Oh, okay, okay. You must have seen some kind of barbecue. Okay, I see, I see. So, in the evening, Yes, they have every day. Oh, okay.
Okay, that's good. Yeah, the street food. So street food mean that the people sell something along the street and then easy eating. Maybe you don't have seat, right? And then maybe not too expensive. So that the street food. Yeah, can we trust street food here? Yes. Okay. When I go somewhere, I feel sometimes I'm not sure. Yeah. This is like Delhi. It's a kind of it's hard to trust because you don't know what they put to us. Yeah. There's lots of like population is also there, and there's lots of street vendors are also there. Here, some locals not really. Clean. Yeah. But how can they sell? How can they sell? Maybe the same people with them, right? Yes, yes. The same similar group that trust. But for us, I think we don't. But I think yeah, not only me. I think but I like to watch the video. Have you seen the very short video of Indian street food? Sometimes when they put something and they put the hand and then just put the hand. I see very often. Do you eat? I'm not. No, I said yeah. Tend to they mix the water. Yeah, and then they put it, and then the hand. I don't know what they come up. And they don't even clean. They just clean, and then just what you call puli. Yeah, and then they put it in, and I just look at that. I feel, yeah, I feel. I'm not sure, but there are some people. Your people don't eat it. How come Thai people will eat it? But I like to see. I like to look how they cook. So you never eat that, right? In Delhi, you not trust. But you can touch at Ladakh. Okay. All right. Now we go to the second components. If we will develop spiritual tourism destination branding, we need to think about the psychology attribute. What does it mean? Psychology mean that if you create some picture, okay, this is what you're gonna do. You have to create some picture and keep in my mind that when I see that, this place is all about, and it can tell the picture, the feeling, give you the idea about what you have, what you propose here. It need to create image, feeling idea towards tourist mind. This kind of thing that, for example, if you create some logo, you post that and then you advertise. When I open in Thailand, I say, oh, this is place for the spiritual healing. And what is the activities you will see without reading the word, without listen or without read the information. Only see the sign and symbol. I can get idea immediately. Okay, this is what I want you to help to design. We can have a keyword or a few word, and then you have picture, and then what you want to present. Okay, so this is the same thing. The symbol logo sign that represent spiritual context. For example, the picture of meditation practice. Sometimes you see the heart. Sometimes you see the bird. Bird means freedom. Yeah, bird means freedom, and freedom means that your mind can be free. Your mind can be no nothing string, no nothing attached to you. In that time, you feel free and you feel very peace. Okay. The last component, the spiritual tourism uniqueness experience. So this one, when we think about, I ask you to draw some unique in your country, in your region. You come up with some activity with environment. So this is what it's all about. How can we make that activity or destination or place to give a unique lifetime experience? I maybe have only one time to be here, but I hope that I will return in the future. But that is not my hometown, right? So once I come here, how can I uh, to participate in just activity, especially spiritual, and then I become a lifetime memorable. So this uh, component divide it into two object. Okay, the first one is you have to give them wellness attribute. We just said that five things, remember? So when you provide that experience must give them five attribute: physical, mental, emotional, spiritual, and social. And then it said here
experience well-being of physical, mental, social, and emotional, because this content is already talk about spiritual. Yeah. So you meditate, you will link into spiritual. So another four will be follow. Physical yoga, you can do that. Of course, you get the physical improvement, right? And another rest of that. How about social in yoga? How we gonna provide that? If they come to join the yoga, how can they benefit well-being, social well-being? Whenever you like see a group of people doing yoga, it shows a message like peaceful or it Mm. gives you a good vibes. So maybe like Mm. Social well-being is you are in a group together, and then you are get on together very well, and you're very happy when you were together, and that's social well-being. But if you be together in the group in the class, let's say in the yoga class, and then you feel not happy, the people not accept you because you behavior may be not nice, or you are fussy, and then you don't have social well-being, and that not successfully. So how come we make them have a good social well-being? Sometimes people come in the group, they're not always nice person, not everyone will be nice like you guys here, right? Oh, did I say it right? No one nice like you guys here. Sometimes maybe people come from different culture. Maybe when they join, maybe they're not very a good behavior. So you are able to accept that, and that is the most important thing. You can accept a person who not nice, and that you have a spiritual higher than them. Yeah. So this is very important. Okay. The second one, how can you create a unique experience for the spiritual? So event, festival, ceremony. Remember yesterday what I talked about? Festival that can be related to spiritual. Can you remember two festivals of Thailand? Ladakh and Songkran festival, and that water fight. That's very good. So that festival can create the spiritual experience, but they have only once a year, right? And I said that you cannot create festival every day just to sell the packet. So we have people do like that in Thailand, and then the government stop that. You're not allowed to do that. Or sometimes, Songkran festival, what happened? Singapore adopted. Singapore said, "Come to my country, we have water fight. We have Songkran festival." They want to create that. But you can't do that. If I bring your festival to Thailand, come, we have Iraqi festival. You never can do the same. You can't go to Ladakh. Okay, I will bring Ladakh to Thailand. That's not possible. Yeah, they are the news in, I think, last 4 or 5 years. Singapore tried to bring the Songkran festival to go to organize in Singapore, and then I saw that this is not right. And then maybe people think that no one go, even though you will provide that the people know what is original. So the same thing like that, if I said that the festival they only once time a year, so the people only come at one, but you want the tourists come all the time. So what we can do is we maybe organize the event, yoga festival event, maybe once a month, and maybe you organize the workshop meditation. For example, you sell the packet, okay? I will bring you to this national park. We will organize these 3 days, 7 days. The cost of the program depend. And if I come this time, oh, when you gonna have next Monday, let's say, and I apply and I pay the packet, you take me to the place, and then you organize the meditation, yoga, and then when the time finish, like a Nemo, right? Yeah, you can bring the people go to the place, and that is also give you the a regular event, or you can organize workshop. What does it mean by workshop? Workshop mean that you go to participate, but most have to relate it to the spiritual. For example, we have the workshop here. You can join. You can pay the money. For example, in Thailand, we have uh, they call the wellness mountain ride wellness workshop. In the morning, from 8 to 9, we have yoga, we have meditation, and then after that they have yoga, and then they have the workshop about Ayurvedic. In the afternoon, they have about sound healing. So when you go to participate, you see the program.
what you want to join, you can participate. You buy a packet. In Thailand, last time I went to be one of the speaker, they sell 3,000 baht per packet, two nights, 3 days, and then they sell the food in very cheap, not expensive. Okay, so the last one, if you want to create unique experience, the first you need to bring some festival or event that related to the spiritual, and you need to create. Okay, or maybe you have some meditation festival, yoga festival, or religion, something like that. Okay, so that we finished about the model, about the activities for the spiritual tourism. Okay. Do you have any question to ask? Are you sleepy? You want to get up and jump? Okay, I will continue with our Ayurvedic, and then we will discuss together that where we went yesterday. Okay, it will be this is some part of the well-being as well. I want you to understand. Have you, what you think about Ayurvedic? Yesterday was a very huge, very broad. They have so many sections that you should be learned, but it's good that we see that. And so, in part of the wellness, we also consider Ayurvedic is important, part of the yogic life. Okay, so may I please have the slide up for Ayurvedic? Thank you so much. Do you send the PowerPoint to friends? No? No? Okay, that's good. I will teach you. You will learn something about that. Can you find it? Actually, you are lucky. Ayurvedic, it actually is um, um, start in India, as I put it in here. Today, what I want to talk about Ayurvedic is I will talk apart from what not you learned yesterday, because you already learned yesterday. But I will talk about another part where Ayurvedic that involve with yogic life, not only yogic life, but usually yogi will follow that. The people who don't understand that, they won't understand about food and medicine, how it related. This is part of my interested area as well. Today, I will tell you. Maybe you can go to find out later. What is your elements body that you born with? Okay, so Ayurvedic actually, it's something like a medicine. Is much more than providing treatment. Ayurveda is one of the world's oldest medicine in the system, even older than in China, in India. It's happening in India. So a healthy outside, like yesterday, like the other day, I teach you about sound mind, sound body. Remember, a healthy outside start from the inside. It's the same thing. If you eat healthy food, if you have put something good in yourself, outside you will look better. So many people, when they see the people are involved with the healthy life, healthy eating, healthy activities, that will be so totally different from the person who are not, right? So this, I want to cover this. It was very important. So as you mentioned, that's right. You use herbal and herb local. That is exactly correct. I want to add it up here. What is Ayurvedic? The word Ayurveda is derived from Sanskrit.
It means science of life. Ayurveda, there is underlying belief that everything in life is connected. Like I said, yoga is connected with both spiritual and body, and our whole world is connected to space. I'm not sure you believe that. The space around here, they have energy. Yeah? The people believe that some energy in this world, whatever your wish, is my command. My command means space. So why? You ever heard that? Please don't speak negative. If you speak the universe, the energy doesn't know it doesn't know this negative or positive. If you speak bad, oh, today I have just a bad luck. Damn, maybe there's something bad it happened. If you said like that, universe, you said, your wish is my command. The bad thing can happen. Yeah, I'm not sure you believe that, but this is how it connected. So the energy in the around us, they don't know what you said is bad or good. But if you said good, the thing will rebound back. The thing will come back to you good. So why? I told my student many times, please don't speak negative, even a joke. Okay? Don't speak that. And then I don't like that. When the people start to speak negative, I said, please remain positive. Because this it like cursing. Because like whatever you wish, it's my command. So I always have positive. I'm not sure you believe that. When I stay in the city, I drive car, and then I always play universe, God, please give me the space to park. And I believe that. And you know what? I always get the space. That's true. You should try. When you have the car, okay? You drive around. And if you drive around, you say, oh, damn. Sorry, I not speak polite. Damn, I can't find bloody car park. Oh, they never find that. I never can find that. Look at that. I drive 10 times. You more you speak like that, you never get it. You never get it. You know that I have many times I have experience. When I know that we talk about connecting. When I drive a car, I said, God, I know you prepare for me already. I just said that I already got it before I left home. Because like for example, I will do a Christmas shopping. We're gonna go big deal in Australia, right? I'm gonna go to Christmas shopping. We're gonna go to some site. Be precise. I said, God, I know that you will already organize car park for me when I go there. When I reach to the shopping center, Chermside, you have to precise name. Please, as soon as I drive in, I will get the good car park. A million people drive around, and then when I drive in, I'm very confident. I said, "Don't worry, the car park is there." That's positive, yeah. That's positive. I said, "Oh, don't worry, the husband." Sometimes my husband help. We both together is stronger. And then sometimes it happened when I drive in. The car in front of us drive around, and then as soon as we drive in, that person pull out, and then I got it. Almost 99.99%, I would get the car park because I'm positive. And then when sometimes, that 1.1%, sometimes when I go there, oh, why we can get it? And then my husband said, didn't did you pray? Didn't you pray? How about you? You didn't do either. We keep blame each other. So yeah, very rare. I get that, but I always believe. I said I will get a car park. Even my PhD. If you see them, if you met them, you can talk to them. I come with Professor Ann. I never ever disappoint with the car park. And sometimes we get right in front of the place we go. We don't have to walk. Just right there, and then we can do something there, right? We walk about 3 steps. Good car park. The universe not only provide a car park for you, but get the good spot. Believe in positive, okay? Think positive. Say positive. Don't joke in negative. That is my method, and I never ever negative, okay? All right, I come back to Ayurvedic here. So they believe that is a connected. Ayurveda focuses on implementing lifestyle intervention and natural treatment, therapies, and remedy to provide a balance among your physical, mind, spirit, and
world around you, right? They're not only physical. So continue about that. Some ancient healing tradition, for example, traditional Chinese medicine, Ayurveda, suggests all individuals have the energy. Yeah, Dr. Lin said. Medicine called this energy system. Ayurveda called prana. Prana is mean breathing exercise. Yeah, you know that. Just like blood has to flow smoothly in the balance. Ayurveda suggests the energy system body also had to flow well and be in balance for us to be healthy. Balance is about achieve with the help of healthy diet. Yeah, if you maybe some of the food you eat maybe they're not suitable for your body, and so why yogi? They not only teach you asana, they not only teach you about breathing exercise meditation, they also that get you to help and check the diet. Some people, they said that eat this kind of thing is good. For example, you eat something good and you say, oh, you eat is good, so I eat the same, and then you get sick. Yeah, that is mean the diet for each person depend on the element of your body, and that the yogi said, no matter how good you are, no matter how disciplined yourself to heal yourself, if you do the wrong thing, it doesn't work, and that is very important. So the people can be have some impact differently depend on the body. And for example, you don't have balance about restful sleep, regular exercise, stress management. If needed, botanical exercise activities promote mindfulness. Other resources may offer additional support. Every individual is unique, you see, like I said. Define a person's specific constitution. According to Ayurveda, these prakriti determine your physical, psychological, behavioral, immunological trait, like a personal trait, like in the body. Different constitutions respond to different treatment. So what work for you might not work for some others. So Ayurvedic, I think very important. I think when you go home, you should be, study more about that. It will be good for you. How about the philosophy? According to Ayurvedic philosophy, each person constitute is made up three dosha: Vata, Pitta, and Kapha. You can think of dosha as energy type. Each of these dosha is believed to dictate your emotional strength, weakness, food your body need and want, exercise that might work for best for you, and more. So the practitioner seek to find to help you balance. When the dosha are out of balance, for example, if you said you are in vata, but your behavior, your eating may be not suitable for this energy type. Okay, so why Ayurvedic? Yesterday where we went, there will be the section that there will be expert and doctor in that section that can give you in advice about what is dosa you are, and then they will advise you. For me, maybe you cannot eat this kind of food. If you eat, maybe will affect your sleeping or something like that. This kind of thing that very important. Okay, let's see the three dosha. What does that mean? Three dosha of Ayurvedic: Vata. Have you ever heard about that word? No? That's good. That's good. I teach you something new. Vata. According to Vata philosophy, is control the flow of movement in your body and mind. Vata determines your flexibility, movement of your muscle and joint, your blood flow, and the way you breathe. If you are dominant in Vata, will be the person creative, flexible, and quick action. As you are a snappy, you also have the downside of worrying. What they mean is, if you are in the dosha, vata dosha, if you lack of something, not balance, you can be something, become a worry person. You worry for nothing sometimes. Sometimes you cannot stop that. That because of you don't balance in dosha. Yeah, and someone with the excessive vata, Ayurvedic practitioner may suggest
grounding techniques like sticking to a regular sleep each schedule, meditation, rest, relaxing. Walking meditation is also good. They can't sit still because what they said here, they are quick action, you see, because they are tired of them. So maybe they try to make the balance about that. Pitta, Pitta dosha. Pitta is loosely translated as fire. So think of this energy type as something that consumes other things. Pitta in Ayurvedic theory is responsible for controlling digestion, hormones, and metabolism. If you are dominant in Pitta, you tend to be dominant in leadership, competitive, strong views, confidence, and focused person. In Ayurveda, when your Pitta is off balance, what happens? Quick anger, yeah, excitement, make rash decision, or participate in self-destructive behavior. Pitta imbalance also presents itself in inflammation, rashes, skin condition, eczema, or acne. Acne, like pimple, digestive issue, irritable bowel syndrome, diarrhea, and more. How to balance that? Ayurvedic practitioner might suggest practice in cool, calming activity, like go to do some activity that make you calm. Meditation could be, or maybe you stay in the water if you are in a hot place. Eating cooler food, yeah. What is cooler food? Something in the fridge, maybe some fruit, vegetable. Mediterranean diet help, and yeah, I think some suggestion. Okay, kapha. Kapha dosha is the element that hold everything together from your cell to your muscles, bones, and ligaments. The densest of the three dosha, kapha, is also known endurance and lubrication. If you dominate, if your body dominate with kapha, you may be comfortable sticking to a routine, like you do something every single day, you not get bored. But for me, not. I am not definitely kapha. I cannot do the same thing for a relative long time. But some people work in the same job for 25 years, never change. I'm not sure you like it or not. One of my friends, I haven't met her when we graduated bachelor degree. After I came back from overseas and we found each other, and then I asked her before I left Thailand, she was working in the sport company. After come back 25 years, she's still there. Why? I've been anywhere. I've been to many countries. I've been to many experience, and that maybe she have this kind of the dosha. Yeah. Emotionally, you like to set expectation, hold to them. Kappa dominate individual are loyal. Oh, this type of person is loyal, nurturing, and dependent on others. You will be the follower, good follower. But when it's imbalanced, kappa can cause excessive fatigue, very exhausted, weight gain, getting gain more weight, swelling, in your activity, inability to letting go. They can hold everything, something in the past, make you sorry, make you feel bad. You still keep sticking in there. All right. This is the imbalance of kappa. Individual to stress to help. Individual are steer away from comfort food to lighter fare like fruit, vegetable in a small portion during the day. That they suggest. Increasing physical activity to get blood flow is also a good practice. Okay? Here, how do we know which one is your body element? Unfortunately, today I don't have that test, but I would recommend you can go to search in the internet or in the YouTube. There are some of the yogi. They talk about how you find your body element.
What they do, they will give you a test. Okay, they will give you question number one. They ask you that which one you prefer. If you pick, okay, they will have one, two, three for you a choice. If question one you pick number one, answer number one. Some people maybe pick answer number two. Someone might pick number three. In one question, you pick differently, and then we have the list of the question. They will have they already have some research to develop this question. Okay, so this questionnaire will tell you at the end which element you are. So for example, if they said if you feel tired, you will drink cold water, you will drink warm water, you will drink normal water. Some people will say, oh, I have to drink hot water. Some people say, I cannot drink, I have to drink cold water. And some people say, oh, I might drink normal water. And this kind of question will identify that your body element. Yeah. So I did try myself. I am, I am, I'm not sure I am number two or number one. Not sure. Yeah. But basically, I'm close to the water. I'm not sure I'm the fire or I'm the earth. I forgot. Yeah. So yeah, today I don't have time to find the test. Maybe we can find and you can do together. Yeah, we can do together. So body element, but this is what you born with. Okay, you already have this body element, so you don't know that. What good is that? If you know your body element, you are able to choose what kind of food that you should eat, and what type of exercise you should do, and what kind of what I said, some activities that you should participate. If you know that, and if you can avoid, and that it will bring your balance in your life. The same thing like the food, like the other day, like we went to yesterday, some kind of the herb and medicine, maybe it doesn't work for you if you have that body elements about that. Okay, is it interesting? Mm. Okay. Ayurvedic dosha balance routine. This is just some example that I found. So I think maybe it may be good to read. For example, Vata, the person who have air and earth element, wake up at the same time, warm food and liquid, sesame oil massage or massage, relaxing, bath, meditation. Pitta, wake up early, refresh the food and drink coconut oil massage. You see the oil is different. For Pitta is coconut, for the Vata is sesame oil. Cold shower, oh, you cannot do at Ladakh, it's too cold. And walk in nature. And Kapha, your element body is earth and water. Wake up at sunrise, light meal in the evening, I think sunflower, isn't it? Sunflower oil massage. You have to go to swim and exercise every day. Lucky you if you Vata and Pitta. They didn't tell you to go to exercise every day. If you don't like it. Yeah. All right. There are some attributes. Okay. You want to have a little break? Yeah. I think you maybe need it. Okay, 5 minutes. 5 minutes. Go for a walk and then we will finish this together. And after that, we will discuss and brainstorm. All right? I think almost 1 hour now we are back here. About the Vata dosha, the attribute of that, the attribute of Vata dosha are born from the two elements, air and earth. Okay? The air represents lightness, motion, and breath. Either elements express the space we have for expansion, subtleness, and imagination. I won't go through all the whole lot. We just get pick some. So you can have a check that the emotional, social, physical for this dosha is, for example, like social, full of energy, light of party. Oh, I know why. Some people like party. I don't like party at one moment, and
completely exhausted. I will finish soon. The next, maybe the one that is constantly. Physical tend to be more slim in nature. All right. So the pitta is associated with element of fire and water, characterized by quality of hot, sharp, light, oily, slightly mobile. These qualities manifest various aspects of the mind body. When pitta is in balance or imbalance, associated with sharp, intelligent. Social, balanced pitta individuals are intelligent, strong ability connected, ambitious, go-friendly disposition, and are often good speaker. Person who balance pitta usually has a medium build, strong metabolism. You see that when the people small or slim, remember some people are whatever they eat, they not get fat, and that because of the why some people eat a little bit, you fat already. Yeah. Okay. Last one, kappa. Violent kappa individuals are patient, stable, temper, and are generally tolerant, forgiving. Physically, balanced kappa dogs usually are sturdy, well-built body. Oh, built body with a tendency gain weight. Their skin is soft, smooth, slightly. Excessive kappa can manifest weight gain. I think maybe I'm here. I eat a little bit, I get big. Okay, I think talent, lifestyle, for example, lifestyle. Essential to adopt lifestyle. You are very good at dietary choice, engaging in regular physical activities, maintaining a warm and stimulating environment. Yeah? Okay. Go to find out. What is your dosha? You think kappa? You can read from your behavior, right? Oh, okay. All right. I may be finished for now, and I will hand over this to Dr. Raj. Thank you so much for your patience. Your turn. We will discuss that later, okay? Branding and symbol. Tomorrow we will have more time. Okay, so in this lecture we are going to talk about how to identify the constructs parameters. तो इसमें जो आपका टॉपिक है, मेन टॉपिक इसमें है, जैसे मान लो टूरिज्म एंड डेवलपमेंट, या टूरिज्म ब्रांडिंग, या स्पिरिचुअल टूरिज्म, कुछ कीवर्ड्स बन रहे हैं इसमें, ठीक है, या टूरिज्म डेस्टिनेशन, या वेलनेस टूरिज्म. नोट डाउन प्लीज. There are few key components, there are few key construct in your course topic, course name. For example, you can write it as the first one as a tourism research, right? First word tourism research, second is a tourism development, third is a tourism branding. Write it because we are going to discuss something. Tourism research is 1, tourism development is 2, tourism branding is 3, tourism branding is 3, tourism branding is 3, spiritual tourism is 4, wellness tourism is 5, tourism destination is a 6. Okay, these are few construct main things, like these are kind of concepts, these are kind of a concepts. Yesterday we had a very intense discussion on these tourism concepts, right? And yesterday we were talking about a tourist arrival. Tourist arrival is one concept. Tourist staying time, right? Tourist expenditure, carrying capacity, tourism development, destination performance. They were key concepts. Similarly, these are also key concepts. For example, when you are saying home or a house, right? There are few things which made that a house.
right? There can be minimum criteria also, there can be maximum criteria also, right? The basic components or the basic parameters of a house, in general it can be like one room, one kitchen, right? Nothing else. Or one family member, or one family, one couple is there. That is also house or home. There is another definition of house. For example, it is big big palace, big palace with big lawns, right? Security guards, right? Large number of servants, right? That is also one definition of a house, right? But basic criteria is something house, right? Similarly, these parameters of a construct's measurement will vary. ठीक है? अगर नहीं समझाया, नहीं समझाया ना? एक देखो, जब आप लद्दाख के घर की इमेजिनेशन करोगे और किसी एक यूएस के घर की इमेजिनेशन करोगे और एक किसी हिमाचल के घर की इमेजिनेशन करोगे या किसी और कंट्री या किसी और जगह के घर की इमेजिनेशन करोगे, तो दिस इमेजिनेशन, दिस विजुअलाइजेशन इज ऑलवेज डिफरेंट, बट क्रैक्स इज होम, ऑल आर होम, ठीक है? पर उनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि हर घर में कमरा तो होगा ही ना, बेड तो होगा ही सोने के लिए, है ना? लद्दाख में कमरे के अंदर बेड है सोने के लिए, तो इसका मतलब ये कि यूएस में बेड नहीं होगा। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स तो है ना, पर कुछ एड ऑन्स हो जाती है चीजें, ठीक है? तो एक रिसर्चर ने क्या किया, उसकी डेफिनेशंस में घर कैसा दिखता था, लद्दाख वाले घर की तरह, ठीक है? फिर एक रिसर्चर ने और काम किया, मैं भी घर के ऊपर रिसर्च करूंगा, तो उसकी इमेजिनेशन में कैसा घर दिखता था, यूएस वाला घर। कोई और रिसर्चर था, उसने घर को इमेजिन किया, रिसर्च किया, तो उसकी इमेजिनेशन में घर धर्मशाला वाला घर था या हिमाचल वाला घर था। किसी और रिसर्चर ने इमेजिन किया, उसने सारे घरों को इकट्ठा किया और नहीं बोला इस घर, ऐसा ऐसा घर नहीं होता, कोई स्पेनिश बंगलो है वो वैसा वैसा घर होता है। रिसर्च यही है, हर रिसर्चर ने अपने हिसाब से रिसर्च को बताया है, पर कोई भी रिसर्च जो है वो गलत नहीं है। घर तो घर है ना, बेसिक क्रक्स ऑफ द रिसर्च इज सेम, क्योंकि घर घर है। वैसे ही हम जब कंस्ट्रक्ट को मेजर करते हैं, किसी भी कंस्ट्रक्ट को, किसी भी कंस्ट्रक्ट को, तो घर जो है एक कंस्ट्रक्ट हो गया, घर जो है वो एक कंस्ट्रक्ट हो गया। तो घर को क्या क्या चीजें बनाएगी, कमरा, बेड, फैमिली, गार्डन। अब जरूरी थोड़ी ना कि सब घरों में गार्डन होगा ही होगा, ठीक है? तो यही है पैरामीटर्स, कि ये जो किसी कंस्ट्रक्ट के जो पैरामीटर्स हैं, किसी घर के पैरामीटर जो है वो क्या क्या हो सकते हैं। सब्जी बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं ना, सब्जी बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, बेसिक है ना? सब्जी, कटी हुई सब्जी, प्याज, नमक, जो भी है आपका, ठीक है? उसको पका के चूल्हा ये सब जो बना के आपकी सब्जी बन जाएगी, ठीक है? बेसिक सब्जी का वो है। पर कोई और सब्जी को कैसे बनाएगा, कोई बिना तेल के बना देगा, कोई ज्यादा पका देगा, ठीक है? किसी की सब्जी जो मिक्स वेज हो जाएगी, ठीक है? तो सब्जी के पैरामीटर्स ही है ना, ये सब्जी जो एक कंस्ट्रक्ट है उसके पैरामीटर्स है अलग अलग, कि ये चीजें जो वो होनी चाहिए तब सब्जी बनेगी, ठीक है? फिर अलग अलग रिसर्चर ने क्या किया, अलग अलग पैरामीटर्स दे दिए, पर सब पैरामीटर्स ठीक थे, उन्होंने जस्टिफाई किया वो, ठीक है? अब समझ रहे हो कंस्ट्रक्ट का बेसिक चीज, बेसिक मतलब। इसमें हमने लिखा सबसे पहले टूरिज्म डेवलपमेंट, टूरिज्म रिसर्च भी लिखा था। टूरिज्म डेवलपमेंट, टूरिज्म डेवलपमेंट जो है वो एक कंस्ट्रक्ट है, ठीक है? तो टूरिज्म डेवलपमेंट जो है, कौन कौन से चीजें जो है, कौन कौन सी चीजें मिलके जो है वो टूरिज्म डेवलपमेंट को की तरफ, टूरिज्म डेवलपमेंट को इंप्रूव करेंगी। कौन कौन सी चीजें जो है वो टूरिज्म डेवलपमेंट को बढ़ाएंगी, इंक्रीज करेंगी, क्या क्या हो सकती है? टूरिज्म डेवलपमेंट एक कंस्ट्रक्ट है, उसके लिए कौन कौन सी चीजें जो है वो उस चीज को बढ़ा सकती हैं, उसको इंपैक्ट कर सकती हैं, आइदर इनटू नेगेटिव वे, आइदर इनटू पॉजिटिव वे। क्या क्या हो सकता है वो?
आपने लद्दाख में टूरिज्म को डेवलप करना है, क्या क्या चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर, एक 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 बोलना सब। कम्युनिटी, कम्युनिटी, कम्युनिटी बनाना चाहिए। इसको चीज को समझाओ मुझे, मैं भी समझा रहा हूं ना नीचे तक जाके, अब मेरे को भी समझाओ। कम्युनिटी को क्या बनाना चाहिए? मतलब कम्युनिटी को सपोर्ट करना चाहिए, मतलब एटीट्यूड ऑफ द कम्युनिटी या अप्रोच ऑफ द कम्युनिटी या सपोर्ट ऑफ द कम्युनिटी या कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म। ठीक है, हम कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म रखेंगे। अगर कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म है तो दैट इज लीडिंग टुवर्ड द टूरिज्म डेवलपमेंट। एक ये हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म हो गया, और इको टूरिज्म। हम थोड़ा सा भटक रहे हैं चीजों से। कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म हमने इसलिए बोला क्योंकि हमने कम्युनिटी सपोर्ट बोलने की जगह कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म बोल दिया। हमने कम्युनिटी सपोर्ट, चलो कम्युनिटी सपोर्ट कर दिया, हमने टूरिज्म हटा दिया। अब बताओ कौन सी चीज जो है वो टूरिज्म डेवलपमेंट की तरफ जाएगी? बताओ कौन सा एक्शन जो है वो कम्युनिटी इसको टूरिज्म डेवलपमेंट को बढ़ाएगा? डेस्टिनेशन ना, ये अच्छा जवाब नहीं है। गुड ट्रांसपोर्टेशन, और वी विल मेक इट एज अ ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर रख दिया हमने। ठीक है जी। और अच्छा मास्टर, मार्केटिंग, मार्केटिंग उसको हम बोलेंगे मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज लीडिंग टुवर्ड द टूरिज्म डेवलपमेंट। ठीक है जी। और बताओ बताओ तो एक एक हो गया सबका, बताओ क्या? फैसिलिटीज, कौन सी फैसिलिटीज? अब तो आप रिसर्चर बन गए ना, 4 दिन से रिसर्च पढ़ रहे हैं। कौन सी फैसिलिटीज? पूरे में क्या क्या? और वो थोड़ी गूगल थोड़ी जो देखेंगे तो बता देगा। कौन कौन सी फैसिलिटीज? हाँ फैसिलिटी ठीक है, गुड वर्ड, बट कौन सी फैसिलिटीज? सिंपल हमने बोल दिया कि 5 एज की बात कर रहे हैं, 5 एज बेस्ड फैसिलिटीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। जोफल, जोफल आपका हेल्थ क्या? हेल्थ फैसिलिटीज, हेल्थ फैसिलिटीज, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। आप सिक्योरिटी, टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए सिक्योरिटी नेटवर्क, सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो हमारा एनहांस होना चाहिए। नेक्स्ट आप बताओ। इकोनॉमिक क्या? इकोनॉमिक बहुत बहुत जबरदस्त वर्ड है ये, इकोनॉमिक बहुत जबरदस्त है वर्ड, पर इसके साथ आगे क्या लगाते हैं वो मैटर करेगा। इकोनॉमिक क्या? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टूरिज्म डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कुछ मतलब वो नहीं आ रहा। इकोनॉमिक क्या? इकोनॉमिक एजुकेशन, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, थोड़ा सा और रिफाइन करो, बड़ा बहुत अच्छी लाइन बनेगी यहां पे। इकोनॉमिक ग्रोथ ना 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 ना, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं, इकोनॉमिक इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी कैसी है सरकार की, है ना? या ठीक है ना, सरकार की पॉलिसी, सिंपली बोलेंगे गवर्नमेंट पॉलिसी आ जाएंगे। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी प्रो टूरिज्म है, टूरिज्म डेवलपमेंट प्रमोशन की तरफ है, तो क्या होगा? टूरिज्म डेवलप होगा ना। नॉर्थ कोरिया ने क्या किया, कुछ टाइम के लिए इंटरनेशनल टूरिस्ट को अलाउ कर दिया, अब फिर से बंद कर दिया। उनकी पॉलिसी नहीं है प्रो टूरिज्म, कैसे चलेगा फिर? टूरिज्म इन लद्दाख इज सॉरी इन भूटान इज डेवलपिंग इन सस्टेनेबल वे बिकॉज दे हैव दैट पॉलिसी, और उस पॉलिसी का नाम क्या है? लो वॉल्यूम हाई प्राइस, लो वॉल्यूम हाई प्राइस। कि हमारे पास कम लोग आओ, जो हम यहाँ पे कल बात कर रहे थे ना, कि एक ऑपरेटर जो है वो दो लोगों को हैंडल करता है, 2 लाख टूर पैकेज देता है, और उस तरफ 20 टूर पैकेज सेल कर रहा है, 2 लाख देता है। तो जो दो टूर पैकेज 2 लाख के दे रहा है, दैट इज लो वॉल्यूम हाई प्राइस। ठीक है जी।
क्लियर? अब पॉइंट्स लिखो, कौन कौन से पॉइंट्स आए? टूरिज्म डेवलपमेंट लिखो, टूरिज्म डेवलपमेंट सेंटर में लिखना, सेंटर में, सॉरी सेंटर में लिखना टूरिज्म डेवलपमेंट, सेंटर में बोला मैंने टूरिज्म डेवलपमेंट लिखने के लिए। राउंड करो इसको, गोला लगाओ। सर मुझे बोर्ड यूज करना था प्लीज। ठीक है, बनाया। इसकी तरफ एरो लगाओ, और एरो टुवर्ड्स, हमने कल एरो पढ़ा था ना, एरो का इंपैक्ट क्या होता है? एरो टुवर्ड्स दिस, बाहर से अंदर की तरफ आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये लिखा हमने TOURISM, टूरिज्म डेवलपमेंट। टूरिज्म डेवलपमेंट क्या है? एक कंस्ट्रक्ट है। ठीक है, कौन से इनिशिएटिव्स जो है इसकी डेवलपमेंट की तरफ लीड करेंगे? तो कौन कौन से किए थे हमने इसमें? हमने किया था गवर्नमेंट पॉलिसी, ये आ गया, ये ऐसे बन गया गवर्नमेंट पॉलिसी। फिर था टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इधर आ गया। ठीक है, फिर था हमारा ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग, ये आ गया। प्रमोशन स्ट्रेटजी, प्रमोशन स्ट्रेटजी आ गया। और क्या बताया था? फैसिलिटीज था कुछ, 5 वेज फैसिलिटीज, ऐसे कर लेते हैं हम, 5 वेज फैसिलिटीज, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड 5 वे फैसिलिटीज, वी विल कीप इट एज it will be different. In tourism infrastructure, it can be roads, other infrastructure also, right? Superstructure also, airports also, right? Any others? Economic policy we added here as a government policy. Health infrastructure. Okay, let's add health. Safety and security, right? Safety and security. Done. So, अब ये चीजें कहां से आई हमारे पास? नहीं, ये जो इसको बोलते हैं हम LOCs, लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट। लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट वो कंस्ट्रक्ट जो मेन कंस्ट्रक्ट को बनाते हैं। ठीक है जी, या लेटेंट वेरिएबल्स भी बोलते हैं इसको, या लेटेंट वेरिएबल्स भी बोलते हैं हम इसको। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ ये याद रखो, ये पैरामीटर्स है। किसके पैरामीटर्स है? टूरिज्म डेवलपमेंट। क्लियर? हम बहुत इंटेलिजेंट हो गए आप लोग, है ना? ठीक है, ये आगे कुछ पॉइंट्स, तो ये पैरामीटर्स थे किसके? टूरिज्म डेवलपमेंट के। अब इसमें से कौन रखना है, कौन नहीं रखना है, वो काम है स्टैटिस्टिकल टेस्ट का। ठीक है जी, ये 4-5 कंस्ट्रक्ट आए, कैसे आए? हमने तो ऐसे ही लिख दिया ना, हमने तो ऐसे ही लिख दिया, हमने डिस्कस किया और हमने आपके बेसिस पे इसको लिख दिया। पर जब ये कंस्ट्रक्ट आते कहां से हैं? ये पैरामीटर्स कहां से आते हैं? कहां से आते हैं ये? कहां से आते हैं ये? हमारे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं? हमने सुबह ही डिस्कस किया, क्वेश्चन कैसे बनते हैं हमारे, कहां से आते हैं क्वेश्चंस? कहां से? ऑब्जर्व करके। किसको ऑब्जर्व करके? जब हम किसी को, वो ऑब्जर्व जो बता रहे हैं वो है डाटा कलेक्शन टूल, वो हमारे जो क्वेश्चन है उसके आंसर देता है वो टूल। पर क्वेश्चंस कहां से आते हैं? हमने डिस्कस किया था, कहां से आते हैं क्वेश्चंस? कहां से आते हैं? रिसर्च तो है, पर रिसर्च में भी कहां से?
रिसर्च का पार्ट है वो। लिटरेचर रिव्यू, लिटरेचर रिव्यू क्या है, जो किताबें लिखी हुई हैं, बोली हुई हैं, किसी ने ऑलरेडी वर्क किया हुआ है, वहां से जो है वो हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो वैसे ही ये कंस्ट्रक्ट जो है, ठीक है, ये कंस्ट्रक्ट जो है ये भी हमारे लिटरेचर रिव्यू से आते हैं। किसी ने बोला होगा, क्या बोला होगा, अभी गूगल कर लो वैसे, गवर्नमेंट पॉलिसीज हैज a significant role in the tourism development of a destination, बोला होगा किसी ने, तो वहां से आ गया आपके पास ये गवर्नमेंट पॉलिसी। या किसी ने लिखा होगा इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, किसी ने बोला होगा इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट आर हैव क्रूशियल रोल इन द टूरिज्म डेवलपमेंट ऑफ अ डेस्टिनेशन। या किसी ने बोला होगा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसीज, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसीज हैज अ की रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म। तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी आ गया, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी आ गया, ये सब पॉलिसी 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 बोल रहे हैं ना, तो हमने पॉलिसी को कहां पे क्लब कर दिया, गवर्नमेंट पॉलिसीज के ऊपर। तो क्वेश्चन क्या बनेंगे उसमें, क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा कि हाउ डू यू रेट द रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, हाउ डू यू, नहीं समझ रहे ना आप लोग, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, इसको और तोड़ के लिखते हैं हम, इसको और तोड़ के लिखते हैं। कम करो और उधर से ड्रैग कर अच्छा इरेजर जो होगा, इरेजर होगा ना इसमें, बस ये ऐसे हो जाएगा, रुको हो गया, ठीक है, डन 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 डन, ओके। तो इस तक कैसे पहुंचूंगा अब मैं, ओके ओके माउस है, सॉरी third, I belong to some bit older age, na, that's why I'm not familiar, I'm not tech savvy. Okay, let's come back. We were talking about government policy. Okay, government policy, government policy leads towards tourism development, tourism development, right? Clear? So this is one parameter to measure government policy. Now we are saying there are, okay, now come to this point, there is author A or researcher A, right? Researcher A, he did some research and he said good road safety policy leads towards good tourism development. क्या बोला उसने, or considered as a good okay, good road safety policy, right? Road safety policy leads towards a good tourism development, right? There was author B, he did some other research and he said economic policy leads towards a strong economic growth of tourism, right? That is also talking about tourism growth, tourism development, right? There was author C, he said good tourism policies are the key for the development of a tourism, right? So he is talking about a tourism policy. Maybe there is some other researcher who searched like a ease of doing business policies at a destination, at a region in a state has a strong role in the development of tourism, right? तो इसमें क्या आ गया था, लास्ट वन क्या था, which one we talked about, government policy, tourism policy, tourism policy, it was tourism policy here, or we were okay. So these are road safety policy,
this is a economic policy, this is a tourism policy, and some other policy, it may be ease of business. We were talking about a ease of a business policy leads towards a tourism development. Now what is common in all these? Policy and policy by गवर्नमेंट. समझ रहे आप? तो हमने इसको नाम दे दिया गवर्नमेंट पॉलिसी. समझ रहे हैं आप लोग? इसी का ही हम क्वेश्चन बनाएंगे आगे. हाउ डू यू रेट द गवर्नमेंट रोड सेफ्टी पॉलिसी? हाउ डू यू रेट द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड द टूरिज्म डेवलपमेंट? हाउ डू इधर इधर उधर देख, नहीं लग रहा? पता लग रहा है या नहीं लग रहा? नहीं है समझ? समझाऊंगा तभी जाऊंगा. देखो, हैप्पीनेस, ठीक है, हैप्पीनेस सबके लिए इंपॉर्टेंट है. पर हैप्पीनेस को मेजर कैसे करेंगे हम? बताओ, आप ही बताओ जिसको पता नहीं लग रहा. कैसे मेजर करेंगे? आपकी हैप्पीनेस किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है? बताओ, आपका हैप्पीनेस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? नहीं, कुछ तो होगा ना, कुछ तो होगा. स्लीपिंग गिव्स यू हैप्पीनेस. टू बी विद फैमिली गिव्स यू हैप्पीनेस. टू बी विद फ्रेंड्स गिव्स यू हैप्पीनेस. क्या क्या बोले? हाँ, नहीं ये छोड़ दे, गवर्नमेंट पॉलिसी. इसको हैप्पीनेस के ऊपर बताओ. खुशी क्या है? खुशी आपके लिए? हाँ, गेम से खुशी, गेम खेल के खुशी आती है? आती नहीं आती? यस नो? बोल रही खत्म करो भैया. ऐसा है. दिस इज व्हाट. इतना हैवी है क्या? ठीक है. इस चीज को क्या बोलते हैं? किसी को हेल्प करना विदाउट एनी इंटरेस्ट. फिलैंथ्रोपी बोलते हैं. फिलैंथ्रोपी इसके लिए वर्ड है. आप दान दक्षिणा देते हैं लोगों को, जब अच्छा करते हैं, है ना, सोसाइटी के लिए डोनेट कर रहे हैं. फिलैंथ्रोपी. ठीक है. अब इसी पे आप ध्यान देना, ठीक है? अब मत बोलना दोबारा मेरे को. हैप्पीनेस ये है ना, हैप्पीनेस. आपको हैप्पीनेस मिलती है किससे? आपको हैप्पीनेस मिलती है आप जब डोनेट करते हैं, किसी को दान दक्षिणा हेल्प करते हैं. उसके लिए हमने एक बड़ा, तो क्योंकि जब आप एकेडमिक्स में तो थोड़ा वर्ड भी, तो हम दान दक्षिणा नहीं लिखेंगे ना यहाँ पे, डोनेशन नहीं लिखेंगे. इट इज नॉट दैट मच कैची वर्ड. यू आर सपोज टू यूज सम कैची वर्ड ऑल्सो. कैची मतलब अच्छे जो लगे. हाँ, कोई पढ़े अच्छा फिलैंथ्रोपी, पहले उसको डिक्शनरी में जाएगी फिलैंथ्रोपी होता क्या. फिलैंथ्रोपी. ठीक है. आपको खुशी मिलती है फिलैंथ्रोपी करके. THROPHY कुछ भी जो है. ठीक है. फिलैंथ्रोपी लीड्स टुवर्ड्स हैप्पीनेस. अभी आप गूगल करोगे तो यू विल फाइंड दिस कनेक्शन. किसी ने इसके ऊपर रिसर्च किया होगा. फिलैंथ्रोपी इज अ की रीजन फॉर द हैप्पीनेस ऑफ अ पर्सन, और फिलैंथ्रोपी अफेक्ट द हैप्पीनेस. समझ रहे हैं आप लोग? आप समझ आया थोड़ा सा कि मुझे दान दक्षिणा देके जो है वो खुशी मिलती है. पर हमने ये उसकी फिलैंथ्रोपी एटीट्यूड मेजर कैसे करना है? कैसे मेजर करेंगे हम? उसके लिए क्वेश्चनर बनाना पड़ेगा हमें. उस क्वेश्चनर में हम कैसे क्वेश्चन रखेंगे देखना. I do donation activities in my community only. आगे वो होगा क्वेश्चन, वो आपको रेटिंग दिया होगा. कैसे रेटिंग दिया होगा? एक तो ऊपरी बहुत अच्छा, ये जो है क्या हुआ?
ठीक है, तो ये थी आपकी खुशी यहां पे, ये हैप्पीनेस, हैप्पीनेस वन ऑफ द पैरामीटर्स, वन ऑफ द पैरामीटर क्या है, वन ऑफ द पैरामीटर टू मेजर योर हैप्पीनेस इज फिलैंथ्रोपी, THILANTHROPHY, राइट, ये आ गया, स्लो है ये बहुत, ये आ गया, ठीक है। अब हमने इसको मेजर करना है क्वेश्चन पेपर में, क्वेश्चनियर में, ठीक है। तो यहां पे हम 4-5 बना देते हैं। तो इसमें आता है जैसे मान लो स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, एग्री, स्ट्रांगली एग्री, ठीक है। ये स्केल है मेजर करने का, लिकट स्केल बोलते हैं इसको, ठीक है जी। वो सेटिस्फेक्शन को मेजर करता है, आपके एग्रीमेंट को मेजर करता है। जैसे यहां पे डिसएग्री किया तो ये आपकी रेट, आपकी स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीमेंट को मेजर करेगा कि आप किसी चीज से कितना एग्री कर रहे हैं, ठीक है। सेटिस्फेक्शन ऐसे जैसे यहां होता है स्ट्रांगली, स्ट्रांगली सेटिस्फाइड, है ना, तो आपकी सेटिस्फेक्शन को मेजर करता है, ठीक है, ये है। तो हमने फिलैंथ्रोपी के रिगार्डिंग क्या क्वेश्चन होंगे फिर, यही होंगे ना कि मैं ये कपड़ा दान करता हूं, मैं वॉलंटरीली काम करता हूं कहीं, या मैं फंड जो है फाइनेंशियल सपोर्ट करता हूं, यही है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे कुछ, वही आपके डोनेशन की तरफ आ जाएंगे ना फिलैंथ्रोपी की एक्टिविटी के। तो आई रेगुलरली कंट्रीब्यूट टू द कम्युनिटी और सोसाइटी इन फाइनेंशियल वे, इन फाइनेंशियल वे, ठीक है। या एक और क्वेश्चन आ जाएगा, एक और क्वेश्चन आ जाएगा, आप ये आ गया, एवरी मंथ आई डोनेट 100 रुपीज फ्रॉम माई पॉकेट, फ्रॉम माई पॉकेट मनी, है ना, हाँ पॉकेट मनी ठीक बोला आपने, पॉकेट मनी ही होगा, ठीक है, पॉकेट मनी होगा, ठीक है, ये आ गया। तो अब देखो आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगा तो आप कहीं और फॉल करेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कहीं और, अलग अलग एग्रीमेंट आएगा सबका, ठीक है। वैसे ही अब ये जो चीजें हैं ना, ये जो क्वेश्चन आए हैं हमारे यहाँ पे, ये लिटरेचर से आएंगे, किसी ने रिसर्च की होगी। लिटरेचर कहाँ है, जो आपने हाथ में पकड़ा, ये जो हाथ में पकड़ा है ना, ये है लिटरेचर, ये है लिटरेचर, दीज आर द रिसर्च पेपर्स। इसको आप पढ़ेंगे, वहां से आपको कंसेप्ट निकलेंगे, वहां से आपके क्वेश्चन, ये है लिटरेचर, कोई और चीज नहीं है। ये जो आपकी किताब है, जो पब्लिश्ड मटेरियल है आपका, जो पब्लिश्ड मटेरियल है वो लिटरेचर है, डॉक्यूमेंट्रीज है वो लिटरेचर है, फिल्म है वो लिटरेचर है, स्टोरी बुक्स है वो लिटरेचर है, वर्कशॉप हो रही है इसकी कहीं रिपोर्ट पब्लिश हुई है वो लिटरेचर है, ठीक है। तो इसमें जो है, इसमें आपको मिलेगा स्पिरिचुअल टूरिज्म के ऊपर, रिसर्च पेपर जो है ये स्पिरिचुअल टूरिज्म के ऊपर है। आपको यहां पे हैप्पीनेस पढ़नी पड़ेगी। अकाउंटेंसी के बारे में पढ़ने के लिए आपको टूरिज्म डेवलपमेंट की किताब डाउनलोड करेंगे आप, किसने बोला नहीं, क्यों, गुड। अकाउंटेंसी पढ़ने के लिए आपको अकाउंटेंसी की किताब चाहिए ना, टूरिज्म डेवलपमेंट पढ़ने के लिए टूरिज्म डेवलपमेंट की किताब चाहिए। वैसे ही आपको जब स्पिरिचुअल टूरिज्म के ऊपर पढ़ना है तो यू आर सपोज टू रीड दैट लिटरेचर। और लिटरेचर क्या है, ये है लिटरेचर, ये है किताबें। इट कैन बी योर रिसर्च पेपर्स, इट कैन बी योर बुक्स, इट कैन बी योर स्टोरीज, न्यूज आर्टिकल्स, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, योर डॉक्यूमेंट्रीज, फिल्म्स, एवरीथिंग। समझ आए आप, ये क्वेश्चन कहां से आया। आप अगर हम वो लिटरेचर पढ़ेंगे तो वहां पे ये होंगी चीजें, ये मेंशन होंगी। पॉकेट मनी से आप डोनेट कर रहे हैं या आप वॉलंटरली काम कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल आपने दोनों में ये दिया कि आई रेगुलरली कंट्रीब्यूट टू दी सोसाइटी इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंस, आप लिख देंगे न्यूट्रल। मेरा कोई जवाब नहीं इस पे, मेरे पास है ही नहीं फाइनेंस, मैं कहां से दूंगा, मेरे पास पैसे होते नहीं इतने। या हो सकता है आप अपने पॉकेट मनी को फाइनेंस कंसीडर करो और आप यहां बोलोगे एग्री, हाँ स्ट्रांगली एग्री, रेगुलरली करता हूं जी मैं, ठीक है। फिर आपको ये क्वेश्चन है कि क्या था ये, आई कंट्रीब्यूट एवरी मंथ, आई डोनेट एवरी मंथ फ्रॉम माई पॉकेट मनी, तो आप यहां बोलेंगे स्ट्रांगली एग्री,
ठीक है जी, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं। फिर ये हो गया एक एस्पेक्ट, एक पैरामीटर को मेजर किया अभी आपने, बहुत सारे पैरामीटर्स होंगे हैप्पीनेस को लीड करते होंगे। जैसे इसने बोला स्पोर्ट्स, गेम खेलता है ना, तो गेम अपॉर्चुनिटी या हम बोलेंगे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, फिर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के क्वेश्चन बनेंगे। समझ आ रहा है आपको? शॉपिंग, वैसे ही शॉपिंग हो सकती है, शॉपिंग इज लीडिंग टुवर्ड्स हैप्पीनेस। समझ आ रहा है? लगा पता? अब बताओ, अब गया दिमाग के ऊपर से? थोड़ा पता लगा? नहीं, फोर्सफुली नहीं बोलना पता लगा, पता लगा तब पता लगा। जो फिर आर यू गेटिंग? इधर क्या? यस सर। ठीक है, लिटरेचर क्या है जो हमने हाथ में पकड़ा है, ये है लिटरेचर, ये रिसर्च पेपर्स है, इसको पढ़ते हैं हम, तब हम इन चीजों को फाइंड आउट करते हैं। अब आप देखेंगे कि अब लाइफ को आप अलग तरीके से देखेंगे कि कितनी और सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, फिर उन चीजों को किसी और चीज से मेजर कर रहे हैं। अब समझे घर का कंसेप्ट? ठीक है, तो ये चीजें हैं। किसी ने हैप्पीनेस के ऊपर और बोला होगा, किसी ने बोला होगा हैप्पीनेस शॉपिंग के ऊपर डिपेंड करती है, किसी ने बोला होगा कि हैप्पीनेस जो फैमिली के ऊपर डिपेंड करती है। ऐसे ऐसे अलग अलग पैरामीटर, तो ये सब क्या है? पैरामीटर्स हैं आपके, पैरामीटर्स हैं टू मेजर अ कंस्ट्रक्ट। अब एक मॉडल में सिर्फ एक ही कंस्ट्रक्ट नहीं होता, ठीक है, एक मॉडल में एक ही कंसेप्ट नहीं होता। अब ऐसे मान लो कि हैप्पीनेस लीड्स टुवर्ड्स हैप्पीनेस ऑफ द सोसाइटीज, मान लो हैप्पीनेस ऑफ द सोसाइटी लीड्स टुवर्ड द सस्टेनेबल डेवलप्ड सोसाइटीज। ठीक है, ये कंस्ट्रक्ट हो गया आपका, ये कंस्ट्रक्ट हो गया आपका, दो कंस्ट्रक्ट का रिलेशन हो। अगर आप लिटरेचर पढ़ोगे तो ये चीज आपको जरूर मिलेगी वहां पे। अभी हम थोड़ा वो रिसर्च में आ गए तो हमें पता है किस चीज के ऊपर काम हुआ होगा, किस चीज के ऊपर काम नहीं हुआ। जब आप भी पढ़ेंगे और पढ़ेंगे और पढ़ेंगे, आपको पता लग जाएगा कौन सी चीजें जो वो कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये जो है हैप्पी सोसाइटीज लीड्स टुवर्ड सस्टेनेबल सोसाइटीज और रेजिलिएंट सोसाइटीज। अब ये जो है ये न्यूमरस हो सकते हैं जो हैप्पीनेस को बना रहे हैं, ठीक है, और जो इसके रिजल्ट्स आएंगे, सस्टेनेबल सोसाइटीज कैसी होंगी? जो सेल्फ सस्टेन कर सकती है सोसाइटी, वो कैसी होंगी? जैसे हमारा जैसे पहले जो लद्दाख था आउटर वर्ल्ड से बहुत लेस कनेक्ट था, सेल्फ सस्टेन सोसाइटी थी, खुद ही उतना अनाज प्रोड्यूस करेंगे, खुद ही क्या था लोगों में, they didn't have greed about things, सोसाइटी बहुत कोहेसिव थी, मिलजुल के रहते थे। तो वो क्या आउटपुट्स हैं उस चीजों की। क्लियर? ये सारी चीजें जो है वो लिटरेचर में मेंशन होती हैं, कुछ नहीं होती हैं, वो उसके अलग तरीके हैं मेजर करने के। ठीक है जी, पर कंफ्यूज नहीं, ये है पैरामीटर। सर वापस ओके, परफेक्ट, थैंक यू। समझ आया? कोई समझाओ मुझे समझाओ, कोई कितना समझे आप? समझाओ, बताओ, आप बताओ क्या समझ आया। अगर मैं इसी के चीज के रिगार्डिंग एक और चीज पूछूं आपसे, स्टूडेंट्स आउटपुट, स्टूडेंट्स एग्जाम आउटपुट, वो एक कंस्ट्रक्ट है, वो एक कंस्ट्रक्ट है, पर एग्जाम में आउटपुट किस चीज के ऊपर डिपेंड करती होगी? अब ये यूजी वाले बोलेंगे, बताओ किस चीज के ऊपर एग्जाम में आउटपुट किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है? बताओ। रिजल्ट, रिजल्ट ना, मेहनत, हार्ड वर्क, और पेपर के ऊपर, पेपर कैसा बनाया है, चलो ठीक है उसको कंसीडर कर लिया, अच्छे से लिखना, और टीचर्स, क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट बोर्ड्स हैं कि नहीं है, इफेक्ट पड़ता है ना लर्निंग्स के ऊपर, इंटरनेट कनेक्शन, एक्सेसिबिलिटी टू डिजिटल एक्सेस कितना है, लाइब्रेरी है कि नहीं है, वो आपका एग्जाम। अच्छा, टीचर कैसा है ना? अगर मैथ वाला टीचर और हिंदी वाला टीचर मैथ पढ़ा रहा है, जहां जैसे
देयर इज अ स्कैर्सिटी ऑफ टीचर्स, तो जो चलो हिंदी का टीचर वही मैथ पढ़ा रहा है, क्या पढ़ेगा फिर? आउटपुट के इफेक्ट करेंगे ना, वैसे ही है। तो वो आपके कॉन्टेक्स्ट में है, तो अब आपको कैसे पता चल गया ये चीजें इफेक्ट कर सकती हैं? क्योंकि आपको यू हैव अ फेमिलराइजेशन विद दैट एनवायरनमेंट। ठीक है, वैसे ही हम टूरिज्म के बारे में बात कर रहे थे। अब आते हैं हम, सो हाउ टू आइडेंटिफाई द कंस्ट्रक्ट पैरामीटर। आप बताओ, इसका आंसर दो इस चीज का। कंस्ट्रक्ट के पैरामीटर कैसे डिसाइड करते हैं हम? बताओ कैसे करते हैं कंस्ट्रक्ट के पैरामीटर डिसाइड? इंडिविजुअल एक्सपर्टीज, इंडिविजुअल एक्सपर्टीज। मान लो आप आइंस्टीन हैं, तो आइंस्टीन को तो पता होगा ना कि फिजिक्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट। जैसे अभी एग्जाम की बात की तो आपने आंसर किया उसका, किया कि नहीं किया? इंडिविजुअल एक्सपर्टीज। बाकी कैसे आते हैं? लिटरेचर पढ़ के। ठीक है, एक्सपर्ट्स मीटिंग, बुक्स पढ़ेंगे आप, बुक से पता चलेगा। पर मान लो आपको स्पिरिचुअल टूरिज्म के कंस्ट्रक्ट पैरामीटर्स फाइंड आउट करने हैं, तो आप क्या पढ़ेंगे? हिस्ट्री की किताब पढ़ेंगे, हिस्ट्री की किताब पढ़ेंगे, अकाउंटेंसी पढ़ेंगे, मैथ। अगर आपको स्पिरिचुअल टूरिज्म के पैरामीटर्स फाइंड आउट करने हैं तो आप क्या पढ़ेंगे? स्पिरिचुअल टूरिज्म के ऊपर ही पढ़ेंगे ना, आप मैथ नहीं पढ़ेंगे या आप इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ेंगे। ऐसा ही है ना? ठीक है, सो ये है। तो कंस्ट्रक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं हम? लिटरेचर से या एक्सपर्टीज से। लिटरेचर क्या है? इट कैन बी रिसर्च पेपर, न्यूज पेपर्स, योर बुक्स, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, सम कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट्स, मैगजीन्स। ठीक है, गुड, इंटेलिजेंट हो गए आप सारे। सो इट वॉज काइंड ऑफ अ टॉपिक टू बी कवर्ड। ठीक है, इसको आते हैं आगे। फनल टेक्निक टू आइडेंटिफाई द की डायमेंशंस ऑफ कंस्ट्रक्ट। फनल टेक्निक क्या है? फनल का जो माउथ होता है वो थोड़ा वाइडर होता है, जो पावर डाउन जहां से होता है वो स्मॉल होता है। ठीक है, तो आपने बड़ा ज्यादा ज्यादा पढ़ के कम पे आना है। स्पिरिचुअल टूरिज्म के ऊपर पढ़ना शुरू किया है, फिर इंडिविजुअल कंस्ट्रक्ट पे आना है, इंडिविजुअल जो उसका पैरामीटर है उस पे आना है। क्लियर? बड़े से छोटे की तरफ, छोटे से बड़े की तरफ नहीं, बड़े से छोटे की तरफ। स्पिरिचुअल टूरिज्म के ऊपर पढ़ेंगे, फिर इंडिविजुअल साइड पे। स्पिरिचुअल टूरिज्म में आपने मान लो आपको मिल गया पर्पस ऑफ लाइफ। ठीक है, पर्पस ऑफ लाइफ, फिर पर्पस ऑफ लाइफ के ऊपर पढ़ेंगे आप, इंडिविजुअल करेंगे, फिर क्वेश्चंस बनेंगे। नींद अच्छी आ रही होगी आजकल आप लोगों को ना? ठीक है, स्टेप्स टू नैरो डाउन द रीडिंग मटेरियल कैसे पढ़ेंगे? हमने स्पिरिचुअल टूरिज्म के ऊपर काम किया, तो स्पिरिचुअल टूरिज्म का ही हमने गूगल करना है उसको। ठीक है, हमें स्पेसिफिक होना है उस चीज के लिए। लाइब्रेरी जाओगे तो लाइब्रेरी जाके आपने स्पोर्ट्स वाले सेक्शन में नहीं घुस जाना है, या फिजिक्स वाले सेक्शन में नहीं घुस जाना। आपने उसी सेक्शन में घुसना है जहां पे स्पिरिचुअलिटी की किताबें रखी, जहां पे योगा स्पिरिचुअलिटी कुछ रखा होगा, उसी तरफ जाना है। ठीक है, या किताब जो है आपने ये नहीं पढ़ना है कि गांधीयन टीचिंग जाके। ठीक है, इवन द गांधीयन हैज फिलोसफी फॉर स्पिरिचुअलिटी, वो है, उसको पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, या आप वहां पे जाके बिजनेस की किताबें पढ़ने में मतलब जाओ। यू आर सपोज टू फोकस ऑन दोस टाइटल, दोस बुक्स व्हिच कंटेन्स दैट वर्ड स्पिरिचुअल टूरिज्म। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू नैरो डाउन योर थिंग्स। फिर बोलता है गूगल द कीवर्ड स्पिरिचुअल टूरिज्म, आपको आ जाएगा वहां पे। वहां पे आ गया रीड द गूगल सर्च मटेरियल, रिसर्च पेपर्स और आर्टिकल्स। ठीक है, ये रिसर्च पेपर आ गया आपका, किसी ने आर्टिकल लिखा होगा, वहां से आपको की पॉइंट्स मिलेंगे। वो फिलैंथ्रोपी मिलेगा आपको, वो स्पोर्ट्स मिलेगा आपको जब आप हैप्पीनेस की बात करेंगे। ठीक है, ये चीजें हैं। या जैसे हमने वो टूरिज्म डेवलपमेंट वाला बात किया, तो टूरिज्म डेवलपमेंट हम उसमें डालेंगे तो टूरिज्म डेवलपमेंट के ऊपर बातें हुई होंगी, गवर्नमेंट पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, सस्टेनेबल टूरिज्म पॉलिसी। ठीक है, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर, वो कीवर्ड आपने सॉर्ट करने और नोट डाउन करने हैं। क्लियर? रीड आर्टिकल फ्रॉम द स्कूपस एंड वेब ऑफ साइंस डेटाबेस। ये डेटाबेस है, इसको कंप्यूटर इससे कनेक्ट नहीं हो रहा, नहीं तो मैं दिखा दूंगा, कल दिखा दूंगा, कल से सर से स्पेशल रिक्वेस्ट करके आपको दिखा दूंगा। स्कोपस डेटाबेस कुछ नहीं है, जैसे ये क्वालिटी पेपर्स हैं, आपको जर्नल सर्च में नहीं मिलेंगे। ये जो पेपर मैंने डाउनलोड करके आपके पास दिए हैं, ये आपको गूगल जब सर्च करेंगे ना आप, उसमें आ जाएंगे। आप इसका सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट तक पढ़ सकते हैं। ठीक है, फुल पेपर नहीं आता उसमें। ठीक है, पूरा पेपर नहीं आएगा इसका।
पर ये जो स्कोपस एक्सेस है आपके पास यूनिवर्सिटीज के पास रहता है या वेब ऑफ साइंस एक्सेस है, तो ये क्वालिटी पेपर जो है वो आपको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, ये भी बड़ा एक वो है, पर गवर्नमेंट अच्छा कर रही है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन जैसी पॉलिसीज आ रही है जिससे रिसर्च प्रमोट हो रही है। ठीक है, नैरो डाउन द आर्टिकल ऑन द बेसिस ऑफ एयर डिसिप्लिन एंड जर्नल साइटेशन। अगर आपको मान लो ये जो पेपर है ये है मेरे ख्याल से 2024 का, 2024 का सबसे ऊपर लिखा हुआ देखो, जर्नल का नाम लिखा है जर्नल ऑफ डेस्टिनेशन मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट। ठीक है, 34th वॉल्यूम एंड 2024 मतलब पिछले साल का ही पब्लिश है, तो पिछले साल ही जो पब्लिश हुई चीज वो अच्छी होगी ना, नया है, अच्छा जर्नल है, तो हमने क्या करना है, पढ़ना है। आप ऐसे नहीं कि 1947 में जो पब्लिश हुआ था स्पिरिचुअल टूरिज्म के ऊपर उसको ले लो, फॉर द डेफिनेशन पर्पस दैट कैन बी अ गुड पेपर, बट करंट सिनेरियो में क्या चला है आपको ये करंट पेपर जो है उसके लिए देखने पड़ेंगे। ऐसे जो है आप अपने पैरामीटर्स को नैरो डाउन कर सकते हैं। ठीक है जी, मेक द लिस्ट ऑफ एसेंशियल पैरामीटर्स अलोंग विद द रिसर्च क्वेश्चंस। ठीक है, रिसर्च क्वेश्चन जो है आपने शॉर्ट करने हैं, आपने रिसर्च क्वेश्चन सिंपली प्रॉब्लम्स, आपने क्या आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं उसको भी लिस्ट करो और पैरामीटर्स को भी लिस्ट करो। ठीक है, steps to be conducted to identify the key dimensions of a construct। theoretical way क्या है, theoretical way क्या है, have patience, सबसे पहली बात ये है। तब आप, नहीं तो अगर पेशेंस नहीं होगा तो आप क्या बोलेंगे, सर के ऊपर से जा रहा है। हैव पेशेंस, एक शुरू में जब पेपर पढ़ने शुरू करते हैं तो इट में टेक टाइम, हमें भी पेपर समझ नहीं आते थे पहले क्या लिखा हुआ, अभी भी कुछ पेपर्स हैं ऑथर्स ने लिखे होते हैं जो समझ नहीं आते, तो क्या है रिपीटेडली पढ़ने पड़ते हैं, रिपीटेडली पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, तो हैव पेशेंस सबसे इंपॉर्टेंट है, रिसर्च में सबसे इंपॉर्टेंट ही चीज ये है, पेशेंस। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट इन डेप्थ। स्पिरिचुअल टूरिज्म हमने गूगल किया तो 4 5 6 डेफिनेशन जो है वो स्पिरिचुअल टूरिज्म की पढ़ो, पहले है क्या चीज, अलग अलग लोगों ने अलग अलग डिस्क्राइब किया होगा। जैसे हमने पॉलिसीज की बात की, जैसे हमने घर की डेफिनेशन की बात की ना, तो एक ऑथर ने घर को अलग बोला होगा, दूसरे ऑथर ने घर को अलग बोला होगा, तीसरे ने अलग से डिफाइन किया होगा। आपने देखा होगा कई बार हैप्पीनेस की डेफिनेशन भी अलग होगी। जैसे आपको मैं बोलूंगा हैप्पीनेस क्या, तो आप बोल रहे हैं डोनेशन मेरे लिए हैप्पीनेस है, आपको पूछूंगा आप बोलेंगे स्पोर्ट्स है, इधर है ये बोलेंगे कि मुझे जस्ट टू बी एट होम इज गुड फॉर मी, इट गिव्स मी हैप्पीनेस। तो एक तरह से अलग परसेप्शन है ना, वैसे ही रिसर्चर क्या करते हैं, हर चीज को उन्होंने अपने हिसाब से जो है, जो उनकी इंटेलेक्ट बोलती है, जो उनके रिसर्च मेथड्स बोलते हैं, उसके हिसाब से चीजों को डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, तो 4 5 6 लोगों की चीजें पढ़ो ताकि आपको एक चीजें पता चले। लद्दाख के बारे में जानना है तो सिर्फ हिमाचल वाले से पूछोगे तो एक ही पर्सपेक्टिव देख पाओगे, पर 10 लोगों से पूछोगे तो 10 पर्सपेक्टिव आएंगे। वैसे ही टूरिज्म को 10 लोगों की नजरों से पढ़ना है, टूरिज्म स्पिरिचुअल टूरिज्म को 10 लोगों की नजर से पढ़ना है। ठीक है, सर्च फॉर क्वालिटी रीडिंग मटेरियल, हमने बोला लाइब्रेरी जाना है तो क्वालिटी रीडिंग कैसे पता चलती, क्वालिटी मटेरियल कैसे पता चलता है, टू बी ऑनेस्ट ये तो या तो आपको आपका सुपरवाइजर बताएगा या तो आप टाइम के साथ जानेंगे कि क्वालिटी रीडिंग मटेरियल क्या होता है। ठीक है, रीड द रिसर्च पेपर रिटन बाय गुड रिसर्चर। ठीक है, गुड, अब जैसे आपको पता है टूरिज्म में किसी एक उसका नाम, रिसर्चर का नाम, जैसे एक मॉरिसन हो गया, जैकी चेन हो गया, आप किताबें पढ़ेंगे, जॉन ट्राइब एरे करके हो गया, मार्टिन कोजाक करके हो गया, वो बड़े अच्छे रिसर्चर है टूरिज्म की फील्ड में, रसूली मनीष हो गया, बुहालिस हो गया, है ना, ये सारे बड़े ग्रेट रिसर्चर हैं। जब आप पढ़ेंगे, जैसे आप वो पढ़ते हैं ना प्लॉग्स थियरी, तो प्लॉग्स थियरी इज अ गुड थियरी ना, प्लॉग्स, ठीक है, प्लॉग्स जो आप कैटेगराइजेशन ऑफ टूरिस्ट दिया है, तो उसके और चीजें भी पढ़ो, उसने और क्या दिया है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जो है वो आप क्वालिटी रिसर्चर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, रीड क्वालिटी जर्नल। ठीक है, हमने बोल दिया ये पहले। ब्रेनस्टॉर्मिंग विद योर पीयर ग्रुप, आप खुद में बैठ के बात करो ये क्या है क्या है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उससे हमें नया डिस्कशन रोल मिलता है। ठीक है, एनालिस्ट द की कंपोनेंट्स एंड रीचेक विद अदर रिसर्च वर्क्स, आपने जो है जो की कंपोनेंट्स है, की पैरामीटर्स है, उसको आपने एनालिस्ट कर लिया, लिख लिया, लिस्ट बना ली उसकी, फिर आप और औरों के काम के साथ चेक करो कि और ऑथर क्या बोल रहे हैं। ये पेपर पढ़ा आपने, इसमें से जो कंस्ट्रक्ट आए जो रिस्पॉन्सिबल है स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए, उसकी लिस्ट बना ली, फिर आपने दूसरा पेपर उठाया, उसकी लिस्ट बना ली, फिर आपको पता लगे 2-4 आर्टिकल 2-4 कंस्ट्रक्ट तो मैच कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये हमने अभी पढ़ा है।
इसमें जो है इस रिसर्चर ने जो है टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म के ऊपर छह कंपोनेंट्स दिए हैं, ठीक है, 6 कंपोनेंट्स हैं शायद मेरे ख्याल से। दूसरे पेपर में जो है, जो अतुल अतुल जैसा है, उसमें जो है वो 7 कंपोनेंट्स हैं। तो आप इन दोनों को मिलाएंगे ना, तो इसमें से 4 जो है वो मैच करते हैं और टोटल जो है वो 9 बनते हैं फिर, ठीक है। 4 टोटल जो कंस्ट्रक्ट हमने कल देखा था वो 9 कंस्ट्रक्ट बनते हैं, जो 9 कंपोनेंट्स हैं, दे आर इंपॉर्टेंट फॉर द स्पिरिचुअल टूरिज्म, ठीक है। ये सब चीजें जो है वो आपने ध्यान में रखनी है। समटाइम्स रिसर्च इन अदर डिसिप्लिन, वो कई बार क्या होता है, जैसे मान लो आप स्पिरिचुअल टूरिज्म के ऊपर काम कर रहे हैं ना, तो आप योगा टूरिज्म के ऊपर भी सर्च मार लो, एक अदर डिसिप्लिन, हो सकता है योगा में जो स्पिरिचुअलिटी के ऊपर कुछ लिखा हो, या वेलनेस का सर्च कर लो, हो सकता है स्पिरिचुअल टूरिज्म के ऊपर कुछ काम किया हो। थक गए, है ना, ठीक है। मेक द फाइनल लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स, फाइनल लिस्ट बना ली है आपने पैरामीटर्स की, ठीक है। इंटरनेट सर्च कैसे करनी है पता है आपको, कीवर्ड्स यूज करने हैं उसके लिए। रीड ओपन एक्सेस, अच्छा कुछ ओपन एक्सेस जर्नल भी है, क्वालिटी अच्छे जर्नल्स हैं जो ओपन एक्सेस में रहते हैं। ओपन एक्सेस में मतलब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो अवेलेबल है, क्वालिटी पेपर है बट फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है। विजिट इनफ्लिबनेट, इनफ्लिबनेट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक रिपोजिटरी है, उसमें बुक्स हैं, पेपर्स हैं, रिसर्च, ये सब चीजें हैं। और एक शोध गंगा करके एक वो है, उसमें इंडिया की लगभग हर यूनिवर्सिटी का जो पास आउट होता है उसकी पीएचडी थीसिस वहां पे अपलोड होती है, एंड यू कैन डाउनलोड दैट, ठीक है। ये है इनफ्लिबनेट का, देखो ओपन एक्सेस इनिशिएटिव, ये सारी इंफॉर्मेशन है, ये आपको रिसर्च में नहीं, आपको आपने पढ़ाई करनी है उसके लिए भी काम आएगा, ठीक है। फिर ये ओपन एक्सेस जर्नल है, कुछ अच्छे जर्नल्स हैं, ठीक है। फिर ये वन लाइब्रेरी फॉर ऑल इंडिया, ठीक है, ये है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर जो इसको हैंडल करता है। इसमें आपको ना सिर्फ रिसर्च, आपको बुक्स मिलेंगी, लाखों के हिसाब से किताबें मिलेंगी आपको, आपके खुद के उसमें भी हेल्प आएगी। यू डोंट नीड टू बाय बुक्स, यू जस्ट डाउनलोड हियर एंड रीड इट, ठीक है। आइडेंटिफाइंग द डायमेंशन ऑफ स्पिरिचुअल टूरिज्म, ये है हमारा मेन जो हम पढ़ रहे हैं, जिसके लिए वो कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे इसको आइडेंटिफाई? आंसर अब तक इतना डिस्कस कर लिया ना, कैसे करेंगे आइडेंटिफाई? स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है, या क्या चीजें मिलके जो स्पिरिचुअल टूरिज्म बनाती है, कैसे पता करेंगे? रिसर्च करके। और क्या करेंगे? रिसर्च करके, सिंपल आंसर। रिसर्च वो आप लाइब्रेरी में करो, ऑनलाइन करो, लिटरेचर रिव्यू करो, किसी से पूछो, पढ़ो, कैसे करो? रिसर्च करके ही आएगा, लिटरेचर रिव्यू करके ही आपको ये जो है इन पैरामीटर्स का जवाब मिलेगा, ठीक है। तो ये 2 पेपर से हमने किया बात, ठीक है। ऐसे भी आप रेफरेंस के लिए आप कभी बोल सकते हैं कि ये ऑथर का नाम है एक्चुअली मुतिया, ठीक है। मुतिया एंड ऑल जो है उन्होंने ये काम किया है, रिव्यू ऑन स्पिरिचुअल टूरिज्म और कंसेप्चुअल मॉडल फॉर फ्यूचर रिसर्च, ठीक है। 2021 का पब्लिकेशन है ये, ठीक है जी। तो ये इन्होंने जो वो काम किया है इसके ऊपर, और ये डायमेंशंस ऑफ स्पिरिचुअल टूरिज्म की बात करें, पहले स्पिरिचुअल टूरिज्म को इसने डिफाइन किया है क्या ये, ठीक है। स्पिरिचुअल टूरिज्म के ऊपर अब इसमें जाओ ना, इस पेपर्स में है आपका ये, शी हैज दिस वन, कीप इट इन द सेंटर एंड देन डिस्कस, ठीक है। यहाँ वो उसमें, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि स्पिरिचुअल टूरिज्म है क्या, ये चीजें क्या है, उसको डिफाइन किया हुआ है पहले, ठीक है। फिर उसमें जो है वो कंस्ट्रक्ट की बात करता है, तो इसने आइडेंटिफाई करके दिए। अब कैसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, देखो हमने वहां डिस्कस किया ना पहले कि ए ऑथर ने इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर बोला है, बी ऑथर ने इस सस्टेनेबल पॉलिसी के ऊपर बोला है, ऐसे ही है। तो ये जो है चीरा बाल्शिन एंड ख्वाजा, इसने 2007 में रिसर्च किया है, और उसने 3 और 6 7 कंपोनेंट्स कंसीडर किए हैं अपनी रिसर्च में, अपने डेफिनेशंस में, कि स्पिरिचुअल टूरिज्म इट टॉक्स अबाउट द पर्पस ऑफ लाइफ, कॉन्शियसनेस, ट्रांसेंडेंस, स्पिरिचुअल रिसोर्सेज, सेल्फ डिटर्मिनेशंस, रिफ्लेक्ट सोल प्यूरिफिकेशंस एंड स्पिरिचुअल कॉपिंग, इसके ऊपर काम किया है। अब ये कंपोनेंट्स कहां से आए? जब ये पढ़ रहा था, पीछे लिख रहा था, तो वहां से उसने आइडेंटिफाई किया, अच्छा इस ऑथर ने इसके ऊपर काम किया है, हम भी बना सकते हैं वही टेबल। कैसे बना सकते हैं?
इकोनॉमिक पॉलिसी लिखा, सस्टेनेबल पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी, या ऑथर के नाम उसके नीचे कट करते गए किसने किसके नीचे काम किया है। आ रहा है समझ कैसे? यहां विलेज ए, विलेज बी, विलेज सी, राइट। तो विलेज की डेफिनेशन हमने दे दी कि मोनेस्ट्री मोनेस्ट्री मोनेस्ट्री, यहां पे मोनेस्ट्री लिख दिया, मोनेस्ट्री मोनेस्ट्री मोनेस्ट्री, सब में मोनेस्ट्री है। प्लेग्राउंड एक विलेज में है, दो में है, तीसरे में नहीं है ना। तो आप विलेज की डेफिनेशन क्या बनती जाएगी आपके आपके पास? विलेज इज अ प्लेस वेयर मोनेस्ट्री एंड प्लेग्राउंड एग्जिस्ट। समझे आप? तो ये बोलना चाहते हैं ये, देखो अब ये कोगलन 2005 वो बोलता है स्पिरिचुअल टूरिज्म इज, इट टॉक्स अबाउट द पर्पस ऑफ लाइफ, कॉन्शियसनेस एंड सोल प्यूरिफिकेशन। बाकी बाकी कंपोनेंट्स को कंसीडर नहीं करता ये। आ रहा है समझ? आ रहा है? साथ वालों को भी समझाओ, ठीक है। ऐसे जितने थे रिसर्चर उनका काम ले लिया। अब ये देखो ये है ना रोबेल्डो, रोबेल्डो जो वो सिर्फ 3 ही कंपोनेंट की बात कर रहा है, 4 कंपोनेंट की बात ही नहीं की उसने, ठीक है। तो मिक्स अप करके क्लब करके जो है हमने ये पैरामीटर आइडेंटिफाई कर लिए, ठीक है जी। ये कैसा है, इसको और कैसे समझा सकते हैं हम इजीली? कोई है आपके पास आइडिया, कोई और अच्छे तरीके से समझने का? नहीं है, उसको नींद आ रही है, ठीक है। तो ये जो है इंडिविजुअल पैरामीटर्स आइडेंटिफाई किए हमने लिटरेचर पढ़ के, ये चीज पढ़ के, किस किस ने बोली है, कौन कौन सी बिल। अच्छा ये क्यों, हम यहां भी तो कर सकते थे जो, फिर वी कुड स्टॉप हियर ऑल्सो कि ठीक है ये ऑथर जो वो सातों की बात कर रहा है, फिर हमने नीचे वाले क्यों किए हैं? अगर एक कॉज के लिए ज्यादा लोग वोट कर रहे हैं, किसी चीज के लिए ज्यादा लोग वोट कर रहे हैं, वो ज्यादा अच्छी चीज है, या किसी चीज के लिए कम लोग वोट कर रहे हैं वो ज्यादा अच्छी चीज है? ज्यादा लोग जब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, ठीक है। अगर ये यहीं पे छोड़ देता तो 1 2 3 4 5 6 लगभग 8 और लोग भी इसी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं जो बोलते हैं कि पर्पस ऑफ लाइफ इज ए इंटीग्रल पार्ट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअल टूरिज्म। स्ट्रेंथ हो गया ना, स्ट्रेंथ हो गया, सपोर्ट मिल गया, ठीक है। आप जब प्रोटेस्ट करने जाते हैं अपनी मेरी क्लास में बेंचेस ने ये नहीं है, तो जब एक ही जाएगा तब बात मानी जाएगी, या जब 10 साथ में जाएंगे तब बात मानी जाएगी? हाँ, तो ये 10 लोग जब साथ मिलकर एक ही बात कर रहे हैं कि हाँ स्पिरिचुअल टूरिज्म इज डेडिकेटेड टू फोकस और टू आइडेंटिफाई द पर्पस ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है, तब ज्यादा स्ट्रेंथ आएगी उस चीज में। इसीलिए लिटरेचर रिव्यू में ज्यादा से ज्यादा चीजों को ऐड करने की कोशिश करते हैं। क्लियर? आगे समझ कैसे आइडेंटिफाई होते पैरामीटर्स? ये है तो पर्पस ऑफ लाइफ मीनिंग। अच्छा ये लाइन पढ़ना, ये लाइन पढ़ना, इसमें कि वंस लाइफ फुलफिलमेंट कुड बी अचीव्ड व्हाइल ट्रैवलिंग, ठीक है, ठीक है। या इसने और करनी होगी वंस लाइफ पाथ एंड आइडेंटिफाई आइडेंटिटी कुड क्रिएट अ सुनामी इन द टूरिज्म टर्म स्पिरिचुअल टूरिज्म अकॉर्डिंग टू स्पिरिचुअल टूरिज्म इज अचीवमेंट ऑफ लाइफ बैलेंस, ठीक है। अब ये जो है ना ये पैराग्राफ, इसमें हमें कुछ कीवर्ड्स मिलेंगे, लाइफ अचीवमेंट, पर्पस ऑफ लाइफ, आई ट्रैवल फॉर टू अचीव द पर्पस ऑफ लाइफ, ठीक है। वही चीजें जो है हमारा क्या बनेंगे, क्वेश्चंस बनेंगे। किसमें क्वेश्चंस बनेंगे, किस हेडिंग के अंदर, किस हेडिंग के अंदर? स्पिरिचुअल। इस पैराग्राफ में किस चीज की बात कर रहा है? पर्पस ऑफ लाइफ। तो इसमें से जो की पॉइंट्स मिलेंगे वो किसके क्वेश्चंस बनेंगे? पर्पस ऑफ लाइफ के। पर्पस ऑफ लाइफ एक हेडिंग बनेगा, उसके अंडर वो क्वेश्चन बनेंगे, वो फिर क्वेश्चनर जाएगा आपको। समझ रहे? नहीं समझ रहे? ठीक है। मैं यहां करता हूं, ये देखना, पर्पस ऑफ लाइफ, और उसमें जाना वापस उस वहां पे जहां थे हम, कहां पे थे? सबसे पहला जो था डेफिनेशन बोल रहा था ना, ये पर्पस ऑफ लाइफ करके एक जो इसमें वो है हेडिंग होगा 3.1 और समथिंग,
हाँ इससे आगे जाओ जाओ जाओ, 3.1 करके है शायद। 3.1 है, मिल गया। इधर दो, पेज नंबर 131, पर्पस ऑफ लाइफ। ठीक है, पर्पस ऑफ लाइफ में जो है ये क्वेश्चंस हैं हमारे, पर्पस ऑफ लाइफ को कैसे हम मेजर करेंगे। ये बोलता है आई कंसीडर ट्रैवलिंग एज अ स्पिरिचुअल एक्टिविटी, तो इसमें मेंशन होगा कहीं कि ट्रैवलिंग इज अ स्पिरिचुअल एक्टिविटी। पढ़ो, इसमें सर्च करो, इसमें होगा कहीं ना कहीं। ट्रैवलिंग इज अ स्पिरिचुअल एक्टिविटी, ट्रैवलिंग गिव्स मी सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, तो लाइफ फुलफिलमेंट और ट्रैवलिंग के ऊपर भी कुछ लिखा होगा इसमें। आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है, मिला। फिर वैसे ही जो है स्पिरिचुअलिटी हेल्प्स मी टू एंजॉय द जर्नी ऑफ लाइफ, तो इसमें जर्नी ऑफ लाइफ भी एक वर्ड यूज हुआ होगा। ठीक है, तो वहीं से हमने जो है वो ये उठाए हैं और ये क्वेश्चनियर डेवलप किया है। क्लियर, खुद से कुछ भी नहीं लिखा इसमें, पर क्या है आप इसको चेंज कर देते हैं, पर कीवर्ड वही रहेगा आपका, पर्पस ऑफ लाइफ, प्रोफाउंड मीनिंग एंड पर्पस ऑफ लाइफ। ठीक है, ऐसे जो है वो आपका क्वेश्चनियर डेवलप होगा। आ रहा है समझ? क्या समझ आ रहा है? समझिए अब तक थोड़ा सा पता, कुछ पता चला। पैरामीटर्स ऑफ अ कंस्ट्रक्ट क्या होते हैं जो उस कंस्ट्रक्ट को बनाते हैं। हैप्पीनेस है तो हैप्पीनेस को अलग अलग पैरामीटर्स बनाएंगे, डायमेंशन बोलते हैं हम उसको, कंस्ट्रक्ट बोलते हैं उसको, हम लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट बोलते हैं हम उसको। ठीक है जोफर, गेटिंग? आप समझ रहे हैं? क्या समझ रहे हैं? पर्पस ऑफ लाइफ पर्पस ऑफ लाइफ समझ रहे हैं? ये है। तो आई विजिट मोनेस्ट्री बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एटमोस्फियर में जाना, इसी में इसी में ही होगा, एक एटमोस्फियर होगा, है ना? नहीं है, नहीं होगा, फिर इसमें होगा वो कंसेप्ट दूसरे पेपर में, या इसमें है। ठीक है, एटमोस्फियर इज हियर, और ये है, ये है, ये है, ये इधर इधर इसमें है एटमोस्फियर। क्या पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 5 पे है एटमोस्फियर। हाँ इसमें ढूंढो। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर के अंदर क्या क्या लिखा है इसने? ये बोलता है, इसने की पैरामीटर, ये दूसरा रिसर्चर था जिसने बोला है कि एटमॉस्फेयर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए, तो उसके अंदर उसने लोकेशन की बात की है, एम्बियंस की बात की है, राइट, कलर्स की बात की है। मोनेस्ट्रीज के कलर जो हैं वो भी दे आल्सो स्टिमुलेट योर स्पिरिचुअल टेम्परामेंट। ठीक है, द काइंड ऑफ आइडल्स, द काइंड ऑफ डिजाइन ओवर देयर। ठीक है, तो हमने उससे क्या किया, इसको क्वेश्चन बना दिया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एम ट्रैवलिंग टू सम मॉस्क, जैसे हमारे उधर अजमेर शरीफ श्राइन है ना, तो फॉर एग्जांपल आई डोंट अंडरस्टैंड अरबी, बट द वे इट इज रिटन ओवर देयर इट गिव्स यू सम डिफरेंट सेंस, राइट, and the way they are bearing the clothes inside, it is different, right? The chanting of their or they are singing kavalis inside the premises, it gives you spiritual, that is क्या है वो ambience है ना, अंदर का माहौल है, एटमॉस्फेयर है वो। ठीक है, सो ये क्वेश्चन जो है वो हमने क्या किया, फिर हमने पेपर ए की जो स्टेटमेंट्स थी, पेपर बी की जो स्टेटमेंट्स थी, उनको हमने क्लब कर दिया, जो कॉमन थे दोनों के केस में उसको हमने क्लब, उसको एक सिंगल एंटिटी, सिंगल पैरामीटर मान लिया, जो डिफरेंट थे उनको डिफरेंट लिख दिया। ठीक है, जैसे एटमॉस्फेयर के बारे में किसने बात किया था, ये दूसरा ऑथर है हमारे, इस ऑथर ने जो है वो एटमॉस्फेयर की बात की, तो हमने इसको वहां रख दिया। समझ रहे हैं अब आप कैसे आइडेंटिफाई करना है? और 2 या 3 ही पेपर मिलेंगे आपको हर स्टडी में,
जो एक लैंडमार्क पेपर होंगे जो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे देंगे। ठीक है, तो ये आपको तो मिल गए, पर जब हम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं इट टेक्स टाइम, बहुत सारे पेपर्स पढ़ने पड़ते हैं आपको किसमें क्या है उस तक पहुंचने के लिए। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू नैरो डाउन अप टू योर डिजायर्ड पैरामीटर्स फॉर द पर्टिकुलर कंस्ट्रक्ट, राइट। सेल्फ डिटर्मिनेशन ये है 9 है टोटल इसमें। ये देखो स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए जो हमने 9 की कंपोनेंट्स जो है वो 9 की पैरामीटर जो है वो हमने आइडेंटिफाई किए, और यहां तक सिर्फ जो है वो थ्योरेटिकल काम हुआ है, सिर्फ पढ़े हैं अभी तक आप। टेस्टिंग जो है इसमें से कौन, अब इसमें जो रिसर्च, जब स्टैटिस्टिक्स आप क्वांटिटेटिव टेक्निक्स यूज करेंगे, आप टेस्ट यूज करेंगे, आप कुछ सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, तब आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें से जो है वो कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए, या कौन सा रखना है इसमें या कौन सा नहीं रखना है। ठीक है, दैट इज अ नेक्स्ट स्टेप अहेड आफ्टर फ्रेमिंग योर, और यू कैन कॉल इट एज अ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर स्पिरिचुअल टूरिज्म और की डायमेंशंस ऑफ स्पिरिचुअल टूरिज्म। क्लियर, समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। लद्दाख कैसे बनेगा, अगर आपको मैं बोलूं डिफाइन लद्दाख, चलो लद्दाख, डिफाइन लद्दाख, डिफाइन डिफाइन लद्दाख, एन एडवेंचरस प्लेस फॉर यू, है ना आपके लिए लद्दाख। नहीं वो छोड़ दो, हम ऐसे बोल रहे हैं कि आप क्या समझते हैं लद्दाख, लद्दाख क्या है आपके लिए? कल्चर, ऑथेंटिक ऑथेंटिक कल्चर, exotic locations, right, diverse flora and fauna, so these are the key components which are making your लद्दाख। तो वो क्या हुए, फ्लोरा फोना क्या हुआ, पैरामीटर हुआ एक, क्या हुआ जाना है। ठीक है, सो दीज आर दी की डायमेंशंस ऑफ स्पिरिचुअल टूरिज्म। वैसे ही पैरामीटर्स टू मेजर टूरिज्म के, वैसे ही टूरिज्म के जो लास्ट पेपर है आपका, जब हम टूरिज्म स्केप की बात करते हैं तो अब ये पैरामीटर्स कहां से आए हैं, ये चीजें अब तो आंसर करोगे आप, ये चीजें कहां से आई हैं, स्टोरी स्केप, सर्विस स्केप, सेंस स्केप, पीपल स्केप, ऑर्गेनाइजेशन स्केप, मशीन स्केप, लैंडस्केप, डिजिटल स्केप, ये कहां से आई हैं ये चीजें इसमें लास्ट पेपर दिस वन। ये डायमेंशंस कहां से आएंगे बताओ, स्पिरिचुअल टूरिज्म के पैरामीटर्स और डायमेंशन कहां से आए, कहां से आए बताओ, कहां से आए, हाँ ज्यादा हो गए, कहां से आए, ये जो आपने ये पढ़ा ना, ये दूसरा पेपर, फर्स्ट पेपर, फर्स्ट कौन सा था, ये ठीक है, हम बात कर रहे थे इसकी, ये डायमेंशंस कहां से आई थी, कहां से आई थी, लिटरेचर पढ़ के, किताबें पढ़ के, सिंपल किताबें पढ़ के आई थी ना। तो वैसे ही ये चीजें कहां से आई, ये वाली, ये भी पीछे से हमने पढ़ा कहीं से, वहां से आया ये। ठीक है, तो ये है कि एक तरह से की पैरामीटर्स टू मेजर टूरिज्म स्केप। टूरिज्म स्केप क्या है, ये वेरी फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था, एक्टर नेटवर्क थ्योरी। ठीक है, तो टूरिज्म स्केप इज अ एक्टर, इट इज अ नेटवर्क ऑफ डाइवर्स एक्टर्स, और वो एक्टर्स कौन कौन से हैं ये, ठीक है, इन सारे एक्टर्स को मिला के जो है टूरिज्म स्केप बनता है। ठीक है, और सारे ये कहां से आए पैरामीटर्स आपके, लिटरेचर से। ये क्या है, टूरिज्म स्केप मेजरमेंट फ्रेमवर्क। तो वैसे ही जो है लिटरेचर हमने पढ़ा, वो किया, वो सब किया, और वहां से जो है वो सिमिलरली हमने इसको डेवलप किया। ऐसे अब लग रहा पता कैसे कंस्ट्रक्ट, कैसे पैरामीटर्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे करेंगे। अगर मैंने आपको ये बोला टूरिस्ट एक्सपीरियंस के ऊपर पैरामीटर आइडेंटिफाई करो,
तो आप कैसे करेंगे आइडेंटिफाई? कैसे करेंगे आइडेंटिफाई? कैसे करेंगे आइडेंटिफाई? हैं जोफर, कैसे करेंगे? रिसर्च भाई पढ़ेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, हमने किया तो डिसाइड वहां पे पेशेंस रखना है सबसे पहले, है ना, फिर कीवर्ड सर्च करने हैं, फिर अच्छे जर्नल्स पढ़ने हैं, अच्छे आर्टिकल्स पढ़ने हैं, अच्छे रिसर्चर्स को पढ़ना है, फिर वहां से जो है वो आप इनको आइडेंटिफाई करेंगे। क्लियर? लैंडस्केप आ गया और नेशनस्केप, ये तो नहीं आएगा समझ, है ना, ये नहीं पढ़ा आगे, ठीक है। ये टू प्रपोज, ठीक है। अब एक लास्ट कंसेप्ट है वर्केशन, इसके बाद डेस्टिनेशन परफॉर्मेंस भी है, ठीक है। वर्केशन क्या कंसेप्ट है? वर्केशन क्या है? काम करने के लिए हॉलीडेज, वर्क फ्रॉम होम होता है ना सर। देखो, आप मान लो आप सब, आपकी अपनी अपनी ट्रैवल कंपनी है, आपका काम क्या होगा? डिक्टेट करना अपने एम्प्लॉयर्स को, काम करो, अच्छे से काम करो। आपकी कंपनी कहाँ है? लद्दाख में, ठीक है। आप ऑफिस जाके क्या करोगे? उनको बोलोगे ना कि काम करो, अच्छे से करो, इंस्ट्रक्शन देनी है, आउटपुट लेनी है। आपने क्या किया कि चलो मैं एक हफ्ते के टूर पे चला गया, ठीक है, टूर पे चला गया, घूमने चला गया, तो आप वहां भी रह के उस काम को भी कर रहे हैं, विजुअल मीटिंग ले ली, ऑर्डर कर दिया, आप उनको काम भी कर रहे हैं, एंड यू आर एंजॉयिंग योर वर्क, यू आर एंजॉयिंग योर हॉलीडेज आल्सो। वो है वर्केशन का कंसेप्ट। पर आप जब उस जगह गए तो आपको कम्युनिकेशन के लिए नेटवर्क चाहिए, आपको कहीं बैठने के लिए जगह चाहिए जहां आप बैठ के बात कर सको, ठीक है, या 24/7 इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, या आपको अच्छा इंटरनेट चाहिए, ठीक है। तो वर्केशन का कंसेप्ट यही है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से बोला। पल्लवी 2020 में उसने बोला था वर्केशन के ऊपर, अ वर्केशन दैट कंबाइन बिजनेस विद लेजर आउटसाइड कन्वेंशनल वर्क प्लेस। कन्वेंशनल वर्क प्लेस क्या है? फॉर एग्जांपल यू आर एवरी डे यू आर गोइंग टू कॉलेज, दैट इज योर कन्वेंशनल वर्क प्लेस, बट यू आर ट्रैवलिंग टू समवेयर। फॉर एग्जांपल आपकी ऑनलाइन क्लासेस थी जब कोविड-19 में, तो कोविड-19 में वाज इट इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सिट इन एट होम एंड अटेंड द क्लासेस? वाज इट इंपॉर्टेंट फॉर यू? आप वही काम कहीं घूमते हुए भी कर सकते थे। आप मान लो मनाली चले जाते एक हफ्ते के लिए, तो मंडे टू ट्यूसडे आप 9 to 5 आप क्लासेस अटेंड कर लेते हैं, 5 के बाद आप घूम लेते हैं, दैट इज ऑल्सो वर्केशन, ठीक है। वो है वर्केशन का बेसिक कंसेप्ट। तो हमने क्या 7 लोगों को उनकी डेफिनेशंस पढ़ी, क्या क्या बोल रहे हैं वर्केशन के ऊपर। कोई बिजली के ऊपर बोल रहा होगा, कोई लॉन्गर स्टे के ऊपर बोल रहा होगा, कोई एक्टिविटीज के ऊपर बोल रहा होगा। तो ये सब चीजें जो उनको हम क्लब करके जो है वो वर्केशन का कंसेप्ट जो है हमने डेवलप किया। ये देखो, उसको पढ़ के क्या है, उसको पढ़ के इसमें एक स्टेटमेंट लिखी है, प्री रिक्विजाइट एट वर्केशन डेस्टिनेशंस अदर देन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? 5 A's। 5 A's के अलावा हमें ये 3 चीजें चाहिए थी किसी भी जगह को वर्केशन टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने के लिए। अनइंटरप्टेड इंटरनेट कनेक्टिविटी, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी, लैपटॉप फ्रेंडली वर्क प्लेस। तो कितने लोगों ने बोला है? देखो, इसमें से 12 लोगों ने बात की है अनइंटरप्टेड इंटरनेट के ऊपर, कि भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वर्केशन की जगह डेवलप करनी है, किसी भी डेस्टिनेशन को वर्केशन डेस्टिनेशन, वर्क फ्रॉम होम, सिंपल, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम डेस्टिनेशन डेवलप करना है, वर्क फ्रॉम होम के कंसेप्ट पे किसी डेस्टिनेशन को डेवलप करना, तो ये चीज बहुत जरूरी है। अनइंटरप्टेड इंटरनेट, ठीक है, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी की बात कितने लोग कर रहे हैं? 4 2 6 लोग। लैपटॉप फ्रेंडली वर्क स्पेस, ये 4 5 लोग बात कर रहे हैं, ठीक है जी। तो दिस हाउ these are the key parameters which are needed for the development of a destination as a workation, ठीक है। डेस्टिनेशन परफॉर्मेंस लास्ट है ये, ठीक है। मैं डायरेक्टली आपको उस पे फ्रेमवर्क पे ले जाऊंगा, ठीक है। ये मेरा खुद का पेपर है, पता है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, सच्ची बोल रहा हूँ। प्रोफेसर मॉरिसन के साथ लिखा था, ही इज नो मोर, आई एम सॉरी फॉर दैट, प्रोफेसर मॉरिसन इज नो मोर, बट ये हमने पेपर लिखा था। और ये एक कैटेगरीज होती है पेपर की भी, जैसे नैक की वो होती है ना एक्रेडिटेशन, नैक ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, वैसे ही
रिसर्च पेपर जर्नल्स की भी कैटेगरीज होती हैं, तो ये ए कैटेगरी पेपर्स में था। ए कैटेगरी पेपर का मतलब है कि टॉप 25% जो टूरिज्म के जर्नल है उसमें आता है। ये हमने 14 पैरामीटर्स आइडेंटिफाई किए थे। 14 पैरामीटर्स आइडेंटिफाई किए थे किसके लिए? डेस्टिनेशन की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए। कोई डेस्टिनेशन कैसे बिहेव करती है, उसकी परफॉर्मेंस को कैसे मेजर करना है, उसके लिए हमने 14 पैरामीटर्स रखे थे। ठीक है, तो ये कहां से आए थे? ये अवेयरनेस है, अवेलेबिलिटी है, अट्रैक्शन है, एश्योरेंस है। ठीक है, यही मैं लिख रहा हूं। अवेयरनेस है, अट्रैक्शन है, अवेलेबिलिटी है, एक्सेसिबिलिटी, एक्टिविटी, एश्योरेंस, एप्रिसिएशन, अकोमोडेशन, एंसिलरी सर्विसेज, अपीयरेंस, ऑल्टरिज्म एंड एक्लेमेटाइजेशन। एक्लेमेटाइजेशन जो है वो लद्दाख के कॉन्टेक्स्ट में था। ये स्टडी जो है वो लद्दाख में हुई थी। ठीक है, लद्दाख में हुई थी। और एक्लेमेटाइजेशन जो है हमने वर्ड ऐड किया था क्योंकि यहाँ पे आके जो था, और ये नई न्यू न्यू वो था आपका इंफॉर्मेशन, न्यू पैरामीटर एडिशन। पर इसका हमें लिटरेचर कहां से मिला था ये बताओ, एक्लेमेटाइजेशन का? कहां पे रिसर्च की होगी हमने, ये बता, चलो ये तो बताना चाहिए आपको। एक्लेमेटाइजेशन के बारे में किसने बोला होगा? डॉक्टर्स और हेल्थ और गवर्नमेंट की पॉलिसी है। गवर्नमेंट की पॉलिसी है यहाँ पे। गवर्नमेंट बोलती है 2 दिन 48 आवर्स, यू आर सपोज टू स्टे फॉर 48 आवर्स, यू आर सपोज टू रेस्ट फॉर 48 आवर्स। आप बताओ कितना इंपॉर्टेंट वेरिएबल पैरामीटर ऐड किया हमने डेस्टिनेशन परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए। और हमने इसको कैसे कनेक्ट किया था? हेल्थ से, कि इसके रिगार्डिंग क्या फैसिलिटीज हैं आपकी डेस्टिनेशन में। टूरिस्ट से पूछा कि क्या एक्लेमेटाइजेशन के रिगार्डिंग यहाँ प्रॉपर डेस्टिनेशंस है, प्रॉपर फैसिलिटीज हैं कि नहीं। ठीक है, तो पढ़ना चाहिए आपको ये पेपर, आई विल शेयर। एक तो आप लोगों ने वो नहीं किया, और ये कुछ क्राइटेरिया है, टेक्निकल क्राइटेरिया, स्टैटिस्टिकल क्राइटेरिया, जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं है। इसमें ये निकल के आया था कि एक्लेमेटाइजेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट टू मेजर द डेस्टिनेशन परफॉर्मेंस। वो पता क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लोग आते हैं वो एडवेंचर के लिए आते हैं, एंड दे डोंट केयर अबाउट हेल्थ। हेल्थ के लिए कंसर्न नहीं होता है उनको। दिस मच एडवेंचरस सोल दे आर। करना है तो करना है, करना है तो करना है। ठीक है, उनको ये नहीं लेना देना कि एक्लेमेटाइजेशन के लिए अच्छी फैसिलिटीज हैं क्या नहीं है। दे आर प्रो एडवेंचर, दिस इज। ठीक है, ये टेस्ट किया था हमने, फिर बाद में बच के मेरे ख्याल से 10 रहे थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रहे थे। 2 जो थे वो हट गए थे। आइडेंटिफाई कितने किए थे हमने? 14। 14 में से 4 जो थे, 2 जो थे वो इसलिए निकाल दिए थे क्योंकि वो टूरिस्ट से नहीं पूछ रहे थे। 2 इसलिए निकल गए क्योंकि वो स्टैटिस्टिकल पैरामीटर में फिट नहीं हो रहे थे। तो ये जो 10 थे वो फाइनल पैरामीटर्स थे। थैंक यू सो मच। बहुत खुश है ना?